अभी जा रहा हूँ गाना जो हमारे साथ करता है कि क्या कि मैं लटकने जा रहा हूँ कि तेज भी में आ जाना। अरे तो ऊपर वो तो अभी तक तेरे 14 दिन हो नहीं पा रहे यार, मैं कब से। वो मजाक करता हूँ भाई। ये बैन के लोड़े से जॉब नहीं ढूंढी जा रही भाई, क्या लाइन बन रहा है। महीने में प्लान भाई बनाएगा फिर तो 13 दिन। प्रीमियम रस्सी खरीदेगा। सुन इसकी जॉब का आइडिया सुन, समझ इसकी जॉब सोच कैसी होगी। सुन भाई को चाहिए ऐसी जॉब जिसमें कुछ ना फ्री करना टाइम पड़े। बाइक ना, हाँ कुछ ना करना पड़े, बाइक लेके घूमता रहे फिर वैसे मुँह ठेलाता रहे। मुझे अबे वो पार्टी कोड दे दे मेरे को। कनिष्क तो वो निकल गया बाहर शायद भाई पार्टी आ से। रहा है कनीश यार, आ रहा है। हाँ तो मैं ज्वाइन कैसे करूँ, मेरे में एडिट नहीं है ना, मैं मेन से हूँ। NYE रुक जा। NYE310। तो भाई अगर आपको जॉब ऐसी मिल जाए तो प्लीज भाई मुझे भी बता देना। आपकी फ्रेंडों में क्या आ क्या जाएगा। बोला? अबे तू लाइव इसी के चैट में भेज दे, मैं कॉपी पेस्ट कर देता ऐसी ऐसी जॉब मिलना मतलब हूँ। स्वर्ग है इम्पॉसिबल भाई। है। नारुतो के लिए इम्पॉसिबल तो है। स्वर्ग हो जाए ये तो भाई। यार मैं आई एम जस्ट एज्यूमिंग भाई, ये तो जॉब तोड़िए, ये मजेदार मजे करने की वो है भाई की। किसी अमीर बाप की बेटी से शादी कर लूंगा, बात खत्म। तेरे को हाथ कौन देगा? वो ये यार। तो नहीं चाहिए हाथ नहीं मुझे। लात देगा। जेसी कौन है? वॉरलॉर्ड है क्या? हाँ मैं हूँ। हाँ ठीक है। आ जाए अबे इसकी नहीं नहीं, पार्टी हाथ ज्वाइन नहीं कर लो। लात मिलेगी भाई। बात तो भाई सुनो। लात से भी काम चला लूंगा, पैसे मिलने चाहिए। पैसे सैलरी थोड़ी लात काटेगा। मिलेगी, सिर्फ लात। नहीं नहीं भाई भाई, नारुतो ऑन अ सीरियस नोट, तेरी आज तक कितनी एक्स है जो तू ऐसा लात। कहना चाह रहा है? निब्बियों को हटा के वे भोसड़ी की तो तेरी। निब्बियां हटा के भाई उस हिसाब से। अबे भाई निब्बियां ही नारुतो तो की थी, मान लो उसकी ज्यादातर तो सब क्लासमेट की शादी सोलह हो गई सत्रह भाई, निब्बियां फिर ही तो बात थी खत्म। भाई। अब अब बहन की लोड़ी तू तो 16 21 22 है भाई। अरे मैं बोला 16-17 निब्बियां ही तो थी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तू तो 21 22 का है अरे झूठ तुम में। लोग तुम लोग इसकी पार्टी ज्वाइन करो ना। हम पार्टी नहीं है। पार्टी कोड बताओ। पार्टी NYE कोड। पार्टी कोड लिख तो NYE दिया अरे भाई। नहीं एन। नहीं, ये इसकी वॉरलॉर्ड की पार्टी ज्वाइन कर लो। नहीं अच्छा वर्लॉर्ड की पार्टी। अबे रुक जा, वर्लॉर्ड तो दिख ही नहीं रहा मेरे में लिस्ट में, कौन सी आईडी से आ गया वर्लॉर्ड। जेसी जेसी अरे जेसी जेट इंस्टा लॉग से कौन रिक्वेस्ट भेजा था फिर लौड़ा। ब्लॉक से नहीं, मैं जेस से आ गया। अरे चूतिया, अभी भेज वापस से उसी में भेज, मैट फॉर ब्लड वाले में रिक्वेस्ट भेज फटाफट। काम करो तुम लोग, मेरी पार्टी में आ जाओ। अरे एक गंडवे। अबे तू एक काम करना, तू कोड उधर लाइव पीसी के तू चैट दे पे भाई। दे दे। वो कितने चल लोग हो जैसे भाई? हम हैं। 5 लोग हैं ना। हाँ 5 है। कनिष्क आ रहा है। आया नारुतो नहीं को कनिष्क। मैं तो कह रहा हूँ कस्टम में आ जाओ, 2v5 खेल लेते हैं। नहीं औकात है इसकी बहन की वो अरे जा लवड़े कस्टमर क्या जा। अभी आज तो तू सबको लेके आ जा, पूरे खानदान उठा के ले आ जा फिर भी। सुन मेरी बात सुन, तू ले ले डेड इंस्टॉल भी ले ले, तू निकी भी ले ले, अरे ठीक है सुन हमारे मेरी बात, स्क्वाड ले सुन ले। मेरी बात सुन। ऐसी गांड तू ना फाड़ूंगी ना तू बैन ना के लोग 5 गिरेगा प्रो तेरा। प्लेयर लेके आ। सुन मैं, हम 3v5 करेंगे, मैं समर्थ भाई और कनिष्क इतना रहते हैं। बेसलेस कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता है? अबे उस भाई दिन ये हार गया भाई, अबे मैं बस चुप रहे, टाइम कहाँ मारा हार ठीक गया है, भाई? डेड समर्थ इंस्टॉल एफ के निकी चला गया मरा। था फिर भी हम जीत गए भाई। समर्थ एफ के जाने के बाद भी वो मैच जीत गए भाई। मैं कल का सोच। मना थोड़ी कर रहा हूँ, कल तो हाथ ही नहीं चलता सोच है भाई, भाई तू एफ के तो। जाने के बाद भी हम जीत गए, फिर रीमैच किया इन चूतियों ने, फिर वो भी जीत गए। अरे एक वो एक स्कोर से बाकी तो जीतो। आ रहे ना। अमन अमन ज्वाइन कर। रुक जा। मैं क्या अमन ये बोलूं? नहीं आ। बोलेगा अमन को मेरी टीम में इनवाइट दे। मैं पागल हो गई। जब तक मिकी नहीं खेला तब तक मेरी टीम में मैं टॉप ट्रैक कर रहा था, ये नहीं कस्टम बोलेगा जब तक कस्टम नहीं डेथ करूंगा। मैच लगा दे, कस्टम डेथ मैच लगा दे, रुक जा, मैं भी वो आ रहा हूँ, perfect। रुक जा। अबे तो डेथ मैच लगा रहे हैं, फिर कनिष्क रुक आएगा जा, तो उसको कॉम्पी आने देना, करेंगे। कस्टम डेथ मैच तो लगाने दे। कनिष्क को भाई, कनिष्क को ऑब्जर्वर डालेंगे भाई, वो तो भाई मैंने भी वॉरलॉर्ड में चालू किया है। वॉल बैक कर दो, बैक कर दो। मुझे तो आने देता। आ जा जैसे ऑनलाइन आएगा तो लीव कर देंगे। गलती कर दी भाई, सॉरी। कोई नहीं भाई। नारुतो पिटने वाला है आज, मुझे लग रहा है। नहीं भाई, बैक कर दो रे, बैक कर दो, मजा नहीं है। नहीं भाई क्या मैच जानी है, ब्लेड का आन तो दे, उसके बाद बैक कर देंगे हम। 958 से आ जाइयो, ठीक है? 959 दोनों बाप बेटे लगने चाहिए। अरे भाई बेटा तो है ही, लगने क्या चाहिए।
तवड़े इधर ही मार ले जैसी। ए ओडिन वाला कौन है भाऊ? भाई अमन भाई, हेलो अमन भाई बहुत गलत गन नहीं लेके आ रहे हो तुम। होल्डिंग में आएगा भाई अमन अरे आगे आगे बैक करो भाई बैक करो आ गया वो आ गया आ गया। अबे पार्टी कौन सी आईडी से है, कौन सी आईडी से है? आई मिस्टर हाँ इनवाइट दे रहा हूँ। किधर गया? यार ऐसे लेके कूद मत भाई, ओडिन से रनन गन नहीं होता। अबे ओडिन लेके आ गया भाई, मैं तो डर गया। वेरी खास लोग। भाई भाई ये बंदा रुक सर। अरे बैक तो कर दे, उसके बाद बंदे को मारना। अबे बैक कर दिया इसने भाई, जिसने भाई तुम करो ना बैक। कर दिया भाई हमने भी। मैं तो भाई गेम में देख रहा हूँ ऐसे ओडिन उठा के ला रहा है। अबे बैक आना है हीरो। आ गए बैक। अमन भाई आ जाओ बैक, आज ही आना है। अमन भाई एस के बंदों को मार रहे हैं। भाई अमन भाई क्या कहना चाहते थे? बस जल्दी आओ अमन भाई। हेलो अभी उसको शॉप अटैक कर दे, फिर रोएगा, ठीक है? चलो 2v3 करते हैं। और सुनना ब्लेड, आज डीएम खेलेंगे ठीक है? आज किसी को बोलूंगा नहीं किस पे लगा है। अबे भाई इसको नहीं खिलाऊंगा भाई, मेरे पैसे बहुत प्यारे हैं, सॉरी। मत पैसे मत लगाइयो, अभी नारुतो बता नहीं रहा है। मैं लगाऊंगा ही नहीं भाई, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलने पे जिंक्स हो जा रहा है भाई, बोलने पे जिंक्स होता है भाई। बिना बोले एक बार लगा के देखना चाहता हूँ भाई, किस टीम पे लगाए वो। वॉरलॉर्ड भाई स्प्रे एंड प्रे। अरे बैंचो दो साइड से मार रहा है भाई, मेरे हाथ भाई पता नहीं, अबे पता है आवाज बढ़ाने से मेरा एम इम्प्रूव हो गया, पता नहीं कैसे। लोगों का आवाज बढ़ाने से कुछ और इम्प्रूव होता है इसका। कौन था ये रंडी? टकला रंडी वॉलवर्ड को आर बोल दिया। छुप के खेल रहा है। ओए तुझे स्क्रीन से चाहिए मून? हाँ बड़ा जल्दी आ रहा है। भूल गया था। चलो ब्लेड में स्क्रीन शेयर देना। अरे लैंड मेरे पास जीपीयू नहीं है। क्रिएटिव आ गया भाई। क्रिएटिव कौन है भाई? एक सेकंड। अमन, ओए अमन स्क्रीन शेयर दे। मेरा लैग होता है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारा लैग से फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैं लाइव हूँ ना, लाइव कर लिया मैंने, यूट्यूब पे लाइव कर दिया। रुक जा, फिर भी कर ही देता ना भाई मैं बेचारे की गांड मारना चाह रहे हो क्या? एक बिना ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप की गांड मार दोगे तुम उसकी? वही तो भाई, आगे देखा, पीछे से आ गया। मुन देख ले, देख लाइव देख ले। वापस आओ ना गेम में, क्या कर रहे हो? अरे लौड़े, हम तूने बैक कर दिया क्या चमार? अरे गवार, इसको क्या भाई 4 शॉट लगने के बाद भी नहीं मरा। अरे तुम लोग गेम में कैसे घुसे? वापस आओ। अरे चूतिया, तू तो था भाई गेम के अंदर, तू आया कैसे? मैं तो था ही नहीं भाई। मैं बोल रहा हूँ टीम वाला खेलने भाई, ये कुछ गलत जा रहा है, मैं तो पिट्टा ही चला जा रहा हूँ बस भाई। नहीं ओए बहन चुपके से, व्हाट? कुछ यही तो लक है मेरी। तूने देखा? तूने लक देखा मेरा मून? क्या लंड लग गया भाई। ये बढ़िया मारा भाई, बॉल बैंक मार दिया है। बहनचोद, मैं वहां से क्रॉस कर रहा था, नहीं मतलब बोल क्रॉस कर रहा था, जस्ट क्रॉस कर रहा था। वापिस आओ। नहीं आ रहे हम वापिस। आजा बैक कर दे। रोएंगे भाई, आजा समर टूर में, बाकी इन सबको 4 में डाल दे। बढ़िया ले लिया भाई तो क्या, ए वॉलवर्ड भी अच्छा खेलता है ठीक है, ब्लेड तो एक खराब नहीं खेलता। तो चल ठीक है ना, वॉलवर्ड ही अच्छा खेलता है ना। आ गया कनिश भी आ गया। हाँ ठीक है, जा कनिश ले ले, जा बेटा। कनिश में नारुतो, तुम 5। हाँ जाओ। अबे तू अपनी टीम का बढ़िया करने में लगा, तू नारुतो के साथ जा भाई, खुश हो रहा था। अच्छा रुक जा, एक कनिश के साथ अमन दे देते हैं। अरे फिर तो हार जाता है। कनिष्क और अमन हो जाएंगे एक साथ। नहीं तो फिर या तो ये कर दे कनिष्क मैं ऑनलाइन है भाई। कनिष्क को स्टेज की आईडी दे दी बेटे, इतना मत बांट। जिस दिन उसको एहसास हो गया ना, गाना मार देगा सबकी। छोड़ भाई, हमें क्या करना। तुझे पता है क्या होता था ना अमन? पहले वैलोरेंट में ना रूल था, अभी तो हटा दिया वो। पहले रूल था 5 बंदों से ज्यादा आईडी अगर बढ़ गई तो आईडी चुद गया।
अबे हाँ मेरे साथ हुआ तो था। भाई चलो उसको तो बुला लो, कैसे आएगा? हेलो पता नहीं पास का दिखा, लेकिन वो पता है क्या प्रॉब्लम थी, भोसड़ी का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाओगे। अबे वॉरलॉर्ड कस्टम लगाना है नारुतो भाई साहब को 2v कुछ करना है। अरे यहाँ तो नारुतो तू 1v4 कर लेते हैं, इनमें बहुत कूद है। जाना आजा, गांडू। ये हाँ टीजी किस पे है? टीजी तो कनिष्क पे है। और कोई आ जल्दी रहा है जल्दी क्या? जाना आ रही है क्या? उधर जाओ। ब्लेड उधर जा और ये कि भोसड़ी वाले तुम इधर आए हो, तुम उधर जाओगे, लंड मैं नहीं जा रहा। अबे यार ये क्या कर ठीक है रहा भाई चल, बच्चों का क्या करेंगे, आजा। भाई ये तो चीटिंग है यार, तुम लोग खेलते हो यार तुम दोनों तो। भाई क्या मैं बात तो है? नूब हूँ। भाई हम शेरिफ तो कुंडी करेंगे, चल शेरिफ कुंडी करेंगे चल। ओए गार्डियन अरे कहाँ शेरिफ ओनली? शेरिफ गार्डियन नहीं शेरिफ फायदा क्या है? अरे फिर तुम काय के डायमंड भाई, तुम शेरिफ नहीं मार सकते तो? मैं डायमंड हुई नहीं, मैं तो नूब हूँ। मैं तो हुई नहीं डायमंड, मेरे को अलाउड है, नारुतो को अलाउड नहीं है। चलो नहीं नारुतो असेंडेंट है भाई, असेंडेंट फ्री। भाई मेरी गांड क्यों मार रहे हो भाई? अभी अभी मैं नारुतो बूस्टेड नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं नहीं मैं नाइफ बूस्टेड हूँ, करेगा, मैं मेरे को कुछ नारुतो अलाउड नहीं है। नाइफ करेगा। नहीं ओनली शेरिफ खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। तुम लोग ओनली शेरिफ, हम मेरे को नारुतो दो। ये खेलू क्या? हाँ 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 गांड मार और दे। तुम सुन सेम साइट आना, ठीक है? एक ही बता साइड, हाँ के। एक ही साइड आना। हम ही बता के आएंगे कि हमें यहाँ। डिसाइड कर लो, अभी से डिसाइड कर लो भी आना पता है हमें या हमें से इसे एक को स्मोक लेना चाहिए था या कुछ ऐसा लेना चाहिए। हाँ मैं तू कॉम्पी खेल रहा है ना लौड़े, तू तो कॉम्पी खेल रहा है। नहीं। अमन भाई कहता रैंक गिर जाएगी अभी। प्री प्लानिंग करनी रैंक अप गेम है अमन भाई का। अमन भाई का कस्टम रैंक अप है। कस्टम में रेडियंट पैर को मारेंगे। चलो भाई अमन भाई तो कस्टम रेडिएंट थे यार। जस्ट जिसको भी रेडिएंट बोल रहा है, सामने एक चूतिया तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? कौन सी साइड आ रहे हो? और मेरे से मत आना, ठीक है नारुतो? तू लर्किंग वर्किंग पे मत चला जाइए। हाँ नारुतो नहीं जाएगा, मैं उसको काबू में रख लूंगा। तुम मेरे को ये बताओ तुम कौन सी साइड आ रहे हो? बी बोल भाई, बी। ठीक है नारुतो नीचे वाली बीसी ले चलो, ड्रैग कर ले। अरे कहाँ भाई? चुप रहे, फायदा क्या? हाँ ठीक है छोड़ इनको रोने दे रहा है, इधर ही रहे छोड़ करने दे। क्या निकल, रोने वाली बात नहीं है, निकल। नीचे फेंक दे, नीचे फेंक दे, तू ही फेंक दे। ना मैं तो नहीं फेंक रहा भाई। तो फिर रहने दे। भोसड़ी वाला स्मोक डालने का तुम्हें क्या बोलूं भाई? Spike भाई down मारो B. तो सही। तेरी टीम में कौन है नारुतो? ये और उसका मर्द पीछे ना, सामने तुम लोग के सामने बिल्कुल। One enemy remaining. जो देख रहा है और तेरा गेम। अबे अब तो पुश कर दो भाई, कितना होल्ड करोगे? भाई तुम्हें आना है ना साइड पे, हम थोड़ी होल्ड कर रहे हैं, हम तो सही है। कैरेक्टर क्यों लाओगे भाई? भोसड़ी को हाँ फायदा भाई क्या? फिर हम स्मोक खेल रहे तो ऐसा बोल रहे थे कि लोड़ा लसन कर रहे थे। अच्छा स्मोक मत दे भाई, रोते अरे रहेंगे। स्मोक नहीं दूं तो क्या करूं? कैरेक्टर ही तो कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट शेरिफ भाई, वो शेरिफ की बात हुई थी भाई नारुतो। शेरिफ? तो पिस्टल राउंड में भाई। मैं तो पिस्तल राउंड में कहाँ से अब लेके आऊं? Last player अरे standing. भाई ज्यादा हीरो बनना था, ठीक है? ज्यादा नारुतो पिट मत जाइयो, वन शॉट का है तू। Clutch. ये बताना उसको जरूरी है वन शॉट हूँ? हेडशॉट ही मारा उसने कबार। अरे तो फिर भी इतनी देर से तो विफ ही कर रहा था ना, फिर भी विफ कर रहा था भाई इतनी देर से वो। बेशरम है नारुतो। शेरिफ ओनली ठीक है। शेरिफ ओनली। ठीक है। हम कुछ भी चला सकते हैं। बहन के लोड़े, तू ओडिन लेके आ जाएगा बोलता है, ओडिन लेके आ गया था, ऐसे ही शुभ कर रहा था मैं शेरिफ ओनली। ओडी नहीं स्पेक्टर चलाऊंगा मैं। आरएनजी करते हुए, ये भी बोल, ये भी पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके आरएनजी करते हुए। भाई सुबह तूने देखा नहीं भाई? यूटिल फेंक दूंगा। Last player standing. भाई लगा लिया लौड़े ने, लगा लिया। ये देख लगा लिया मूवमेंट दिखा रहा। अब देखना ओए लग गया था इसको, अबे ऐसे लैग कर दिया। कैसे घुस रहा है बहनचो आरएनजी करते हुए, देख कैसे घुस रहा है बहनचो। अंदर बंदे हैं भाई। मैं बैंडल उठा रहा, बस मैं ओडिन उठा रहा मैं। अरे किसने शेरिफ फोन लिया भाई? काय का डायमंड भाई अच्छा शेरिफ फोन लिया भाई, मैं ये तो गलत डायमंड बात। हूं ही नहीं, मैं डायमंड ही कैसे भाई? तुम लोग का एम लग रहा है ना, बोल दो।
मैं डायमंड भी नहीं। बहुत भाई फ्लैट तो गया, डायमंड नहीं पता तू टेंशन मत ले, मैं अपनी सारी यूट्यूब फेंक दूंगा सालों को। यार। डायमंड के लिए बहुत ज्यादा ही गांड दे नारुतो घुस जा अंदर, घुस जा पहले क्या नारुतो घुस जा। मज रहे हैं Cutting their घुस vision. जा Cutting their vision. Last player अरे बाप standing. रे, मून देखा, मून देखा। अरे ओ ये भाई मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं ये बीच में लगा हुआ है, ओए अब बेटा तू Round in the half. किक कर वॉरलॉर्ड को, Don't be cheap. मिस से मत Go before it's gone. नहीं भाई मैं बस हो गया मेरा, पीछे से आया तेरे warlord। खोलने की बात हुई थी, तू ये गाड़ी नहीं ये मिड से क्यों आया, ये मिड से क्यों आया? तूने भी तो गाड़ी नहीं की है, तो उसने चलाया नहीं ना गार्डियन। अरे अरे तो हम मरने का वेट गार्डियन चलाई, गार्डियन चलाई, ठीक है ना, मरने का वेट फिर करें, मैं वैंडल उठा मरने का रहा वेट करे, हम मरने का वेट करे। मैं वैंडल उठा रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में मैं जाए क्या बोलूं भाई, तुम्हारे ये वॉरलॉर्ड ये पता है चीटिंग सारे करता भोसड़ी वाले, ये सारे भोसड़ी वाले, ये किसी को रूल नहीं पता भाई। Last player standing. बाप रे, कुछ भी। ये अमन 1 HP था, वो वाला मार दिया, चल बढ़िया। ये बड़ा क्रिंज है भाई, इसके मुंह पे तो जाना ही नहीं है, चूतिएगा फोनिक्स। One साले enemy समर। remaining. ध्यान से उसको क्लोज रेंज मत आने दियो, लॉन्ग रेंज में मार दियो उसको चूते को, क्लोज में घुसने मत दियो। गार्डन की बात हुई थी। एक नोट हाँ आप तो वो रूल तोड़ेंगे। मिड आने की भाई, बात भी मिड आने की बात भी नहीं आने हुई की थी। भी बात हुई थी। तो तुमने गार्डियन तो फिर भी ली थी, ऐसा थोड़ी है मरने फिर का भी वेट मारा थोड़ी तो है। किसी ने नहीं था। मैं फर्क नहीं पड़ता भाई, तुमने कत्ल तो नहीं हुआ था किसी का, कत्ल तो नहीं हुआ था। लैंड हम मर रहे तो ये भी दिक्कत हमारी है। तुम्हारा एक बंदा दोगलागिरी कैसे कर सकता है? ओए बाप रे, तुझे पता है ओए मैं ओए क्या दूर रहे उससे, दूर रहे उससे, चुद जाएगा। ओए चुदा, ये चुद गया, मन चुद गया। नाइफ कर लवड़े को, 30 नाइफ। seconds left. अरे अमन भाई थोड़ा पीछे से आना। जोक्स ओवर साले, कोई तो अमन भाई कैसे हो? क्या हुआ? कोई तो सही जगह जोक कर लेता भाई। खेल रहे हैं क्या अपन? हाँ फोनिक्स खेल रहा है अमन अपना, फोनिक्स। How did we forget? बाकी तो पीछे हट गए, ठीक है? गार्डियन है, गार्डियन को पीछे। नहीं ये इसकी औकात कैसे हुई वॉरलॉर्ड के मिड से आने की? तो गाली दे भाई, मेरे से क्या मतलब, इसको गाली देना। मेरे से क्या मतलब, मुझे थोड़ी फर्क अब हम भी बता के नहीं आएंगे, अब साइट नहीं बता के आएंगे भाई। तूने मेरे से बड़ा लड़कर से कर लिया ना। अरे साइट का मत कर, साइट का मत कर। साइट ए जा रहे, आ रहे, ए आ रहे, है क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? ए आ रहे भाई हम। जल्दी आओ, ए पे आ रहे हैं। लैंड है, भाई ये आ रहे, कसम से आ रहे। देखो उसने मिड पे घूमा तो मैं भी मिड पे घूमूंगा। और मेरे से बड़ा लड़कर कोई है नहीं दुनिया में। वॉरलॉर्ड को किक बेवफा है तू, मेरे को लगा वॉइस पार्टी कर रहा है। Spike down A. अरे लगा लिया लंडन ने साला, लगा लिया साला कुत्ता। हैक के बिना इसके हेड लगते हुए भाई मैं तो भाई मान ही नहीं सकता। भाई मेरे को टीममेट दो खराब हो। साले कुत्ते टीममेट भाई, मेरे हाथ दुख चुके हैं भाई। मेरे को कनिष्क दो भाई। अच्छा बेटा जा, तू कनिष्क ले जा, मैं और ये सब चलते हैं एक साथ। स्क्रीनशॉट देख, स्क्रीनशॉट देख समझ जाएगा। बहुत जरूरत है यार मेरे को नारुतो थ्रो करवा। ओए रंडी Spike down A. क्या कह रहे हो? भाई स्क्रीनशॉट देख इसका कत्ल होते हुए। One enemy अरे। remaining. ये देख पीछे आ गया। थी ब्लेड। ब्लेड भाई बस की नहीं है तुम्हारे। आ देख तो रहा दिया तो है, स्क्रीनशॉट दे रखे हैं। समर्थ भाई 1v3 करते हुए और आगे का समर्थ। 1v3 कर रहा है क्या समर्थ? क्यों? नहीं हम 2v3 कर रहे हैं। तो बेसिकली हां सब बहन के लिए बी जा सकते हैं क्या? नहीं, एक ही हाँ बात हाँ है, ये बिल्कुल तो A रोटेट है। काट ले, बिल्कुल बी पे प्लांट कर देना, तो कह रहा हूँ इधर ही बैठा चला समार कर आराम से प्लांट। अभी कहाँ हो रही है मेरी शादी? अरे अभी बाई चांस अगर तू इससे पिट जाता, बाई चांस अगर तू ब्लेड से पिट जाता यार, समाज में क्या मुंह दिखाता यार। Still a difference. इतना भरोसा नहीं है क्या? नारुतो नहीं यार, बेटे की खुशी में भाई शेरे फोन ली।
कुछ नहीं है सेरिफ ओनली। ये तो बहुत है बड़ा जान क्यों पड़ रही है? नहीं मतलब अब सेरिफ तुम दोनों ओनली है तेरा। वॉरलॉर्ड को बोल मिड से ना आए, किसी तरह वॉरलॉर्ड को बोल भाई मिड मेरे से ना को आए। भाई एक बार आया तो तुम्हारा एक चूतिया लड़का हमेशा मिड में ही मार रहा क्या है। नरूटो नरूटो गन भेज दे, नरूटो सेरिफ ओनली कर लेते हैं। भाई तुम ये ऐसे क्या हार कर रहे जाएंगे हो भाई, यार? लास्ट राउंड है मेरे को आने हमारा। दे फिर करो, मैं मेरे को आने दो फिर करो। हाँ तू आ जाना, रुक जा। ये तू भी खत्म बोल होने करेंगे वाला मेरी है। है। हाँ। हाँ, तुम 1v3 कर रहा हूँ मैं, 1v3। भाई मैं तो Last player ओए standing. मासूदा है भाई, भाई, तीन मैं की बात खेल ही नहीं हुई रहा हूँ। है। बहन चोद कुछ भी मार दो भाई, अब मेरे साथ इस पे हक देगा। तीन की बात थोड़ी हुई। बहन के लोड़े मेरे प्रो बन जाते हैं सब। ये कौन है? जेस जेस से कौन है? रुक जा मैं जैसे वारलॉन ले वैंडल उठा, वैंडल यूज की क्या अपने अपन ने? ए आओ बाहर आ। भाई ये मेरे रुक को यार। ये और भी है। ये ब्लेड को बारह पीट बारह रहा मेरे को है। इनवाइट कर, मेरे को इनवाइट तो कर। मेरे जाओ, को लगा कि शेयर भी उससे दूंगा सिर्फ। जा उधर जा। कनिष्क आ जा, कनिष्क आ जा, नरूटो उधर जा, 2v4 करते हैं। नरूटो उधर जा, नरूटो उधर जा। जा रहा हूँ भाई, जा रहा गेम का हूँ। कंडीशन तो सुन ले, ओनली शेरिफ है। दादाबाजी हो गई, बेवफा का कुत्ता बना दूंगा भाई, तू ओनली देख शेरिफ, अब ओनली इनको शेरिफ। भाई, रुक जाओ, जा। जाओ, जाओ। नरूटो जल्दी जा, नरूटो जल्दी जा। वॉलॉर्ड भोसड़ी की तरह तुझे किक ए कर लौड़े दूंगा। वारलॉर्ड उधर आ। जा ओए, स्टीजी हाँ, उधर जा, अपन attacker में जा चलते हैं, तू मिसर उधर के जा, साथ, तू उधर जा। मिसर के साथ नहीं। ओए ब्लेड उधर जा, ब्लेड ब्लेड इधर आ, ब्लेड इधर आ। मेरे पास आ गया। अबे तू इधर आना, बस खत्म, हाँ। स्टार्ट कर, वॉलॉर्ड कौन भाग गया भाई? स्टार्ट कर, कोई स्टार्ट नहीं कर। भागा, कोई नहीं भागा। पागल है बहन के लौड़ों की रुक जा। फोन कंडीशन तो समझ ले कने, शेरिफ ओनली खाली तुम लोग के लिए, हम कुछ भी खेलेंगे। अरे हाँ हाँ भाई समझ गए। वो तो कर भी लेगा अरे मुझे भी। भाई गार्डियन, गार्डियन तो दो यार। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, शेरिफ ओनली भाई। शेरिफ, ओनली शेरिफ, ओनली शेरिफ। हाँ, भाई देख, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन जिसके सामने तुम करने की बात कर रहे हो ना पिस्टल, कनिष्क भाई, वो आरएनजी चौदह है। शेरिफ घोस्ट कुछ भी चला सकता है। मैं सोच रहा हूँ ना नहीं, मोन, नहीं, अभी only कनिष्क को शेरिफ। रोता हुआ देखूंगा, अभी कनिष्क को रोता हुआ नहीं, देखूंगा मैं। पिस्टल है भाई, इतनी दया तो करी होगी। नहीं ओनली शेरिफ। नहीं नहीं, कनिष्क को रोता हुआ देखना चाह रहा हूँ मैं भी। भाई कोई चीटिंग किया ना, कोई चीटिंग किया, मैं ओडिन कोई को नहीं, सब एक बता साथ रहा से हूँ। आएंगे। ये भोसड़ी का वॉलॉर्ड की गायन मार दे भाई, यही है। वॉरलॉर्ड को की कर दे। पहले मुझे पहले ये बताओ कौन कौन क्या क्या है, ये बताओ। हाँ नहीं, भाई, Warlord का मतलब वॉरलॉर्ड नरूटो ब्लेड मेरा बेटा है, और क्या जानना है? बहन का लोड़ा। मेरा बेटा भी गे है। भाई मेरा ऑर्डर लेना आ रहा है, तो मैं बीच में पे जाऊंगा। भाई यार मार्बल तेल लगाना पड़ेगा, काला पड़ गया है। क्या अबे छिली हुई जगह साले, छिली हुई जगह। भूसड़ी का छी भाई, कुछ और छी। समझ रहा था सुन मतलब। डी आना है तुम लोग को, ठीक है? क्यों हम कोई भी साइड है अटैक पे? फट गई। हाँ भाई, क्यों भाई हम लोग दोनों हैं, तुम लोग चारों ऊपर। जाना बड़वे जा, रो मत रो, नहीं चल इतना चल। शोर मत नहीं, करो, तेरे तुम्हारे साथ पता नहीं कनिष्क। माइक इतने गंदे गंदे क्यों है। अगर एक ही साइड, ओए अगर एक ही साइड आएंगे तो गन उठाएंगे फिर हम लोग, देख। गाना भाई नहीं रहने दे। मेरे साथ कनिष्क है भाई। तो क्या भाई, फिर भी तुम लोग चार लोग हो, तुम लोग चार अरे लोग हो भाई भाई। वो बंदा पाई। तो चार लोग में से तो किसी को खेलना ही नहीं आता भाई, लेकिन हमें तो तो खेलना ही। ओए, क्या बोल रहा है ये भोसड़ी वाले? तू पिछली बार गाँव में डाल रही है। मैं बोल रहा हूँ मुझे तो खेलना ही नहीं आता। अबे मिड अलाउड नहीं है, ठीक है? कभी मिड चले जाओ। सुन सुन, हम मेरे को और इसको दूसरे पीसी में ड्रैग कर दे, सीरियसली खेलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, यहीं पे खेलना पड़ेगा। तो सीन ही नहीं है। हाँ भाई कर, इतना नहीं भाई, ये तो होगा ही नहीं भाई। हाँ भाई, अमन जा अपना खेला दिखा दे। अमन जा, तोड़ रहा हूँ, खेला दिखा दे, जा अमन। Spike planted. Last player ओह, standing. आटा मार दिया। Flawless. ये भी खाएगा। ये गलत टीम है भाई। अबे रुक जा भाई, अभी रुलाता हूँ, रुक। नरूटो की औकात तो है नहीं भाई हमारे। नहीं निकाल सकते। क्या? किधर आ रहे हो, बता क्या हो, बता क्या हो? वो बता के तो नहीं है कि तेरे तेरे घर आ रहे, तेरे घर आ रहे, दरवाजे पे खोल, भाई ये बता क्या हो रहा है? दरवाजा खोल, ठीक है भाई, खोलता हूँ, रुक जा अभी। खोल दरवाजा। तनिष भी साला आरएनजी करने लग गया है अभी। अरे भाई एक खड़े हो गए मारा है उसने। भाई मैं वो नाच रहा था, ठीक है, एक जगह खड़े होके नहीं मारा उतना तो उसने। करेगा ही भाई। तेरे से गोली खाने के लिए वेट थोड़ी करेगा। करना तो चाहिए भाई। अरे हेलो, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। व्हाट द फक भाई, मैं रुक जा, मैं फिर कैसे आ रहा है, तू कैसे आ रहा है? थप्पड़ मार दूंगा। भाई मैं कहीं नहीं आ रहा था, मैं कहीं नहीं आ रहा था, ठीक है?
मैं वहीं पे बैठा हुआ था इस गेट में। ये तो बता दे नारुतो। अरे मिड पे है भाई, लर्क कर रहा है वो। मैं नहीं खेल रहा, रुक जा, लर्क दिखाता हूँ ना मैं इनको। लर्किंग ना बेटा, लर्किंग, रुक जा। हमें नहीं काम करना है नारुतो भाई, हम चिल करके खेल लो। नहीं भाई, लर्किंग दिखाता हूँ, रुक जाओ। स्मोक कर जल्दी स्मोक कर। भागना नहीं चाहिए बंदा। भाग भाग भाग। आजा आजा आजा। ये डाल दे ब्लेड। One enemy remaining. Spike down. अरे Attacker वो भी spawn. वही है भाई, मार। ओ अबे सब लर्क कर रहे हैं, रुको मैं वैंडल हूँ। अच्छा, तुमने शुरू किया है, तुमने शुरू किया है लर्क सब। पहले आ रहा था नारुतो। भाई नहीं आ रहा था, जाके लाइव देख ले, जाके लाइव देख ले, जाके लाइव देख ले। मैं कुछ नहीं, भाई इसने रंडी रोना इसने स्टार्ट किया, ठीक है। नारुतो आ रहा था, ठीक है, बात जा नहीं रहा था भोसड़ी। जा नहीं रहा था भाई, मैं उधर देख रहा था, साइड पे देख रहा था। ए से मैं इधर बी है, बी साइड देख रहा था। बहनचो तुमने भाई बीट से मार दिया। Here. Get some out of here. Still in sight. Reloading. Still in sight. One enemy remaining. हेलो हेलो। Last round before the मेरे switch. तो हाथ पे क्यों हो रहे हैं, मेरे साथ कस्टम में पता नहीं कुछ हाथ में से घुस जाती है भाई। लौड़ा ले मेरे। हो भाई Reloading. आटा तो पड़ा भाई, आवाज आई बहुत खतरनाक। One enemy remaining. गया वो गया, ठीक है, बहुत डैमेज है। वही मैं जुट जाऊंगा नारुतो। कहाँ भागा वो? तो तक कहीं तो भागा। Still in sight. यही है, यही है। Someone's in attacker spawn. Long. भाई छी, भाई छी, भाई छी छी, समर्थ भाई छी, इससे पिट रहा है। अरे तेरी मारंडी भोसड़ी। छी समर्थ, इससे कैसे पिट रहा है? रुक तो क्या लगा के जाना है, किरी किरी के। अरे भाई कैसे रहा है नारुतो? बस नारुतो रुक, किधर है तू? रुक, नारुतो अनमेन करेगा मेरे से, अभी बहुत बज रहा है, इसको कहाँ तैयार दिलानी पड़ेगी। आजा 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 आजा, मिड लिंक आजा आजा, तेरे से 1v1 आजा। हाँ तेरे चोचले आएंगे ना पीछे, तेरे 3 चोचले। मेरे चोचले नहीं आएंगे, मैं अकेला आऊंगा भाई। तुम अपना चोचला लेके ना आना। उसको पूरे छूट है भाई, नारुतो के गांव उसको नेट करूंगा, मत बताना उसको नेट करूंगा। मैटर नहीं करता भाई। तो नहीं आ रहा है, ये मार देगा नारुतो मेरे को। अरे क्या बात कर रहा है नारुतो आ गया। गुड जॉब, गुड जॉब। One enemy remaining. अरे भाऊ कहा था ना, अरे भाई तो ऑब्वियसली इसके बाद क्रॉसहेयर में जाऊंगा तो मरूंगा ही। और आयरन का भी हो तो भी मार देगा, क्रॉसहेयर में जाऊंगा तो। ये 48 है। ये हमारे एफटी क्यों है भाई? आ गया आ गया आ गया। 48 है, 48 है, साइड में है, अंदर बोट हाउस है। ठीक है ठीक है ठीक इधर आ गया। अरे चूक गया। स्मोक में आ गया, रेना स्मोक में आ गया, पीछे देखा आवाज आई। अरे यार हर जगह से आ गए। छी भाई, किससे टाड़ा खा गया भाई मैं हेड पे ही मारा फिर भी नहीं मरा। Match point. हाँ भाई, कोई बात नहीं। क्योंकि तू गे है इसलिए। ओए सुन समर्थ, तेरी बुलेट स्ट्रेट ही नहीं जाती। समर्थ ले ले। जी वेल प्लेड किड्स, बाय तभी बाय। तभी नारुतो का हेडशॉट ज्यादा लगता है। हेडशॉट को कभी मार ही नहीं सकता ये। क्या ही लो भाई, क्या ही लो। इसके बाद वो है ही कॉम्बी नहीं मेरे पास। मेरे दादा बंदे नहीं है, कॉम्बी के लिए। 6 बंदे में कॉम्पी करेगा, तेरी बुआ लगा के जाएगी इस कॉम्पी। एक को हटा देना यही बुआ लगे। ना, काम करना। जो बॉटम फ्रैग कर रहा है, यानी कि अमन भगा रहे हैं हम। अरे पागल है, मैं तो नारुतो भगा। अबे बी पे तो भैया ही नहीं। Cutting their vision. भाई ये देख, ये साइट बता के भी नहीं आ रहे ना भाई तुमने तुमने बहुत बताई थी, तुमने बहुत बताई थी। हम 2 लोग हैं, तुम 4 हो भाई। 4 लोग हो एक गन उठाया है। वो मारने का दम रखता है, ठीक है। Reloading. वो कौन बताएगा? One enemy remaining.
चल समझ मार के आ रहा हूँ। अरे मेरे को क्यों मारता है भाई? मैं तेरा पापा लग रहा हूँ, मुझे मारना चाहिए। इतना जरूरी है। भाई क्या क्या पता नहीं मुझे मैं बोलता अपन दोनों में आईडी से डुओ करते हैं, इनको 5 स्टैक करने दो पेलन। रुक अब भाई मैंने कहा मुझे सुन 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 स्टैंडर्ड लगा, सुन सुन नरूटो स्टैंडर्ड लगा। अब मैं कोई शेरिफ ओनली भाड़ में जाए तुम्हारा। नहीं मैं नहीं नहीं सुन भाई भाई अब कुछ नहीं लगेगा भाई, कॉम खेलेंगे भाई, हो गया। नहीं अरे सुनूंगा मैं। तुम खेलो, मैं खाना खाता हूँ यार। हाँ ठीक है आजा, जा। ए 2v3 करेंगे। कॉम्पी भाई 2v3 नहीं भाई, कॉम्पी खेलेंगे बकचोदी नहीं। इतनी खतरनाक रैंक क्यों लाए हो? द फक ओए लौड़े, तेरे को मिस्र से आने मना किया था ना? मेरे को? हाँ तुझे बोला 958 से आजा, 958 से आजा बोला तो था तेरे को। 9x9 के ओनर के सामने बोल दे भाई शट अप हो जाओ, अभी मैं थोड़ा सा ना फोन देख रहा हूँ। नरूटो भाई की फट गई। रुक जाओ मैं हिला के आता हूँ। बहुत बहुत अच्छी वाली वीडियोस आई है इस बार ग्रुप पे भाई। मून चालू कब हो रहा है मैच? बोल। 8:30। ठीक है चल, अभी मतलब 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा खेल लेंगे। बहुत टाइम है। चलो भाई तब तक मैं आया, मैच नरूटो चालू आज, होने दो। नरूटो आज। मैच में मूड क्या नरूटो भाई तुम तो लगाना मत, और बताना भी मत, और बोलना भी मत। नारुतो सेंटिनल्स पे मत लगाइए, तो तेरे को जिस पे लगाना है तू लगा। नरूटो के अगर आज सेंटिनल हारी तू देख। मैं तेरा मर्डर कर दूंगी नारुतो। नरूटो की वजह से PRX आ जाएगा, नरूटो की मारी चुप। तो किसको भी लगाना है तो पहला मैच किसका? पहला मैच किसका? जेनजी और PRX का है फर्स्ट। तो उसमें तो जल्दी जीतनी थी। PRX जीतेगी। PRX इसको भी बैन मार जेनजी भाई, जेनजी अभी तक एक भी मैच नहीं हारी। तो क्या भाई, आज हार गई तो अगर आज हारी भी तो वो घर नहीं जाएगी, क्योंकि वो 2-0 वाली टीम, उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा। अगर आज PRX हारती है तो वो घर जाएगी, कौन बोले? क्योंकि अभी 4 मैचेस लेफ्ट है। भाई मेरे पैसे तो पड़े हैं लगाने के लिए, लगाऊं कि नहीं लगाऊं? कितने भाई, कितने? अंधा मत लगा देना भाई, तुमसे डर लगता है। फाइंड है गाइस। अबे तू चेंबर मत खेल वॉरलॉर्ड, तू डीएम का बोल। एक सेकंड, नरूटो तो नहीं है क्या? चेंबर मत खेल तू। और क्या खेलूं? नहीं नरूटो है मैं। कुछ और खेल। नहीं अरे मैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चेंबर मत खेल। क्या खेल? अच्छा है, कोई सेंटिनल ही लेना है तो साइफर उठा ले। ओए मैं खेलना साइबरलैंड। चुप। तेरे बस की नहीं है। हाँ मेरे बस की है, तू चुप बैठ। तेरे ट्रैप मैंने देखे हैं, उससे अच्छा हाँ तो आयरन का वो प्लेयर लगा फंसते हैं भाई लेता है। लोग, ठीक है उसमें फंसते हैं लोग। उससे अच्छा आयरन का प्लेयर ट्रैप लगाता है। अरे यार गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे कनिष्क वो क्यों ले लिया कि वो कोई नरूटो शायद AFK है ब्रो। नरूटो ब्लड डाउन से थोड़ी है, बैट फॉर ब्लड से। मैं हूँ ये तो मैं हूँ। क्या लेना डुएलिस्ट कुछ ले लूँ? बैट फॉर ब्लड लेना। डुएलिस्ट खेलूँ क्या? स्मोक स्मोक्स है ना? नहीं स्मोक्स नहीं, वो ले ले। स्काई ले ले, स्काई है सोवा। डबल अरे अपन अरे ट्राई करेंगे यार, इन लो भी ट्राई करेंगे, तो देख तो सही। सोवा ले रहा हूँ फिर। स्काई नहीं जमता। ब्रीच ले लूँ क्या? सोवा लूँ, ब्रीच लूँ, नरूटो गेको ने लूँ? जो रेट दिया है, इसकी औकात है, इसके बस की है। अरे अच्छा ठीक है चलो सोवा ही रहने दो। मैं सोच रहा था गेको ले लेता हूँ, प्लांट हो जाएगा। सेज नहीं है तो बस गेको नहीं है, वरना मैं गेको ले लेता। मिसर में भोसड़ी का गेको ही नहीं खोल रहा। अबे सेज लेना था रे किसी को। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ ये नरूटो की ऑस्की है जिसने रेस लिया है। नरूटो के हिसाब से तो अरे नरूटो फेस कैम क्यों नहीं करता तू? पूछने की बात है, पूछने की बात। नरूटो भाई हेलो। उसका हेलो नरूटो हेलो। घर पे गाली खा रहा है, घर पे गाली खा रहा है, घर पे गाली खा रहा है। नरूटो की गाड़ी में कितने लोड़े? 100 लोड़े। बैंड के लौड़े सुन ले। This bow has taken men and beasts alike. I फेस कैम क्यों found नहीं there is करता? little difference. पूछने की बात है, कोई पूछने की। भाई नरूटो की किंग को तो बीच में नहीं लाएगा ना आज। भाई फेस कैम करो भाई, नरूटो भाई फेस यार कैम करो। नरूटो अरे लाएंगे बिल्कुल, उसके रेड 10,000 नहीं चूदेंगे। करती फिर यार, रेड नहीं पड़ेगी, कोई रेड नहीं मारेगा, मतलब तेरी रेड नहीं मारेगा तेरे कोई। फेस कैम ऑन रखा कर कनिष्क भाई तुम क्यों नहीं स्ट्रीम करते? भाई, फेस कैम ऑन भाई करो। की 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरा रात। ओए ट्राई बदल लगा लो, ठीक है? क्या लगा रहा है? अपनी शक्ल के बारे में बोल।
नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, अबे काशी बोलना चाह रहा है क्या कनिष्क को? छी भाई मुझे बोलना जा रहा है मेरे को लाउडे भाई, इतनी बुरी गाली मत देना ठीक है। ककाशी तू ककाशी हो ही नहीं सकता क्या? मुंह की न्यू भोसड़ी के होल्ड कर ओए ब्लेड होल्ड कर, बी पे होल्ड कर। अबे नाम ये भाई मैं ए पे हूँ लोरू। अरे वॉरलॉर्ड है। अरे भाई चलो ये लोग सिल्वर नहीं है, पहले बता रहा हूँ। वो तो पता ही था मर्ज कर रहे हैं। 78 ये लोग सिल्वर नहीं है, फिर बता रहा हूँ। मोटा में पता चल ही गया। सिल्वर भी आजकल ऐसे ही मारते हैं। अरे सो अबे नहीं नहीं टूटी है सिल्वर, चाहे कैसा भी मार ले, लेकिन कभी थोड़ा फ्लैश धीरे बोलो धीरे बोलो। आ रहा है वो साइड वाले फ्लैश नहीं डॉट कर सकते। वो एक बैक से आएगा। भाई तुम कहाँ घुसन दे रहे हो? Spike planted. डिफ्यूज पर वेट। एक बैक से आएगा और शावर बैठ रहा है। बैठना पे क्या कर रहा है ब्लेड? बैठना कौन है? साइफर कवर देगा मुझे? मर गया। छोड़ दे। Last player standing. टूट गया। One enemy remaining. इजी है, हाफ है। हाफ है हाफ है। पीछे है। अब कर दे स्टिक कर दे। पूरे चाटा मार दिया भाई। तेरे ठीक है किसी पे? नहीं नहीं। ओ A little recognition is nice. सेंटिनल खाली की गोल छोड़ के क्या उठा रहा है? अरे क्लासिक सेंटिनल की। इनका 14 क्या ना स्किल का प्रियोरिटी कैसे कैसे बोल रहा है? I don't know एक ना हाथ सवाल में भी गैर गुजरा है भाई। ये वाला मैं बादाम का है इतनी बड़ी गली। हेलो ईगल श्रेया हाय ब्रो ब्रो भाई वॉरलॉर्ड हैज नेगेटिव रेंज। वॉरलॉर्ड भाई का नेगेटिव रेंज। मैं रनन गन कर रहा था, उसने मेरा उल्टा रनन भाई ब्रो बोल दिया उसने तेरे को। अबे वो ब्रो बोला नहीं है, वो ब्रो है ब्रो बॉय। ओए One enemy remaining. कौन मरने वाला है उसको मैं पहले से मार दूं। डिफेंस स्टिक करना मुझे मत मारियो ओए, मैं मरने वाला हूँ। भाग ब्लेड भाई। Revealing area. They think we wouldn't fight back? भाग रहा है। आप बंदा है भाई। गोल्ड के प्लेयर बूस्ट करने लगेंगे। अबे क्या कर रहा है? इतना क्या सेव कर रहा है? गवार है क्या? ये मेरी स्पेक्टर ले, मेरी स्पेक्टर ले, मैं ले रहा हूं। अंदर बैठ तो रुक जा। बी साउंड है। आया बी। नरूटो भाई अपनी लड़की पे गाइस। ओ मैं इसको गलत ही मारा। अबे क्यों? पूरे कैसे भाग गया? मैं जा रहा हूँ। होल्ड करो, दो भी रहो। भाई बैठे यार ब्रो क्या मेरे को भी ऐसे चाका मारा भाई। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से आ रहे हैं। होल्ड करो ना, पीक क्यों दे रहा है वॉरलॉर्ड? पीक मत दे, मैं आ रहा हूँ। मैं चूत जाऊंगा बेटे। एल्बो गया क्या कोई? Player standing. अरे यार Spike जा planted. तो 108 है, स्काई 108 है और ओमेन भी 50 है। क्या मार देता हूँ, मंडल नहीं अभी। इसका क्लोज है शायद लेफ्ट में। ऋषि ना आया, मेरे को लगा रुक जाऊँ। ऑल गार्ड ये दोनों साइड है। सेव कर ले अब। चुप रह चूती है। गेम खेलने की जरूरत नहीं है, तू मार देगा, इजी मार देगा। इतना इजी नहीं। अब उसका केडी खराब हो जाएगा भाई, 0 डेथ है। चुप करना भोसड़ी के। ये नारुतो भाई बंगाली बोल लेता है ना, वही होती है, पता नहीं कैसे। अबे बोलने की बात ही नहीं है भाई। बाबा चुप, बंगाली बाबा चुप।
पुतला बना के ना गला काट दूंगा। काट के दिखा बोल से। पुतला बनाने के पैसे हैं। अरे उसके लिए भी मेहनत लगेगी। उसमें भी मेहनत लगती है भाई। एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था भाई, आदत आती है मैच को। मेहनत लगेगी तो नारुतो कर ही नहीं पाएगा। एरिस उठा रहा हूँ। तुम कैसे भूल जाते हो भाई? मर्फिन ब्रोंज। ओमेन ओमेन अच्छा मार रहा है। तो क्या कर रहा है? रुजा मेड फॉर ब्लड। नारुतो और ये क्या अल्ट मारी है इसने? और इसको बंदे मिल भी गए। चल वॉरलॉर्ड चल। भाई ये क्या था भाई, मैंने क्या किया है अभी? नून देखेगा। One enemy remaining. 94 Player standing. 94 नाइस। भाई बैचो मैं ना एक ऐसे से जा रहा हूँ टिडिंग, फिर जा रहा हूँ टिडिंग। Level heads until देखो भाई आती नहीं है वो। अबे भाई डबल सैचल मिस हो गया अबे डबल सेटल साइन ही अल्ट लेके भाग रहा था जोर से। भूल जाते हो क्या भाई? वो नारुतो है। भाग रहा था अल्ट लेके साइन। गर्दन ऊपर करके देखो ब्लेड भाई। मैं देख रहा है चलते चलते क्यों जा रहा है। चलते चलते सैचल एक एक सैचल मार रहा था भाई। सैचल मार के ऊपर जा रहा है आगे की जगह। अभी देखना बीबी होगा। अबे मारो ना उसको, ब्लेड मारा। फिर फंस गया बेंचो में। नहीं पीक अभी मत दे भाई, अभी पिक जाएगा तू। अरे 140 कितना टैग दिया? 140। वो लोग घुस रहे हैं साइड। यार इसको 140 है वो। दो है। के साथ एक और कलवी भी थी भाई। ठीक है इसका वो होता है। यहाँ शावर से इसका है। एक और आ रहा है। my ultimate is ready. अरे मैं मार नहीं। One enemy remaining. क्या बाप रे बाप। क्या क्या? रुक जा आराम से Last player अरे standing. अरे 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 भाग गया। अल्ट मारी ठीक है आवाज सुनते ही। हाँ रुक जा। बेंचो तो वर्ल्ड करके बच कैसे गया टीपी करके? वेस्ट हो गई। एक भी नहीं लगी भाई। सुनो नहीं चुप करना, चुप क्यों नहीं करता है? तेरा मुंह बंद क्यों नहीं होता है? बहुत सड़ी के खुद हगेगा फिर बोलता है हट। रंडी के We know more than we did. चुप हो जा बेंचो। चुप हो जा भाई, तू चुप गेम कर रहा है। तेरी जबान, तेरा मुंह खुलता है मैं हार जाता हूँ। हाँ भाई वो स्किल इशू बोलते हैं उसको। किसी सुनी काली जबान। खाली जवान में नहीं हो गया भाई। और जहाँ तक स्किल इशू की बात है, कस्टम में भी मार खा रहा था, रहने दे तू मेरे सामने आ गया। हाँ भाई लाइव पड़ी हुई है भाई, कस्टम में भी मार खा पड़ी रहा हुई है, देख लियो। जाके देख लियो। पहले शुरू में तो तू ही खाया फटके में। गुरु का क्या बात होती है भाई, गुरु फिर तुम ऑल इन नो ब्रेन वाला मतलब मानता है अपने आप को। चुप रहे भाई। ये है ही कस्टम वाला प्लेयर है ना। आ रहा है। ठीक है ये ले, ये भी किसी का कॉपी पेस्ट करके ले आके आईडी चिपका रहा है। ले किसी रेडियंट प्लेयर का, उसको मजाक लग रहा है। You're dead. इधर क्या अपने दोस्त होगा। ओए फक चौधा दिया मैंने। अरे मैंने उसको खारिज क्यों मार दिया? तुमने क्यों किया? अरे ये पे आ रहे। अल्ट मारना गणेश, अल्ट मार। बस गणेश को मैं देखना चाहता हूँ वीसीटी स्टाइल में स्टिंगर चलाते हुए। चुप रहे तू से मत देख। भाई मेरे लिए मेरी बेबी लगी है। Spike planted. Reloading. मेरे पे करनी है, रुक जा। रिवील है 5 सेकंड में, रुक जा। Last player standing. अरे अब सिंगर को गाली दे रहा है। Gone. 121 है वो। रेज 1 एचपी। One enemy remaining. 3 gone. ए शॉट था, ए शॉट। टीपी के और सेव कर ले वैंडल। अरे नीचे एकदम कॉपी खेल। अरे अरे
बंदा है भाई वो सामने। अच्छा हुआ मैंने बोला नहीं कुछ, नहीं तो फिर मेरे ऊपर बोल देता कि मुंह बंद रखा कर, तेरे चलते मरा हूँ मुंह मैं। बंद रखा कर, गुड बॉय। देखा अभी अभी ना बोलने के बाद फिर पिटा कर। गुड बॉय, ऐसे मुंह बंद रखना अगली बार से। नरूटो ये भाई दिया एक बार। क्या मैं तेरे को शरीफ डालता हूँ। भाई दे तुम्हें को ये दिला दे, ये दिला दे। पैसे नहीं है तुझे दिलाने का कुछ फायदा भी नहीं है। भाई आप क्यों? फिर पैदल अल्ट भाई के सेक्सी सैचल करता है। की बर्बाद। भाई इतने अच्छे प्यारे सैचल करता हूँ, आज ही ट्यूटोरियल देखा है मैंने। रोजा अल्ट हो गया, रोजा अल्ट। अबे आप क्यों टीपी करके जा रहे हो भाई? मार भी दिया भाई सही में, मतलब सामने क्या ब्रांडेड बंदे हैं भाई। वो मेरी साइड देख। आ रहा हूँ, एक मार दे बस। हाँ बस भाग जा वहाँ से। भागी तो नहीं भाग जा भाग। तीन आ गया उधर की बात गवाड़ बस के देखो। नरूटो किल चुराने। अरे ये कौन है? रुक जा शावर गया पीछे गया शावर। जा रहे। वो लोग शावर से आएंगे, ठीक है पहले बोल रहा हूँ। अरे शावर के बाहर ही बैठे हैं। You will not kill my ally. कौन पे Get out of here. कहाँ पे किया? कहाँ मारा था रेस? किसने मारा था? मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। 30 seconds left. One enemy remaining. भाई बंदे ने आराम से पुश नहीं करना गणेश। अरे कोई नहीं यार तो डरेंगे क्या? तो कुछ भी चला दिया भाई उसने। बॉडी I need to step back up. गणेश भाई तुम तुम मर क्यों रहे हो? स्किल इशू नरूटो भाई, स्किल इशू। कैनो बेबी बाय करो, Reloading. बेबी बाय करो बेबी। या थैंक यू। मैं क्या बोलता हूँ, हर बार देखने वाली इजी लिखते हैं। अरे लिख दो भाई, सरेंडर इज ऑलवेज अ ऑप्शन भाई। ठीक है सबकी गाल मिल जाएगी टाइम पे। I got their own. सरेंडर इज ऑलवेज अ ऑप्शन भाई, प्लीज लिख दो। अबे ये सारे एक साथ लिखेंगे। ये चीज लिखेंगे, सरेंडर इज ऑलवेज अ ऑप्शन, ठीक है? सरेंडर इज ऑलवेज अ ऑप्शन। ऑप्शन। वो आ गया। दो बी के बाद रंडी का बच्चा हूँ मैंने। और मून तो देख रही है क्या? टिकटॉक मिल रहा है। हाँ कितना अनलकी होता हूँ भाई। दो बी के बार भी हैं, मैंने पहले बता रहा हूँ। वहाँ पे रिवील करके आया हूँ सब प्यारा में। स्पीड किल है भाई। वो एक और है। अबे सुन वो 66 है, ठीक है? आने दे, फ्लैश करेगा। झूठ बोल रहा है चमार, हील कर लेगा। ये साइड पे कोई नहीं है ना अभी। स्पाइक डाउन भाई अभी तक कोई भाई मुझे नींद इतनी भयानक अभी आ रही है वो ना। फिनिक्स है सामने तेरे? हाँ फिनिक्स। हाँ फिनिक्स। तो मतलब भाई उधर ही हो। 66 है फिनिक्स। बहुत तगड़ी नींद आ रही है। फिर पीछे गया। One enemy remaining. बस हगने का इंतजार कर रहा था वारलॉर्ड का। अगली आ गया। हग ही रहा है। स्पाइक का है, ठीक है क्या वो? हग दिया। 35 35 बोलते हुए शर्म नहीं आ 30 रहा? seconds left. स्पाइक इधर है। उसके पास ही होगी। स्पाइक इधर है। कल को 8 डैमेज देके भी। और एक है। रुक जा मर जाइयो, समझ उससे मर जाइयो। Last player standing. अरे डैमेज नहीं लगा। मार 10 देगा भाई seconds left. तेरे को मार देगा वो टाइम। ओ रुक जा अब तो खत्म। Clutch. हाथ तो होने वाला है बेचारे के बाद। गया। They're usually distracted once I. इजी अबे इजी अबे उसके पास क्या पता है भाई देना। भाई ने अल्ट तो मारा था भाई, गणेश उसको बाय कर दे वॉरलॉर्ड में। कौन लिख रहा था अपने आईडी चमकाते हुए, फ्लेक्स करते हुए? सॉरी ओपी ओके। लिख रहा था वो, इसलिए लिख रहा था। वही भाई नरूटो से कोई यही था भाई। सैचुरेशन भाई का गेम सेंस देख रहा है। अल्ट मार रहा है प्लांट करने के लिए। उसको खौफ था भाई, मुझे खौफ है। अब तो नहीं आएंगे वो, ये पता है। ओए मैं मरूंगा। ये कुछ नहीं है। नरूटो हील।
मेरे लौड़े भग जाए ऐसे हील थ्री पे। बहन चोर पागल है क्या? ओए मेरे मुंह पे लगा, बच गया। चलो नरूटो बच गया। नरूटो खुद को अल्ट कर ले। नारुतो ने फिर गलत मारा है, ठीक है? फिर कटिश पे पड़ेगा ये। वो मेरे मेरे को क्यों मार रहा है भोसड़ी वाला? अबे वेस्ट नहीं जानी चाहिए भाई अल्ट। और तूने One enemy remaining. Wait for me. वो इसके बाद लिखूंगा, ठीक है? सरेंडर इज ऑलवेज ऑप्शन। अबे अभी लिखेंगे यार वो 40 अरे लौड़ा 41 HP तो था मैं। इस समझ की कृपा से बहन का लोड़ा 6 HP कर दिया तूने। मैं लिखूंगा, मेरे नरूटो तो भाई तू मरा क्यों? 1 HP बचा हूँ भाई। कोई सुन तो मैं लिखूंगा सारे लिखेंगे रिजल्ट सरेंडर। अरे रुक सुन तो रुक जाना ना, वो मत लिख। अरे एक एक करके नहीं तू लिखेगा, सुन तो ले। तू लिखेगा भाई, कर ले, टाइम वेस्ट मत कर। अरे सब एक ही चीज लिखो, सब एक चीज लिखो। सरेंडर इज ऑलवेज अ ऑप्शन। सरेंडर इज ऑलवेज ऑप्शन। 3 2 1 My intel is their obstacle. उन्हें जोश चढ़ेगा, पता है? चोर चढ़ गया भाई। रखने के बाद में जो फर्स्ट क्लिप देखे आया। अबे नहीं भाई, वो क्राउच कर पिक करता है भाई, बहुत क्रिंज है भाई बंदा वो। जाते हैं मेरे साथ में भी आ रहा हूं तेरे, रुक जाते तो मैं भी मरूंगा देख। Weapon here. फायरिंग स्क्वाड मिलेगी कनिष्क को। वही Reloading. ये तो मर गया। कौन ने कैमरा तोड़ नहीं दिया? है, पे नहीं है। अबे वॉरलॉर्ड गवार है क्या? अरे वो पीछे देख लिया यार। नहीं तो बी साइड क्यों छोड़ दिया? अब तुम्हें अभी दुनिया के कोई आ नहीं बेस्ट रिवील्स एंड बेस्ट फ्लैशेस के साथ में ये राउंड निकाल के दिखाऊंगा मैं। अच्छा अरे फास्ट 88। अच्छा अरे ये क्या पता फेंका नहीं, होगा? कौन मुझे सा? फेंक दिया क्या? कोई एक बी पे। मानस को एक को, वो एक ही है बस पे। शावर कर ये दिया। आ गए, सब भी गए। तेज पीछे से आएगा, ठीक है? पहले बोल। प्लांटिंग Last है। player standing. चल भाई, ये 1v3 तो हारियो मत। तेज सुन, पीछे तेरे स्काई है, ठीक है? ठीक है। क्या बंदा है भाई। वो दिख गया तुझे। फिर भी ऐसी मुंह पे आ गया ना। और वो ए शॉट आएगा एक। क्या है शॉट से? ये इतनी कुत्ती गाना मार ली भाई, तू डिस्कस कर सकता है। भाई ये लेफ्ट में कौन है? ना कौन आएगा ये शॉट? ए शॉट से आके बैठा हुआ था। अबे चुप रहे। आके बैठा हुआ था। क्या कर रहे हो भाई? क्या बंदा है नारुतो, क्या बंदा। ए लौड़े, तुम सबने बोला है भाई वो उधर से आएगा, आके बैठा हुआ था। रेडिएंट हमने ये तो नहीं बोला कि आके बैठा हुआ था। बेटे वारलॉर्ड अनसेंड कर दे शांति से। क्या सेंड कर दिया अबे उसने? मेरा ना पता है FPS, अबे FPS क्या कम किया है? आने लगा है, पता नहीं क्यों आजकल। वो सुन रहे हो? हाँ FPS मतलब बीच में 60-50 ऐसे गिर जाता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? पहले 120 आता था, अब 80-90 कांस्टेंट आता है, उससे ऊपर नहीं जाता। इसको चैलेंज कर रहे हैं बे। अबे मैं नींद के नशे में हूँ, बहन का लोड़ा मुझे मार रहा है। मैं पता नहीं। नींद का नशा भी तू भी होता है। नारुतो। होल्ड करो भाई, ये लोग बहुत स्प्लिट खेलते हैं। रेजर डी पे स्मोक डाल, वॉरलॉर्ड लॉन्ग पे। नहीं ओए स्मोक आया बी पे। तो पूरा सीधे खेल रहे मर हैं। गया बैंड। अबे भाई तुम लोग क्या वॉरलॉर्ड गवार है क्या भाई? नहीं है स्मोक। अरे नहीं है स्मोक तो होल्ड करना साइड पे भाई। तू कंट्रोलर, तेरे को होल्ड डाउन करनी पड़ेगी साइड। ये ब्लेड गवार टीपी। अरे भाई मैं कैसे मैच देखूंगा यार? देख रहा है, देख ये देख 105 रेज। ओह अबे फिंगर हटा। ये क्या? ओरे बाप रे भाई वॉरलॉर्ड भाई। अरे क्यों रिलोड? सरेंडर वाला नहीं लिखना चाहिए था सही में। मतलब ऐसे क्या बोलूं, एक शब्द नहीं है। Last round. यार गाइस, आप लोग मेरे नीचे क्यों हो गाइस? नारुतो कहाँ मर जाता है भाई? Reloading. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? काशी आया है, काशी। सरेंडर इज ऑलवेज ऑप्शन लिखने के बाद में ये चीजें कर रहे हो तुम लोग। नारुतो पनवा ऐसे ही चीज लिख के भाई हम हार गए थे एक जीता हुआ गलती मैच। नारुतो की है, गलती मेरे होते हुए नारुतो की हारेगा है। तो नहीं। गलती किसी कोई की कैसे हुई है? बलात्कारी हो तुम। गलती नारुतो की है।
ऐसा होता है ना, नारुतो की बस की है नहीं, ठीक है, वो लर्किंग करता है, वो सीरियस खेलने लग जाते हैं। जब तक वो गलती नहीं करेंगे ये मार नहीं पाएगा, गेम में मैं नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल दो दो ये लड़की पे चुप निकला हो जाओ, मैं ठीक भी है। कहीं होल्ड होल्ड कर कर, रहा हूँ। होल्ड कर। ज्यादा गहरी नींद में हूँ भाई मैं। साउंड आएगा तो बताना, तो साउंड देखे ही आता गाना है है। क्या? वो बेंचो बहुत गंदी नींद आ रही है, बहुत गंदी। You will not kill my allies. गाइस उसे भी मार दो। फिर उठा दिया, डैम भाई। अरे वॉरलॉर्ड Your नहीं, trail. वॉरलॉर्ड भाई होल्ड। हाँ एक टीपी था देखने के लिए, एक स्पॉन में, एक खुले स्पॉन में। में, खुले में फेक टीपी। हाँ तो इन्फो के लिए एक स्पॉन में। इसके फोन में पूरा को बोल। उनके स्पॉन में ऑफ कोर्स भाई। कुछ नहीं करो यार, कुछ नहीं करो। ये वो Reloading. ए आगे आगे आगे। बी आ गए। आ गए। 30 seconds left. अरे बी पे आ गए भाई। Satchel out. इधर है बी पे। जल्दी डालता है भाई अपना। नाइस। Spike down B. नहीं हट One वहाँ से। enemy इसके अंदर remaining. रिटर्न लास्ट टर्न नहीं, ये नहीं था उनके 10 साथ, दोनों के seconds साथ ही left. था। होगा तो धोखा होगा, नहीं रुक, तो रुक, सेव रुक, कर रहा होगा। ये इधर था, स्पॉन है, उनके स्पॉन है। AFK है क्या शायद? नहीं नहीं, उनके स्पॉन में AFK नहीं है, उधर सेव कर रहा है गांडू का बच्चा। कोई चीज पहले ही चला गया। Switching Yeah. sides. नाइट थोड़ी करेगा, 24 नाइट की थी। मेरे को और ब्लॉक Anyone कर have दिया। any ओमेन कौन है? hints? I may have jammed my fingers. गांडू है, गांडू है, सही बोला। वॉरलॉर्ड वॉरलॉर्ड मेरे को और ब्लॉक कर दिया। वॉरलॉर्ड भाई कुछ कहना चाहोगे? भाई मार दिया था बहुत बंदे को। अच्छा ये बता स्मोक का उनका रेस ब्रोंज 1 तो नहीं है, इतना तो क्लियर ही समझ है। कोई भी नहीं है, फिनिक्स भी नहीं है। Reloading. नारुतो लेकिन कहाँ ये पे गोल्ड गए थे? ब्लैक स्मोक कलर कहाँ की पे? है लेकिन। Chaos. चल यूएस रिवील हो गया। चल कौन है ये चूतिया साउंड देने वाला? अंदर तो मरी गया। अब भी नहीं देगा क्या? तोड़ना, हेल्प कर ये दो। दौड़ निकल। भाई एक तो हीलर है ना, अगली बार से अगर खेलो तो। अबे ओ हमें लगता भूसड़ी के। भाई बैक स्टेप आ भाई गया। से भाई होल्ड मैं तो दूंगा भाई तुमका। ऊपर चढ़ो। मारना अरे इसको। पीछे आ गया भाई। हेवन हाँ हेवन वाले को तो One मैं enemy remaining. बैक स्टेप। बैक से लास्ट शॉट है। बस चिल करो भाई, एक बार तोड़ने अरे दो। क्यों पीक देना है? अरे तू भी लो है मत छोड़। नारुतो ज्यादा दिमाग है भाई में। भाई ठीक है भाई, नींद के नशे में भाई। Last player standing. अरे वाह गंडगो। मर रहे उसको। पूरा पैसा थमा दिया, पूरा पैसा थमा दिया उसको। तो ठीक है ना, चिल भाई। इसी तो अरे गोली किल का दे दिया भाई। स्पाइक से मरते ना, मरने का शौक है तो। We are strong because we are together. सुसाइड Don't forget that. अरे यार। हाँ भाई, अरे ब्लेड तू तो कॉमर्स वाला है, तू क्यों सुसाइडल है? मतलब क्या था ये, इतना डांट के जोक मार दिया। ओ भाई कह रहा था बोलो कॉमर्स में मैथ है बेटे, चुप रहे। कुछ नहीं है कॉमर्स। सुसाइड करेगा। कॉमर्स जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, एकदम नालायक है, सिर्फ उसी को हार्ड लगती है। अबे नारुतो स्पाइक लेके आ, नारुतो स्पाइक लेके आ। मैं तुम्हारे ब्लेड का नौकर नहीं। I have the spike. तू नौकर ही है बेटे। मेरा नौकर है, ब्लेड के पापा का। पेड़ के बेटे का नौकर है, मतलब मेरा भी नौकर है। मतलब मेरे पोते का। मेरे पोते का सही है पॉइंट। अरे प्लांट कहाँ है? अरे ला रहा हूँ भाई, रास्ते में मार भी खा गया मैं, दूसरी कालू से। चुप रहो। One अरे enemy यही बेटा है। remaining. हमने ड्यूलिस्ट थोड़ा स्लो है भाई रास्ते में मारपीट भी तो हो रही थी, एक ककाशी मिल गया था उधर। नकली डुअलिस्ट। ककाशी हमारा यहाँ वाला भाग गया क्या?
ले आ काकाजी गया भाई को पहले, तो आ शर्म गया, है काकाजी नहीं। का नाम लिया, काकाजी का नाम लिया, आ गया पहले तो। ले पहला वैसे ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं है, सिमिलरिटी बहुत बाप है। बेटे ही तो है। तो क्या चल रहा है लोग? कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं, बस तुझे काकाजी का बेटा बोलते थे। अबे रुक जा ड्रोन करने दे बहुत भी आया ये तू करके देख, बोल इसे, तेरे फिर भी बस की नहीं है, बोल। क्या है यार, इतना पिटने के बाद भी रोने, नरूटो ही है बाबे के पूरे। क्लोज राइट है, स्मोक में हो सकता है। अरे इधर बैठा है कोने में शायद, ओए करके बैठा होगा नहीं। अरे यार कितना स्मोक था भाई, अपना ओमिन मार्केट हमें ही स्मोक कर रहा है क्या? हेवन से दिख रहा था क्या? बहन का लोड़ा 80 अरे डैमेज का है। भाई पीछे आ जा। ओ भाई, ओ ब्लेड लौड़े, वो यार 80 डैमेज है। ड्रैग इसमें बैठता, फिर से मेरे को ड्रैग मार, ठीक है? तू भी भाई पे क्या कह रहा है? पीसी रीस्टार्ट मार के आता है, ये बहुत खतरनाक मुझे है। अगर रोल ही दे देता हूँ ना। बहन के लोड़े नारुतो ओनली तुम बांट क्यों रहे हो? इधर है, इधर है, तेरे पीछे। Last player standing. नहीं शॉट चल के रहा लिए है। मिलनी थी मुझे भी, जिससे तू उधर का भाग गया, लेकिन एक मिनट मैं तेरे को बचाने के लिए और तू मेरे को छोड़ के भाग गया। यही तो है वो समर्थ। समर्थ है भाई। Flawless. भाई भाई तू उधर क्यों नहीं रुका हुआ था? मैं तेरे कहते को इसकी बचाने आया के लिए लग गई। अरे मैं उधर से भागा ना, मेरे को वो सेज चढ़ गया था मेरे पर, मैं क्रॉस नहीं कर सकता अरे तो था, मैं सेज तेरे चढ़ लिए गया तो था आया था वहाँ पे फ्लैश करने के लिए। तू बहुत लेट से आया था भाई, सेज पहले ही चढ़ गया था। अरे इन बहन के लोड़ों की माँ का भोसड़ा बोल दो भाई। तुम ही बोल दो ना, तुम्हारी गाँव में नहीं है, तुम ही बोल दो। रुक जाओ, तुम्हें पहले मना मैं करा लाइव था, वाला वो बोलो। कर देता हूँ, कॉपी बोल, पेस्ट बोल, करके रख ठीक है। लेता हूँ। लाइव वाला वो भी डालना है मेरे को, ये वाला। फिर हमने मारना है वो ये सब वाला। मत डाल भाई, ये बाप बच्चे रे तो भाई, बहुत- ये लोग तो रोने पे उतर आए सीरियसली। फूल बनने के लिए ये वाला। तो पिटने वाला है। नारुतो रुक जा। मत जाइयो बेटे, जब मैं बोलता हूँ तो सुनता क्यों नहीं? B. यार तू भाई क्या यार, Down. ऐसे मारना चाहिए ना भाई नारुतो भाई। बॉलर बंदे के मुंह पे टीपी कौन करता है? फिर मैं नरूटो वाला ब्रेन सेंस फिर नारुतो आता है। टीपी मार। Last player standing. पीछे आ गया है, टीपी कहाँ से मारूं? एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? एक स्टोरी अभी जो हुई है। नारुतो भाई वहाँ पे मेरे से 15 सेकंड खड़ा स्काई से लड़ रहा था, ठीक है? स्काई की गोली इसको मरा लग। नहीं और वो इसको मारा नहीं, मैं आया उस फाइट के बीच में मार जो दिया। मार दिया। शांत। तो हाँ, अच्छा हो गया। स्काई 100 है, ठीक है? मैं शांति से। और बाकी 3 150 है। चलो Not ready yet. अरे अरे भाई, अब मैं भाई ये शांति से क्या खेल रहा हूँ, आरएनजी है भाई, ये क्या आरएनजी है भाई? अमन भाई मेरे को भी सिखाओ आरएनजी कैसे करना है। ये भाई अरे अमन भी खेल रहा है क्या हमारे साथ? नहीं खेल रहा। इनका खेल रहा है। अगले मैच तो नौ राउंड फिर थोड़ी से निकलते कस्टम खेलेंगे, नौ बहुत राउंड थोड़ी बंद हो गए। हाँ निकलते ये भी है भाई, 9 राउंड थोड़ी निकलते हैं हम। सॉरी भाई। नहीं भाई सॉरी की क्या जरूरत है? और इसके बाद देख कस्टम खेलेंगे, फिर वो मैच स्टार्ट होगा ना। कस्टम नहीं खेलेंगे भाई, ये कॉपी तो खेलेंगे। निकाल लो, ब्लेड लेके जा। हाँ, तो भाई अच्छा, आ रहा है। देखा तो फेंक दूंगा। अरे कैमरा अंदर रुक जा अभी, रुक Got जा। your trail. नहीं है क्लोज राइट। लैंप देखियो, लैंप्स होगा। ये वॉल होगा। वो डैमेज है, लैंस डैमेज है। मार दिया लैंप्स वाले को। One enemy मुझे कवर remaining. चाहिए बेटा, मुझे कवर चाहिए बेटा। भूसड़ी वालों मैं इस फाइट प्लांट करूं मेरे को। अरे वो प्लांट नारुतो करो, से प्लांट pro करो, है। प्लांट करो। अरे प्लांट करो गणेश। अरे स्पाइक ड्रॉप। अबे भाई प्लांट। भाई ओए गलती से भगवान नहीं था। भगवान कसम। भाई नशे में हूँ मैं, कह रहा हूँ ना। कितनी गालियाँ तू, क्या किया है तूने अभी? बाय दे नारुतो बाय। Reloading. ये तो बाय मांगने में मर जाएगा। मैं भाई के चौदे ऊपर भी आ जा। वो सब ठीक है, लेकिन तूने ये क्या किया अभी? अरे मैं तेरे ऊपर मारने के लिए कर रहा था, मैं भूल ही गया था कि लास्ट राउंड है ही नहीं भाई। ओए मैंने स्टॉप चुपचाप खेलो यार, चुपचाप खेलो, ज्यादा कॉल मत दो, चुपचाप खेलो बस। ड्रोन कर रहा हूँ। बहुत शोर कर रहे हो, बहुत शोर कर रहे हो, चुपचाप खेलो। ड्रोन करने दो। Bomb buddy out.
आराम से पुश करना। ए स्मोक पे नीचे स्मोक में जो जज लेके बैठा है Spike Blind, down. blind. हवे में उड़ा तो था बहुत कुछ चला दिया थोड़ा। कॉल दिया भाई। चोद दिया भाई। One enemy एक शावर remaining. बैक स्टेप है शायद। नाइफ करूंगा अरे लौड़े प्लांट तो कर। नाइस सही हुआ तेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए बहुत। मैं मार दिया कर यार मेरा सैचल थोड़ा सा ना ऊपर हो जा मेरे को नहीं रहा है। आता नरूटो और नरूटो के साथ दोनों की मांगी थी। ए चुप रहे लौड़े, तेरे सैचल देखा है मैंने, ठीक है लोटस पे। मेरी तो कम से कम लगती भी है नीचोर। यार नरूटो भले मेरा एम ना हो लेकिन सैचल तो उससे बेटर है, ये तो मैं मानता भाई तुम सबसे बेटर मैं करता हूँ सैचल। तू तो चुप ही बैठ। भाई वारलॉर्ड से तो बेटर सैचल करता हूँ, वारलॉर्ड से हर चीज में बेटर भाई। भाई इसकी के रेस कंपटीशन करना मेरे साथ। जा बोले अबे मैं ड्रोन आ गया इधर। ड्रोन लेना भूल गया। क्लोज लेफ्ट क्लोज लेफ्ट ही है लवी, कभी बैठा रुक जा अरे बहन शो। भाई इस बार तो स्टैक है, मैं तो बोल रहा हूँ रोटेट करते हैं इस बार वाकई में स्टैक है। अबे पीछे से आ गया, पीछे आ गया न्यूट्रलाइज। अरे मैं कैसे मर गया लेकिन। तो मरेगा ही ना जब सुनता नहीं है तो। वही बैठा छुट्टे वहीं बैठा है। रुक जा मेरे पास शॉट डाट है ना। अभी शॉटगन भागा वो भागना नहीं चाहिए, मार दे। एक शॉटगन है उस पे स्पाइक के। कहाँ था शावर में बताओ। शावर में। रिवील है मेरा, रिवील है मैं बैठ। शावर में नहीं ऊपर तो बैठ। दुल्हन कम इसका एम से दिखा टट्टू हटा। वो कनेक्ट तो आ रहा है। मेन पे नहीं खेलेगा वो अभी चलेगा। रिवील है क्या? रिवील कर दे बस एक मिनट। रिवील नहीं है, यूज कर लिया, बैक साइड डाला था। क्लोज है घुस जाओ। कमर शॉट आया शायद। One enemy remaining. नाइस। बोले भाई स्टार्ट है जी भाई। Match point. ऐसा ना राउंड हार जा पहले जीजी ले। भाई जो ऊपर चल रहा है जरा पूछना उनका अभी तक क्या हुआ भाई, सीरियस नहीं खेल पाएगा अभी भी, कहाँ बदलेगा। कोशिश नहीं कर रहे भाई। कह रहे कोशिश नहीं कर रहे सामने वाले। सामने वाले पे बताया ना, सामने वाले पूरे नारुतो है भाई, इधर पूरी कोशिश करके भी डोंट बी टॉक्सिक लिख रहा है, रोने पे आ गया। I need to blow something up. लो तारे आजा मन भी वाले। आजा बताएगा क्या। हां वनियन बुलाइए रुक जा आराम से। Bomb buddy out. पहले से करवा देगी खत्म। हां उसी दोनों है होल्ड करो। टीपी किया नहीं, फेक टीपी है 90% फेक टीपी है। हुका फ्लैश करो घुस जाओ। शांति भाई, तू मुंह बंद रख भाई, कुछ भी कर रहा हूँ मैं भाई, सोया नहीं हूँ भाई 2 रात से। मजाक है क्या बहनचोद? आप तो 2 रात हो गई सोने से। रीलोडिंग। रेजर क्लोज गया नीचे गया। लो है भाई, रेज लो है। नेवर माइंड, अभी लो है। One enemy remaining. 1 HP 1 HP रेज 1 HP रेज 1 HP। Attackers win. थोड़ा जल्दी चलो भाई चलो। इजी स्पैम भाई कर। मैं तो बोल रहा हूँ नारुतो स्टाइल। अरे उसको वनियन में बुला के नहीं, वो जो बज रहा था वो पूछ। अरे नहीं भाई, ऐसे गवारों पे मुंह लगाना जरूरी नहीं है। अरे मजा क्यों कर रहे हो भाई तुम? कितना मजा आएगा। Why so toxic guys? Why so toxic? कस्टम खेलता है ना, विक्टोरिया ओपी सेंड यू रिक्वेस्ट। मैं भी बैठा इधर। कर रेड कर। मैं मैं भी राउंड जा रहा हूं। अरे कर रेड कर। 2 बच्चे बुला लिए मैंने। अरे तू उसका ऐड कर यार। वॉरलॉर्ड वो कर, टूर्नामेंट मोड कर। अरे भाई रुकते बताओ कौन साइड से मैं कोच बनूंगा भाई, मैं कोच। ऑब्जर्वर में आओ। बच्चों कौन साइड से। अरे लौड़े, तू पहले ऑब्जर्वर में बैठ सारे। ऑब्जर्वर में आओ जल्दी। अबे लौड़े इतना क्यों चिल्ला रहे हो यार? वाटो सा उधर जेसी उधर जा उधर। अरे ये किसको बुला रहा है ये? स्टीजी उधर जा। अबे किधर वो बता। अरे उसका 1v1 है, तुम कहाँ घुस रहे हो? अबे भोसड़ी के 1v1 है ना। जस्ट 1v1 है 1। कौन है ये? ईगल कौन है? ईगल की गाल है। तो 1v1 है भाई, लेट्स गो। भाई
डेथ मैच तो कर दे, डेथ मैच थोड़ी करना है लेकिन डेथ मैच नहीं करना भाई, वो कर स्विफ्ट प्ले लगा दे, स्विफ्ट प्ले लगा दे, स्विफ्ट प्ले। चालू कर ये में गेम बोल रहा है वो, कौन सा भाई मैप लो? कोच क्यों बन रहा होगा लेकिन ये बोल लो। डीएम कौन डीएम है डीएम एनिमी? अरे डीएम ही लगाना है, कर नारुतो ज्वाइन कर, नारुतो ज्वाइन कर। स्टार्ट कर वे वॉरलॉर्ड स्टार्ट कर। अबे रुक जा अरे ले ये क्या हुआ? एक सेकंड, ये क्या हुआ? क्या भसड़ चल वो रही है भाई? कोच क्या है ना, तुम- कोच अरे कोच वो है, रहने देना, कोच कुछ नहीं कर पाते, वो खेल नहीं पाते कोच। नहीं बस बस सही है ना। हाँ बस वो देख सकते हैं, और मतलब उसकी आवाज उसको आएगी, कोच की आवाज, पार्टी वाला कोच। Death match. अबे टूर्नामेंट मोड में ऊपर से नहीं देख सकते क्या? नहीं, टूर्नामेंट मोड में Only share ऊपर का? से, ऊपर से नहीं देख। वो देखो हम लोग ये क्या गणेश अब मत आइए, अब मत आइए, अब हो जाएगा अब। कनेक्ट देखो, ट्री साइड है, ठीक है, ट्री अबे साइड। अबे कुछ हार भी गए तो क्या ही फर्क पड़ना है अरे क्यों भाई, तू जीतना है। भाई, सबसे पहले आ गई भाई, चुप हो जाओ भाई। नाइस। अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भाई मेरे को भी तुम लोग में से केओ कौन था? केओ कौन था? यही था। यही था। हम नारुतो की तरफ बाहर आएंगे। तू सोच अब देख चुप हो जाओ भाई, खेलने दो भाई को। मिड पे जस्ट राइट। अरे क्या चढ़ रहा है। अरे मत बताना। स्पैम ही करना चालू कर दे भाई। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन तू रो क्यों रहा है? अरे मत कर, अब तमीज से खेल रहा है। मेरे साथ नहीं करना, ठीक है? मैं घंटा खेलूंगा। शिफ्ट वॉक। शिफ्ट वॉक। क्या होता है? अब क्या बोलना चाहेंगे भाई? अरे मत कर कमल, चुप रह चुप रह। चुप रह। समझ चुप। अब थोड़ी बज रहा है, अब क्यों बज रहा है? ये तो मूवमेंट का भाई, ये क्या सीरियस हो गया भाई, अब कहीं क्या मार रहे हैं। तो राइट से आ रहा देख। हाँ राइट। मत बताना क्या जा रहा है, पता चल जाता है। एलन चुप कर तू। मैं तो चुपी हूँ, दौड़े। अरे सीट शॉट। 10 रुपए की वेबसी। ये तो बहुत ये भाई, ये नहीं सुधरेगा। के बाद भाई ने भी डिस्कॉर्ड बुला लेंगे, इनसे कुछ नहीं करना। अरे बीजू। ओ भाई बस अल्लाह की चल रहा है। पीछे। ये मादर चोद। लॉल भाई। और इनकी बात करे पागल होते। ओ भाई बस करो। हो गया भाई मेरा बस। नरूटो चुप कर जा, नरूटो चुप। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ भाई कुछ। वो देखिए से दिख रहा भाई, नाच रहा है वो। भाई कैसे नाच रहा था देखा जबरदस्त। पीछे आया, पीछे। अरे पता है भाई, आवाज आ रही है मेरे को। थोड़े क्रॉसेस चेंज करते हैं रुक। अब ये तो गायब ही हो गया। अबे जितने भी बंदे बुला रहा कर दे है मीट राइडर है भाई। ओ भाई चलो मिलते हैं कभी किसी कोने में भाई, बाय बाय। किसने बुला लिया भाई? ओ भाई ये क्या मार दिया भाई? ये क्या मार रहा है भाई? हैक ऑन। अभी तो वैंडल ही नहीं है। वैंडल निकाल ले ब्रो।
भाई नारुतो हटा ना सेटिंग हटा, मेरे को दिख नहीं रहा। सेकंड स्क्रीनशॉट देख रहा है क्या तू मेरा? रुक जा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नाइस। Damn, nice ये shot. तो बहुत तगड़ा था भाई। करने पे मेरे वाले शॉट मारा करो भाई। गंदा। ओ भाई। ओके। वन वाली मारियो। राइट से कनेक्ट राइट। बैंडल पे। अरे शांत हो जा। वैसे तो उसको भी बता ही रहे होंगे बताने को, तो वो डिस्कॉर्ड पे बैठा है तो। बोलना। ये देख देख रहा था। कहीं तो फिर भी लेकिन फेल ही रहा है। स्किल इशू है भाई का। सामने क्या आ रहा है? अरे भाई भाई बस क्या हो रहा है? ओ भाई इसका लैग हो गया क्या? हेलो क्या देख रहा मैंने? भाई तुम तो बड़े तगड़े प्लेयर हो यार। बाबा जा भी रही होगी हमारी जो खेलना है। एक सेकंड। कसम से ये देख के तो मेरा दिल दुख गया भाई। डबल लेको कहाँ से आ रही है? ब्लेड रुक जा। कमेंट किया उसने। भाई कोई दूसरा रेडिएंट है तो मेरे साथ भी 1v1 प्लीज। तू तो चुप ही बैठ जा। चुप हो जा नारुतो, इसमें ये क्या करवा दे। वहीं सारे कनेक्ट। अबे तो उसको भी बताया यहाँ पे। तू अमन चुप बैठ। तू चुप है। वो ऐसा तो नहीं कर रहा होगा इसका दोस्त ऑब्जर्वर का स्क्रीन शेयर देख के। पढ़ने देना कौन सा कुछ हो रहा है। फाइट। हेड ग्लिच भी अब्यूज कर रहा है। अब उसको पता है मैं यहाँ से आ रहा हूँ ऐसे तो। यार हैंग हो रहा है लग रहा एकदम हूँ यार मैं अभी। भाई कर्ज वैंडल है भाई। अबे एक तो हाँ स्किन भी नहीं है साली। काटा मार दिया भाई तक। सारा तेरे कैसे नाच रहा नशा नशा के मार रहा है भाई। डिस्कनेक्ट भाई के बंदे तो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट मार रहे हैं भाई। उन्हें समझ आ गया हो गया उनका काम। जी है जी जी नहीं। अरे डिफॉल्ट क्रॉस है। एक को ना जस्ट डिफॉल्ट क्रॉसर। अरे भाई फाइटों के बीच में क्रॉसर बदल के फेल रहा है भाई। अलग ही बंदा है। नेक्स्ट अलग ही लेवल है भाई डिसरिस्पेक्ट का। सामने वाली हमारी आवाज नहीं सुन पा रही क्या? हेलो भाई ये जस्ट बोमिन कौन है भाई? इतना मीट राइड क्यों कर रहा है तू इसको? इधर राइट में। पॉपन स्विंग नहीं चलता ठीक इधर। बाप रे भाई भाई ये आयो भाई प्योर सिल्वर भाई। भाई जस्ट मोमेंट कौन है भाई? छोटे बच्चे को बुरा लगा। भाई माइक खोल के बजना तेरे बच्चे तो। प्योर सिल्वर भाई प्योर सिल्वर। तेरी मम्मी ने मना किया क्या? मम्मी ने स्ट्रेंजर से बात करने मना किया क्या? 10 साल के बच्चे। अरे शांति खेलने दे उनको आपस लीव मार दे बच कैसा रहा है तू? है भाई। लीव मार दे भाई फुकड़ का। जिनका मैच चल रहा है उनका मैच खेलने दे। ये जस्ट बोमिन भाई। मम्मी ने मना किया क्या स्ट्रेंजर से बात करने? मोमिन भाई अभी आपकी राय मायने नहीं रखती। 30 seconds 8 बजने वाले बेड टाइम हो गया तेरा। तेरा बेड टाइम हो गया भाई। सोने जा तेरी मम्मी बुला रही है। सो जा बेटा सो जा। लोरी सुन ले। शांत हो जा ना। एक सेकंड शांत हो 10 जा। seconds left. शांत हो जा। उसको बजने देना। चैट पे लिख रहा लिखने दे। सिल्वर वाली पहचान दे रहा है वो। रहने दे यार।
भाई देखो उसका स्टार्ट किया, ठीक है, हमने कुछ नहीं अरे बोला। चिल कर भाई, चालू हुआ तो चालू हो गया ना भाई। नरूटो भाई मैच्योर बन रहे हो, थोड़े दिन पहले तो रहने दो ना, बच्चे को बच्चे को गाली दे के क्या फायदा है भाई, एशिया में आने में। के सामने में चोर बन रहा है। एशिया टॉप कर ले। अभी मैं बनूंगा, मैच्योर में बनूंगा। ओके नरूटो भाई क्या मतलब लड़की के सामने फ्लेक्स करने के लिए मैच्योरिटी दिखा रहे हो जबकि हो नहीं। तो हैगी भाई, निकलो निकलो बाहर निकलो। 1v1 हो गया क्या भाई? ठीक है ना, हमारे 5v5 करना है क्या वापस प्रैक्टिस? करो उसमें क्या। हाँ तो बस मैच्योरली कर लो, क्या गाली वाली तो क्या ही करनी है, आ जाओ। और मैंने किधर किया भाई। मैंने भी नहीं की ना भाई। अरे छोड़ो यार। अबे वुमेन को भी आओ 5v5 डीएम को निकाल लो। ओए वॉरलॉर्ड, ये जस्ट वुमेन करके क्या? निकाल दो। जस्ट वुमेन जो है उसको फेंक दे। अरे मेरे को किसने निकाला भाई पार्टी से? बैठ जा। क्या कैफे में ही पड़े हो क्या? कौन भाई, सब घर पे है। अब डिस्कॉर्ड पे ओके, मेरे को लगा कैफे में पड़े। नहीं सब घर पे अपने, सब दूर दूर से। बंद भी रह गया। तो ऑफलाइन चला गया भाई। अबे ये वुमेन को किक करना जैसे। अरे जिसको आने उसका हो ना, क्या है। अबे वॉरलॉर्ड इसको किक कर दे जस्ट वुमेन को। अबे रहने दे। अबे किक कर दे उसको, बाकी कोई आ जाएगा। कौन कहाँ पे क्या किधर जाना है मेरे को? मैं किस जगह सही हूँ क्या? क्या हो रखा है समझ नहीं आ रही। कहाँ गए तुम्हारे बंदे? एक बंदा कोई ज्वाइन कर लेगा ना उधर, रुक जा। अरे कौन एक्स्ट्रा हो गए भाई? पहले तो जो पहले टीम थी वही करो पहले तो बात तो। रुक जा। कैसे थोड़ी, क्या टीम डीएम है। ऑटोपिक लगा रहे ना। डीएम नहीं हो, वो कर लो, स्विफ्ट प्ले लगा लो, लंबा अरे 100। स्टैंडर्ड लगाना ब्रो, 5v5 करना है, मैच करना है। डीएम कर दो। लगा दिया। टाइम ने डीएम कर दो। तू जा भोसड़ी उसकी टीम में, मुझे क्यों भेज रहा है? डीएम में क्या फायदा? एक मिनट, 5v5 नहीं करना। क्या 1 मिनट क्या? अरे 5v5 नहीं, अपना डीएम ही करो। डीएम ठीक है करो, डीएम करो। क्या डीएम 5 मिनट कर। अबे वही खेलते हैं ना अपना जो पहले खेल रहे थे, इसको भाई 5v5 को मेरे साथ के लिए मैं तेरे को लोकेशन दूंगा। ओमू तू है ही। अच्छा कितने साल से पढ़े हो वैलो पे? एपिसोड इधर से सब खेल रहा हूँ। 20 के ऊपर क्या भाई, 28 22 24। अबे चूत एज नहीं पूछ रहा है वैलो भी पूछता गांड। क्या पूछ रहा है? क्या बंदा पेलन भाई, तुम तो भाई अलग लेवल का कमा रहे हो। 20 साल से वैलो खेल रहा है। रिलीज से पहले से खेल रहा है भाई, डेवलप करके। भाई 20 साल से वैलो। हाँ भाई 20 साल से खेल रहा हूँ। निश में मारना पड़ेगा क्या? भाई कैंप थोड़ी ना करते हैं। ये कैंप कहाँ से हुआ? मैंने आवाज सुनी, मैं एंगल लोड किया। कैंप और एंगल लोड ये है ही कैंप। अरे वो है क्या? ओए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नारुतो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। कुछ नहीं भाई, मैं अभी समझ को कुछ क्या ही बोलूं। फैंसी चूत गई है भाई। ओ अरे यार ये कौन है? इतना थोड़ी हो रहा है समर्थ, इतना थोड़ी हो रहा है। Oh my God. New tactics, keep it भाई fresh. मेरा FPS इतना कम क्यों आ रहा है? चलो डीएम कहाँ से आ रहा है? स्टीजी, अच्छा स्टीजी तो कनिष्क का क्या? यहाँ पे कोई भी नहीं। प्रकाशी का स्प्रे कैसा लगता? प्रकाशी का स्प्रे लगता है, इसको बताओ। काकाशी भाई एंगल होल्ड करके मत बैठा रहे यार। बहुत हवा है भाई। अपने आप दिखेगा। देख कनेक्ट तो ठीक है, रोता नहीं है, सीधा मार देता है। तेरे बस किया तो तू भी मार, रोता क्यों रहता है? तो रोएगा ही वो, तो रोना ही पड़ेगा। अरे भाई ओए, ज़्यादा नहीं हो रहा।
भाई इसकी माँ का ओए ओडिन कौन है भाई ओडिन? ये ओडिन वाला कौन है? अरे भाई ये मिड से आ गया। पीछे कौन है? तेरे पीछे Embarrassing. अबे वो क्या मार रहा है? कनीज गलती मार रहा है भाई। कनेज में पागल हो गए। भाई चारों तरफ से मार दो Sorry, यार। bro. कैंडल लगाने ये ककाशी ये सब हरकतें मेरे साथ मत कर भाई। उसको कुछ मत अबे ये बोलना। तू है क्या? मेरे को पता तू है। भाई को गन चलाना नहीं आता, नाइफ करेंगे। अच्छा बेटे आप तो इसी काम में हो, अब मिलने देने को। ओडिन उठा के मत आ जाइयो, गन बोला है। नहीं तो उठाएगा। भाई कैसी है वो? अरे ब्लेड भाई नॉट तुझके फेयर नियॉन शॉट भाई उसके ही ना पे। अरे बच गया भाई, पता है दोनों जगह से मार लो। अरे तुम पार्टी में क्यों बोल रहे हो? तुम पार्टी मत खोलो। ऐसे को नहीं मैं तो डिस्कॉर्ड पे कर बोल रहा रहा हूँ। पार्टी उसमें में भी क्यों ऑपिंग बोल कर रहे हो? रहा। अरे भाई उधर ही spawn होता है। गाड़ी में कौन है दूसरा? अब ठीक है। समर चलेगा डीएम के अंदर। ये वो देखो तो कहीं काशी नहीं का चलता। गन तो कौन भाई से से मिल- चलती नहीं। एक ककाशी चलेगा वो भी। तू रो क्यों रहा है लेकिन नरूटो? भाई डीएम वाला हूँ, चल मैं मान भी लिया, लेकिन तू क्यों रो रहा है? तू रो क्यों रहा है? चलो मान लिया, यही तो मान मारो। क्या रोंदू आदमी है नरूटो। अब ओके भाई। भाई कैंपर ककाशी। काशी है भाई काशी है। उसको गाली दो, उसको गाली दो। उसको गाली दे सकते हो, हमारे सबके तरफ से। फुल परमिशन है। हाँ हाँ अरे लौड़े। भर भर के भर मैं उधर से बैठे आगे को मार के निकला और युद्ध में वहां से निकला। कगासी की पहचान ही कैंप पे। ग्रीनशूट गेम का आवाज नहीं आ रहा किस तरह। अरे कनिष भाई सॉरी भाई, मार दिया लेकिन इतना बुरा revenge। हाँ वॉलरोड कैंप कर ले। इधर ही स्पॉन हुआ मैं कैंप क्या एग्जैक्टली। अरे इसको कौन है गवार? पेलन भाई। इतना थोड़ी हो रहा है काशी, इतना थोड़ी। ओ भाई पीछे से मार रहा वॉलरोड तो जिगल जिगल दे रहा है। अरे कनिष जाके मार गया यार। अरे जगह से गोली पड़ रही। भाई क्या शॉट। भाई देख कभी तेरे भाई ईगल कौन है भाई? बड़ा स्प्रे करती है। पेलन। पेलन भाई। अरे ये क्या भाई? Brimstone's out. जल्दी आओ भाई। इस चला जाएगा। अबे 5 kills remaining. बस कनिष भाई बस। You're out. बाप रे मार दे। भाई पीछे से क्यों मार रहे हो? फुट्स दो तो ना। क्या आगे आगे मारो, घूम के आगे। 1 kill remaining. बढ़िया बुरा लगे है। कौन हुआ तो पीछे ही मारूंगा ना, आगे घूम के आऊं क्या? लेडी ब्रिलियंट नहीं, मैं नहीं मानता मैं। पीछे से मारने में मजा आ गया। अजीब है भाई। समर्थ भाई पीछे से मारने में जाता है। बात तो सही है, बात तो सही है। उसके पीछे से मारी होगी ना घर पे। लेकिन तू रो क्यों रहा है? भाई कैसे भाई ये क्या डेथ मैच के खिला दिया यार? कॉम्पी खेलने वाले थे ना हम तो। अरे वैसे भी मैं जाने वाला था। क्यों? मैं नहीं खेलता गेम अभी। गलत बात है भाई ये। वही सोच रहा था मैं। तो बस भाई वो भाई ये पर यार अभी मैं engineering अपना कर रहा हूँ ना। डोपामिन हिट का एक सोर्स ढूंढ रहा था अभी एक 5v5 के बाद, लेकिन वो भाई तुमने कुछ दिल तोड़ दिया भाई। इंजीनियरिंग कर ले भाई, इंजीनियरिंग कर ले। जरूरत ही नहीं है भाई। तेरी डोपामिन ऐसे बाहर आ जाएगा सब। उससे अच्छा शादी ना करवा दो लौंडे की। इस आवाज में इतना दर्द क्यों है शौर्य भाई?
मेरा अकाउंट नहीं है। वो तो पता ही था। दर्द क्या है क्या मतलब? अकाउंट अरे में भाई? अकाउंट का सीन नहीं। अरे सेकंड ईयर हूँ इंजीनियरिंग में। अच्छा, कौन सा कॉलेज? आपला हाँ, बोल ना, MIT-WPU। कुठला भावा कुठला? मणिपाल MIT-WPU। सांगितलं भावा मी तुला. मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ना। ओके ओके नहीं को थ्रू ट्रे। 20 मिनट में मैच चालू हो रहा है ना। किसका है? PRX है कि सेंटिनल है? अरे अब तो हम दोस्त बन गए भाई। एक ही सेकंड। PRX का है क्या? मैं तुम भी डिस्कॉर्ड वगैरह नहीं है क्या? लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं तेरे को कॉल कर दूंगी, ठीक है? मैं भाई हाँ मेरे को कॉल कर दियो, कोई दिक्कत नहीं। सट्टा लगाने का टाइम हो गया। साले चलो अभी सट्टे लगाने का टाइम हो गया। मैच चलो सत्ता लगा। बढ़िया लगा खेल के। वेल प्लेड यार। बाकी पूछना डिस्कॉर्ड है दोस्तों। जी जी गाइस। जी गाइस, जी वेल प्लेड। मजा आया। वेरी बैड। अरे डिस्कॉर्ड का लिंक ऐसे कौन डालता है? वाह भाई वाह। अबे तुम लोग खेलोगे नहीं क्या अभी? देखते हैं, एक कॉम कर सकता देखता मणिपाल हूँ। में कौन था? अरे भाई कस्टम खेल लेते ना मणिपाल में ठीक है। बस हो गया मैं भाई। पूछ रहा मैच था स्टार्ट होने वाला है साले। कितना MIT मिलेगा? हो गया। एक अपना MIT पुणे का MIT है। तुम मराठी है इसका? नहीं मैं हाँ तो नरूटो का किस पे लगा रहे थे? अरे कोथरूड। नरूटो का किस पे लगा रहे थे? क्या किसका है अभी? मैच किसका है ये बताओ। देखा? मैच किसका है? अरे बता, इसको बता दो भाई। अभी मैच तो उसका किसका है ना, पहले 10th का है अभी। अरे पागल है? सेंटिनल और जेंजी का है क्या अभी? और जेनजी का होगा। हाँ भाई अभी पहले ठीक वही है। था रे। चलो मैं जेंजी पे पैसे लगा रहा हूँ, जेंजी पे पैसे लगा रहा हूँ। मतलब किसका है? किसका है? सेंटिनल और जेंजी अबे जेनजी और PRX है। वही तो गवार पता नहीं क्या अबे लगा रहे हैं। उल्टा सीधा ये लोग बोल ही रहे हैं, जेंजी और सेंटिनल अभी बोल सेंटिनल रहे और हैं। लाउड है भाई। सेंटिनल और अच्छा लाउड। तो जेंजी और PRX है ना, तो फिर जेंजी पे लगा रहा हूँ मैं, PRX पे नहीं लगा रहा। बस PRX पे लगा दो, सब PRX पे लगा दो। PRX जीत गया। जेनजी वाली कौन सी टीम थी? वो छोटे छोटे टावर। अरे नहीं बे, जो ईगो के साथ मार रहे थे, बहुत ईगो, जो एक भी मैच नहीं हारी अब तक, एक भी मैच नहीं हारी वो। 37 मैचेस नहीं हारी है। 37 मैचेस नहीं हारी है अभी तक, अरे एक अभी भी। 20 मिनट है ना, 20 मिनट है ना, कस्टम अब तो खेलते हैं। आ जाओ। वही तो, अबे कस्टम नहीं खेलते भाई, वो खेलते हैं क्या कहते हैं। 2v2 अरे वो कर लो ना, 2v4 इतने बंदे अमोंग अस खेल लेते हैं। एक मैच अमोंग अस खेल लेते हैं। नहीं ओए 2v4 खेलते भाई नहीं खेलना मेरे को, बैलो बंद कर चुका हूँ। ठीक रहोगे? मेरी बात सुनोगे? मैं कह रहा हूँ पहला मैच है जेंजी और पेपर एक्स, जिसमें सबको पता नहीं क्यों लग रहा है जेंजी जीतेगी, क्योंकि आज स्टोरी है लेकिन नरूटो पेपर एक्स से लगा। नरूटो के नहीं लगा है। भाई मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं किसी पे नहीं लगा रहा मेरा। मैं फायदा क्या है? इसको बैन मारो भाई। फायदा क्या है? अब तो पहले सुन, पहले जेंजी पे लगा रहा ना मैं, जेंजी पे लगा रहा। तू लगा क्यों लगा रहा है जेंजी पे भाई? क्यों लगा रहा है? पेपर एक्स पे लगा। क्योंकि जेंजी जीतेगी भाई आज। नहीं तू पेपर एक्स पे 1 रुपया लगा। पहला मार देगा हमारी। हमारे जेनजी जीतेगी, नरूटो ने बोला, मतलब सब PRX वो सुन, किसी और को डालना तो अभी डलवा लो भाई, क्योंकि मैं रुक जा, ब्लेड 50 डाल दे। अबे ओए 50 100 नहीं डाल पाऊंगा, पागल है कितना डालेगा फिर? भाई मिनिमम 500 है। रुक जा लौड़े, सेंटिनल क्या है? इतना गांड मत मार भाई। झूठ नहीं बोलता। मतलब मैं चाह के भी ऐड नहीं कर सकता, ये मान ले, ऐसा सीन है। क्या मून को बुलाओ ना भाई, मून को बुलाओ। वो बोल रही तो इधर है, इधर रिकॉल कर देगी बोल रहा। अरे ये वाला साइन बताओ पहले। ये जो रेड वाला साइन है सेंटिनल का है ना? रेड वाला हाँ बाइक जैसा बना हुआ है जो। ओए खुदा तू बैटिंग अभी जल्दी है। पहला मैच तो उसी का ही है। एक ना डिस्कॉर्ड 20 मिनट है ना चालू होने में, 20 मिनट है। अरे जल्दी आए, जल्दी आए। हाँ 20 मिनट है। जल्दी आए एक कॉम पे खेल आते हैं फिर। सब बंद कर दिया रे। मैंने बंद कर दिया वैलोरेंट, कॉम्पी खेलना है। चल मैं तो वो ईगल को ऐड कर लिया मैंने, तो मैं जा रहा हूँ खेलने। ए लौड़े आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ बेशरम मैं भी आ रहा हूँ। दुश्मन को साथ दुश्मन की दोस्त ने दोस्ती छोड़ दी, मतलब दुश्मन की गर्लफ्रेंड। मेरे पे भरोसा कर, यू डू नॉट वांना बी। बहुत छबरी टाइप की लड़की भाई अभी भाई पता है सुन, अभी इसका ब्रेकअप हुआ है, अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, भरोसा मत कर। भाई देखो पूरे टाइम अगर सिंपली करने का मैंने गेम बंद कर दिया मैं है। नहीं सही बता रहा हूँ मैंने गेम बंद कर दी है। वो तो पता चल ही गया। लौड़े गेम खुलवाया क्यों फिर वापस से गेम बंद कर दिया? तो अब लड़की का अबे नाम चुप रहे ठगी। आ जाती है और गेम लटका के तो क्या करें? लड़की के चक्कर में थोड़ी आया, मैं तेरे साथ खेलने आया हूँ। क्या बात है? नरूटो शर्म नहीं है बोलते हुए। झूठ। चुप रहे भाई, मैं चल हो गया। मैं क्या बात स्ट्रीम कर रहा कर दे रहा हूँ। अभी नहीं हुआ, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी।
रुक जाओ भाई। और मेरी बात सुनो भाई, बेसमेंट बाद में चालू होगा। जेनजी VCT वर्सेस PRX पहला किक मैच ऑफ है। विनर। देख भाई नारुतो मैं कह रहा हूँ तू पेपर एक्स लगा दे, खाली पीसी हमारे पैसे बच जाएंगे। ऊपर है बेटी चूत। यार मैं ये वाला मैच तो यार बताऊंगा ही नहीं मैं ना किस पे टीवी पे लगने देखना वाला है चाहता मेरा। हूँ ये वाला मैच यार, टीवी पे देखना चाहता हूँ मैं मैच। किस पे लगाने वाला, ये बताने वाला नहीं हूँ मैच तो। मैंने तो डीएम कर दियो मैं भाई। बोलते ही जिंक्स हो जाती है भाई, बोलते ही जिंक्स हो स्ट्रीम जाती है। नहीं हुई क्या बे? पम्स भाई तेरी अरे मैं कर रखा हूँ ना स्क्रीन शेयर होने भाई, वाला है। स्क्रीन शेयर मैंने कर रखा है भाई, उससे देखो चुपचाप। अच्छा नहीं, चलो तुमसे देखेंगे ना तो कर दे तुम्हारी स्ट्रीम, तुम भी नहीं भाई कर ऐसा दो। कुछ नहीं है भाई। ओके भाई पेपर पेपर देखो, सुनो 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 सुनो, पहला पहला ना जेनजी जीतने वाली है, ठीक है। इसकी माँ PRX पे लगा दो, PRX पे लगा दो। बस जेनजी ये नहीं सुधरेगा। जेनजी हार जाएगी भाई, पैसे मत लगा, बोल दे अलग बात है। नारुतो बहुत पैसे मत जेनजी लगा। हारेगा वो वैसे आज ही जेनजी खेलती है, वो हारेगा। स्टार्टिंग में नहीं खेलती अच्छा, उसके बाद पछाड़ती है। अरे आज का मैच मैं अभी के अभी adapt करती क्लिप है, कर लो। आज PRX पता है कौन जीतने वाला है आज का मैच? मैं बताऊँ कौन जीतने वाला है जेनजी आज का उनका मैच? प्ले स्टाइल ही अडेप्टिंग स्टाइल है, वो खेलते हाँ ही वैसे है। मैं बताता हूँ आज का मैच जिसपे आज का नारुतो मैच पैसे नहीं जीतने वाली लगाएगा। है, आज का मैच जीतने वाली है PRX। हाँ एग्जैक्टली PRX जीतेगा। PRX लेट्स गो। ओए ब्लेड मेरे को भी ब्लेड अरे क्या कितना मिनिमम कितना? 500 है भाई। ए लौड़े ऐसा मत कर बकचोदी। मेरी कसम से साइड में पैर से ओए जल्दी आ 500 जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ क्रिप्टो में डाल दो हम लोग। जल्दी आए ना डिस्कॉर्डে अबे वो জলদি क्रिप्टो আয় में আজকে অনেক অনেক অনেকগুলো আছে মানে আজকে 10 গুণও হবে আয় জলদি আয় আরে মা কালী আমি যেখানে লাগাবো সেখানে লাগাসি না না ভাই সোজা এ লেওড়া আয় না ভাই आज লস হলে আর আসিস না ভাই आज লস হলে আর আসিস না চল আয় জলদি আয় अमित हमारे को बालू बाशी। আরে आज পুরো লসটা রিকভার হয়ে যাবে ভাই জলদি আয় हाँ জলদি আয় জলদি জলদি আমি কাছে আসাই। ঠিক আছে জলদি আয় क्या कह रहा है? अरे अरे 500 कर दे, मैं कह रहा हूँ या मैं तो कहता साई को 500 मिनिमम लगाता है भाई। अरे पता है यूट्यूब पे ना वो डिले। अरे तू देख ना डिस्कॉर्ड है ना आगे। यार तू माइक बंद करके बात क्या कर रहा है यार? 4 लोगों को समझ में नहीं आया बात। जल्दी डिस्कॉर्ड कॉल पे बात कर रहा है, डिस्कॉर्ड का माइक जल्दी ऑन यार। है। ये नारुतो देख रहा है, मोटा पैसा। माली खड़ा हुआ। 5 पेटी वो बंद लगाइए, रख। 5 पेटी लगाना, 5 पेटी, 5 पेटी लगा, 5 पेटी खरीद के दिखा। 5 पेटी, 5 पेटी तो ऐसे बोल रहा है 5 जैसे पेटी तू चुप करेगा तो हाँ सर कर दिया इसको सर 1 मिनट जब तक कॉल पे कर लेगा खुद को आके अनम्यूट जब मैं कह रहा देखो यूट्यूब पे ना जब भी चलाओगे तो 2x पे शुरू में चला देना, बाद में थोड़ा सा 2x पे वो डिले दिखाती है। गवार के पहले तो मुंह बंद रख 2 मिनट। भाई स्टेक से देखना, स्टेक पे एग्जैक्ट दिखाता है अरे गवार। उस पे पास दिखाता है, स्टेक पे जल्दी जल्दी दिखाता है एग्जैक्ट। पागल अरे तो वो नहीं कह रहा हूँ, मैच देखने के लिए डिले कैसे वो करे बोल रहा हूँ। गवार सुन तो ले मेरे नालायक औलाद। देखो शुरू में 2x पे चला देना, उसके बाद प्लेबैक स्पीड अभी नॉर्मल है। क्या किस पे ज्यादा बेट है? खुद ही इस पे normal हो पेपर जाती है पहले वो मैच जब पे catch up पेपर एक्स पे करता है। ज्यादा बेटर है जल्दी भाई। भाई अरे जल्दी पेपर एक सारे की इसलिए जल्दी गवार झाटू। अरे जल्दी जेनजी फर्स्ट मैच जल्दी ना भाई आज के वो क्यों लॉस उनका खाবে ना भाई स्ट्रेटेजी आज के होता है, অনেক वो पब्लिक আছে फड़कने के लिए जल्दी नहीं खेलती। एडेप्टिंग स्टाइल है उनका, मेरे को पता है, मैंने उनके सारे मैचेस देखे हैं। पैसिफिक से लेकर अभी तक मैंने सारे मैचेस देखे हैं उनके। पहला मैच हारती है क्या जंजी हमेशा? एक भी नहीं नहीं हारे। जेनजी मोस्ट लाइकली जीतने वाली है ये मैच, वही पूरा बोल रही मैच हूँ, पूरा मैच। मजाक नहीं होता ना यार, 37 मैचेस ना हारना, वो भी इंटरनेशनल स्टेज पे। नहीं नारुतो है भाई, बंगाली की उन्हें पता नहीं ना बंगाली क्या क्या कर सकता है। अरे नहीं तो बहनचो तुम्हारी जंजी की माँ छिप जाए, रुक जाओ। तुम समझ नहीं रहे ना, बात यहाँ उसकी नहीं है ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। किस्मत की बात है। पैसों की है, बात पैसों की है, बात नारुतो के पैसों की है। नारुतो के पैसों की है। भाई वो कभी अच्छा नहीं गया। जिधर पैसे डालता हूँ उधर से कभी वापस ही नहीं आता। जहाँ नारुतो पैसे लगा रहा है वो टीम हारने वाली है। लगाना ही नहीं होता मतलब। सुन ब्लेड हाँ भाई, अरे PRX जीत गई आज का मैच पूरा, लो खबर बता दी। 100 का तो लग जाएगा ना मिनिमम। नहीं मैं हाँ बोलना नहीं पहले वो देख ले कितना नहीं। हार रहा है। रुक जा, मैप के हिसाब से करियो, मैप के हिसाब से करियो, मैप डिसाइड
नरूटो भाई नहीं होता। मैं बता दूंगी मैं मैप डिसाइड रुक जा, मैप डिसाइड हो रहा, रुक जा। वीडियो हो रहा है क्या? मैंने लगा दिया भाई। अगर आइस बॉक्स आया तो फर्स्ट मैच हारेगी देगा। Masters Madrid, this guy has showed up and looked incredible. He's और playing अगर the लोटस he's रेड playing या seemingly ब्रीज every आया तो role जल्दी possible. The guy playing छोटा the भूख most जा रहा agents सुन in ना, this tournament right now. And he जेटी looks में like লাগাবি he's সেটা a ব্লেড কে পার্সোনাল ডিএম করে লিখে দিবি, মুখে বলবি না, ঠিক আছে? জিংস হয়ে যাবে, মানে শুনে নিলে না। ধরে রাখ তুই লোককে বলবি যে আমি অনুমুক টিমে লাগিয়েছি, ধরে রাখ তুই যদি পিআরএক্স এ লাগাস বলবি সবাইকে আমি জেনজিতে লাগিয়েছি, ঠিক আছে? ওরকম করবি, তাহলে কি বল না, লোকেদের হাই লাগে না, লোকের জিংস হতে দেয় না, মানে জিংস হলে আমাদের ওটা লস খেয়ে যাচ্ছি, এটা আমি বলছি। একটা জ্যোতিষী দেখালাম, সে বললো। তো তুমি যদি আজকে ইনভেস্টমেন্ট করো আমি গ্যারান্টি নিচ্ছি তোমার প্রফিট হবে। না না, এটাতে তুমি একটা কাজ করো, আঙুলগুলো ধরো, মাঝখানে নুনুটাকে রেখে, ব্যাস। যে কোনো আজকে শোনো, জেনজি একটা এমন টিম আছে যে 37টা ম্যাচ মানে 37 ম্যাচেস এখনো একটাও হারেনি, ঠিক আছে? একটা ওই টিম প্লাস সামনে পেপার এক্স, সেদিন যে পেপার এক্স জিতলো যে টিমটা, ওই একটা টিম, ঠিক আছে? সেমিফাইনাল চলছে। এবার এই দুটোর মধ্যে তোর যেখানে ইচ্ছা করছে এরকম করতে পারিস, তুই 400 ডেলে দে জেনজিতে আর 100 ডেলে দে পেপার এক্সে, কিংবা 100 ডেলে দে জেনজিতে 400 ডেলে দে পেপার এক্সে, এরকম তোর হিসাবে কর, মানে 300-200 করতে পারিস, মানে যেসে তুই লসটা না খাস। আরে হবে, শোন, আরে কিছু ওরকম কিছু না, তুই 200-300 করে খেললে না তাহলে কিছু হবে না। দেখ 300 তুই যদি লাগাস জেনজিতে 300-600 পেয়ে যাবি, 100 টাকা প্রফিট হয়ে যাবে তোর। আর যদি তুই 200 এইটাতে লাগাস, যখন 5x 5x দেয় তাহলে 1000 পেয়ে যাবি, ডবল প্রফিট। আই না বোকা চোদা, আই না জলদি ডিসকর্ড है, जल्दी है जल्दी है। अरे आज के ही प्रॉफिट হবে ভাই, आज के ही प्रॉफिट হবে, जल्दी है जल्दी है जल्दी है जल्दी है। 지금 현재 젠지가 정말 좋은 경기력을 보이고 있는데 ये कौन सी टुंग 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 कर रहे हैं भाई? कोरियन है कोरियन। नरूटो भाई चाइनीज बोल। 그냥 총 잘 쏘는 거 그게 다인 것 같습니다. Honestly, I think it's just us. ब्लेड भाई डीएम चेक करते रहना। Hitting our shots really well. नहीं नहीं, मुझे मत बताओ, मैं भी लगाऊंगा ना, मुझे मत बताओ। नहीं मैं, मेरा नहीं, किंग का, मेरे पे पैसे थोड़ी हैं लेंगे। किंग लगा रहा है? बुलाया तो किंग क्यों लगा रहा है? लगवा दूंगा आखिरी 500। Yeah, and in particular, all of the win आज प्रॉफिट हुआ तो ही नेक्स्ट टाइम लगाएगा। People ask, is Karen as a rookie going to be able to show up and look मतलब incredible? प्रॉफिट He's से done पूरी that. दुनिया He's गवाया sure going to मैं। be able to maintain this performance. He भाई showed बंदा up, 13,000 he's के done लॉस में that. भी है I ना। think there can be though an argument made that maybe they played some weaker opposition, right? They played teams who they weren't at their height. It was loud in their first match of this event. It was an EDG who was really looking like they were crumbling towards the end of that series. But I think that's not what I focus on. What I focus on is that they're on an international stage. They're playing against a variety of different styles, a variety of different opponents, and I think they're doing still a very good job of maintaining this structured style that they perfected in Pacific while still having the individuals to pop off when they need them. Sure, I mean, I would counter that by saying bringing a team like this with, I guess, Damn the भाई, international ये अल्ट जो experience that करते हैं इस some लेवल of पे these मेरे को teams do सीखना have, है। to come out and beat Loud, मेरे regardless से of अल्ट नहीं होता a अच्छे से। qualifying to Madrid Loud. That's got to be a big bonus for them. And the key thing for me is seeing the energy on stage. It matches what how Gen G looked. First time in लोगों को They struggled versus Secret, but still the energy was super high. Karen was first time in the time international again. stage। Munchkin and Texture ये alongside है भाई। They're looking very एडीए comfortable. 1 मैं पहली बार इतना ऊपर আমার সাথে তো প্রথম থেকে ছিল ভাই। वही तो दैट्स वाई तो सब लोग इनको लकी टीम बोल रहे हैं, पर ये टीम जेन्युइनली गुड है। He looks just अच्छा good. खेलते সাথে তো আমার সাথে প্রথম থেকে ফ্র্যাঙ্ক ছিল ভাই। Even look better. चैंपियंस ओजी वाली আমার সাথে প্রথম থেকে ফ্র্যাঙ্ক ছিল, আমি প্রথম থেকে বেস্ট ফ্রেন্ড ম্যাটেরিয়াল। But what I love about more is his presence on the stage. You look at these clips. Every time his team is winning, even when his team is losing, this guy's এই standing up. বোকা চোদা মার খাওয়া বি নাকি লোকেদের কাছে। Energy. He's such a সে আমিও বুঝতে পারি কখনো কখনো, কিন্তু they found in a
सबका फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन 5 महीने के कितने महीने पुरानी टीम है ये? জানিস আমাকে অনেকবার ডাকে, অনেকবার গুড়গাঁও ডাকে, ভাই দিল্লিতে আছে তোর খাওয়া দাওয়া থাকা সব ব্যবস্থা আমি করবো, তুই আয় তো। तो बनती है। He's got the energy. Isn't that to the rest of his team as well? And also, ले कोई भी জলদি আয় জলদি আয় জলদি আয় জলদি কিস করে জলদি জলদি তুই জলদি আয় না ভাই, ঠিক আছে না, গাড়ি যেখানে রেজিস্টার থাকুক কেন, ড্রাইভিং সব জায়গায় হবে। নারুটো नहीं, नारुतो जैसे बंदा नहीं है। জলদি उधर भी नारुतो ने बोला जेनजी हार जाएगी, फर्स्ट मैप हारे उसके बाद হ্যাঁ বল না। बैक ही हो गया। अरे जल्दी आए ना, तू बड़ा एखाনে डिस्कॉर्ड है, जल्दी डिस्कॉर्ड है, जल्दी आए। बोल की लाउड को भी बाहर करा था, जीजी को भी बाहर करा, लोअर ब्रैकेट दूर साला ওই লোক দূরের কথা ভাবিস না, বোন বোন বলি বাড়া, বোন থেকে তুই কি আমাকে মোল্লা বানাচ্ছিস? सेंटिनल्स और ये बहुत स्ट्रांग लग रही है इस बार। বলার মুখে বলার বলি, মুখে বলার বলি, তাহলে এমনিতে আজকাল কমেন্টে জানিস, এমনিতে ওর কমেন্টে ডিলের কমেন্টে চলছিল ইজ টিএসজি নারুটো ইওর নিউ বয়ফ্রেন্ড, ও এরকম চলছিল কমেন্টে। पीआरएक्स का दिक्कत पता है क्या है, कभी-कभी प्लेयर्स चलते हैं कंसिस्टेंट। सोन जल्दी आए, जल्दी डिस्कॉर्ड है, जल्दी आए, वो दिक्कत है पीआरएक्स की। चालू अच्छी। Gen G, you are the higher seed as you came into playoffs 2-0 from Swiss. So would you वो like बात नहीं है, जब से मोनियट आया ना वो लोग शूट नहीं कर पा रहे, उनका टीम वर्क नहीं है। अब वही वे प्ले स्टाइल नहीं सूट करना ना। अबे यार तो था ना, तो उन लोग का पूरा सेट हो रखा था। Sunset and map number 1 और लेफ्ट आइस बॉक्स कर दिया। लीड side on मोनियट सेट गया 250 and map number 2. ओके स्प्लिट मिनिमम पूछ रहा हूँ, Next ना up, मिनिमम paper तो action, बता दो दा। bind and break. अबे मिनिमम कराओ भाई कुछ तो। अबे 500 ये दिखाओ लाइव करके क्या? अरे फक भाई, झूठ नहीं बोलता भाई मैं। हाँ हाँ ये क्या मिनिमम 500 है भाई। अबे चुप रहो ना, चुप रहो। तुम समझ नहीं रहे, वो नारुतो की जिंदगी खत्म हो जाएगी। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। पे स्प्लिट टूर आ रहा है, लोटस बाइंड वीटो करेंगे वो, नहीं बाइंड डिसाइडर करेंगे क्या? बाइंड वीटो कर दिए, बाप रे डैम, जीत गई जेनजी। जेनजी डिसाइडर मैप तो पहुंच गए गया भाई, पीआरएक्स आ रही है आज। जेनजी जीत जाएगी, अगर डिसाइडर मैप तो पहुंच गए। पूरे मैच का लगा दे। अरे पीआरएक्स पे लगा दो, सब पीआरएक्स पे लगा दो, जेनजी हार गई। भाई नारुतो ऑन सीरियस नोट भाई तू दूर रह, चुप बैठ जा। नारुतो तो मत बोल, मैं कुछ बोल रहा था, तू लाउड पे पैसे लगा दे, तू लाउड लगा, 10 रुपए लगा दे लाउड पे, लाउड हार जाएगी। तेरे पैसे भी ज्यादा नहीं डूबेंगे और डिजायर 10 रुपए लगा नहीं सकते ना भाई, भाई तो पूछ रहा हूँ ना, नहीं लगा सकते। मिनिमम कितना है? 500 मतलब 500 ऐड करना पड़ेगा, 10 वहाँ लग जाएंगे उसको, लेकिन 500 मिनिमम काम करना, तू 500 एक टीम पे लगा दे और दूसरे वाली टीम पे बाकी सब पे पैसे लगा दे, सबसे 100 ले लेना अपना शेयर। वो कर लेना ब्लेड, वो कर ले अभी फिलहाल, जल्दी करना। भेज तो मुझे 500। अरे 500 थोड़ी है मेरे पे अभी, किंग को लेके आऊंगा ना। 250 नहीं हो सकता, 250 नहीं हो सकता भाई, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास भी तो नहीं है, तो खुद अमन से मांगे, अमन से पूछ ले। अरे तो टीम की आवाज, मैंने आवाज तो ज्यादा करी है पर फट रही है आवाज तो समझी। It just feels like अभी ठीक है, such a big gap between where they were versus KC, where they need to be to make. रीस्टार्ट कर लेता हूं एक बार, रुक जा। was a Hail Mary. He was like, we are struggling. That's just so terrifying. अगर डिसाइडिंग मैच तो पहुंचे तो जेनजी जीतेगी। Was it good अभी enough? बोल। No, it wasn't. Quite frankly, it wasn't. They got rolled by Carmen Core, and I don't think the combo was good. But the thing is, it's Paper Rex, and I hate to say that because I love to be the person. ओए आ गया ब्लेड, आ गया वो किंग आ गया, किंग आ गया। नहीं आ रहा वो बात है ना, लेकिन अभी मैं किसी पे नहीं बोल रहा, मैं नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, आई हैव नो कमेंट्स। पीआरएक्स पूरा टीम ही अनएक्सपेक्टेड है, तो किंग भाई जेनजी का बहुत ज्यादा चांस है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ बट बहुत ज्यादा चांस है। मैं वही बोल रही हूँ।
पहला मैच कौन सा है? पहले मैप कौन सा है? स्प्लिट है ना? पहला स्प्लिट है। स्प्लिट है, उसके बाद लोटस है, उसके बाद लास्ट असेंट है। देख पहला ओए 30-20 करके लगाई यो किंग। ओए किंग उसको भेज दे, उसको भेज दे, उसको भेज दे। अबे है इधर ही बैठा है, म्यूट करके बैठा है। है इधर, उसको किंग उसको भेज दे, उसको भेज दे। और इस बार उस तरह से लगाइयो ब्लेड 300-200 300-200। ये क्या है, ये क्या है? वो तो अमन लगा पाएगा। अरे लॉस नहीं होगा, किसी का लॉस ना हो, बस मतलब लॉस ना हो, डूबा नहीं। अबे ये लोग कैसे जानेंगे किसका लॉस होगा नहीं होगा? कौन टीम जीतेगी ना जीतेगी? अरे ऐसा नहीं, उस तरह से नहीं, वो लगा दे। अमन है नहीं, अमन गायब है। भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरा मुझे बहुत बुरा फील। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मेरा अरे कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन। अभी 12% दिखा रही है जेनजी पे। भाई तूने फिर भी उस दिन इधर देख ना, तू स्क्रीन शेयर देख। 16% जेनजी, 84% इतना। वो फैन की स्पैमिंग रेट है, वो नहीं है, वोट भाई अरे सुन तो लो, मैं मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, ऐसे करो 300 रुपए इस पे डालो, 200 रुपए इस पे डालो, लास्ट मोमेंट में जो जीत रही होगी 300-200 ऐसे करके डाल लो। लॉस नहीं होगा भाई। अरे सही में लॉस नहीं होगा। अभी अभी दोनों 2x दे रहे। अरे तू भेज तो ब्लेड को। उसका फाइनेंशियल एडवाइजर मैं हूँ भाई, तुम चुप। फाइनेंशियल एडवाइजर तू है, देख कहाँ लेके गया उसके पास। हाँ भाई ठीक है। मर्जी है, पता है। देख मैं एक ही बोलूंगा, अभी लगा, जब तुझे वही पैसे लगाने तो तुझे खोने का दुख ना हो। अरे तो उसको कोई खोने का दुख नहीं है बहन के। भाई नरूटो नो ऑफेंस। नरूटो कुछ भी बोले ठीक है, किसी को कोई भी कुछ नहीं पता। नरूटो नो ऑफेंस, तेरे फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे नहीं रहे, नो ऑफेंस प्लीज। उसको फोर्स मत कर। उसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, उसको फोर्स कर ही नहीं रहा हूँ मैं। अरे अमन लगा देगा, चल अमन आ गया। अबे 30-20 करके कैसे लगाते हैं अमन? लॉस ना हो उस तरह से लगा दे। हाँ वैसे लगा दे, वही तो कह रहा हूँ मैंने पता मैं तो स्प्लिट करूंगा, जिंदगी पे लगा के रखूंगा कि इनका हाईएस्ट लग रहा है और फिर बाकी देखा जाएगा। अबे मैं भी बोल फर्स्ट मैच पे जेनजी डजंट प्ले। हाँ पहला मैच वो ऐसे ही थ्रो कर देती है भाई, थ्रो कर देती है पहला मैच। भाई सेमी में कुछ भी हो सकता है ना ब्रो। नहीं जाएगी अगर वो अभी हारी। PRX घर जाएगी अभी एक भी मैच नहीं हारा। अगर ये हारती भी तो अभी क्या करे, बैठ जाओ भाई, लगी दूसरे लगाना। क्या होता है? अगर वो थ्रो करके भी खेलेगी तो भी वो घर नहीं जाएगी, PRX घर जाएगी। समझे? ऐसा है फॉर्म में। सोच लेते हैं, देख लेते हैं क्या तो चल रहा है, क्या नरूटो 2x कर अभी फिलहाल स्पीड को। मैं 2x नहीं होता भाई। होता है करके देख। सेटिंग तो लेट चल रही है ना नरूटो तेरे वाली, मेरे फोन में तो फास्ट चल रही है। अरे ट्विच वाली देखनी पड़ेगी ना, ट्विच वाली देखनी ट्विच नहीं, मेरी यूट्यूब पे ही आगे चल रही है भाई। 2x पे लगा इसको, 2x पे लगा, प्लेबैक स्पीड 2x क्लिक कर। अभी खुद ही नॉर्मल हो जाएगी, सेटिंग पे वापस क्लिक कर। हो गई नॉर्मल हो गई। महाराजा बना फिर। Com certeza, acho que essa última partida foi o nosso pico de vitórias até agora no nosso time novo. हाँ मुझे लग रहा है जीतेगी और जाएगी। At this point, everyone wants to beat us. So far, पहला मैच तो मुझे लग रहा है पेपर है सीधा। atenção do TCK.
हाँ Está क्योंकि sendo वो muito boa. Eu ट्रोल acho que करके ele खेलते हैं nasceu भाई। para jogar लेकिन com लोगों को कोई भी यही डर लग नहीं रहा है, अगर वो अभी हार भी जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लोअर ब्रैकेट में जाएंगे। At the end of the day, anyone और can पर like take it and win it. PRX भर जाएगी सीधा। Valorant, so it's true. Just who plays अगर better that PRX day. जीत गई ना बस सीन हो जाएगा। PRX जीत गई तो हाँ PRX अगर जीत गई तो सीन हो जाएगा, बहुत बुरा सीन हो जाएगा। चुप कर बैठेगा ना, पहला मैच देख लेते हैं, ठीक है? पहला मैच देखेंगे। अरे नारुतो ने बोला देखी भाई इसलिए डर में हूँ भाई, समझो यार। अबे मैंने कब बोला? मैंने किसी का कुछ टीम नहीं बोला मैंने। बोलना भी बेटा, बोलना भी। अरे मैं तेरे को ये बोला कि 37 मैचेस वो हारी नहीं है अब तक। आज कोई भी जीत सकता है, दोनों टीम अच्छी है और PRX बहुत मैचेस हारी है, लेकिन जेनजी जो उनके ओपोनेंट वाली है एक भी नहीं हारी है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। वो पैसे लेकर अभी तक के टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है, एक बार भी वो टीम लोअर ब्रैकेट में नहीं है, एक बार भी। ठीक है देखते क्या होता है, फर्स्ट मैच देखते हैं उसके बाद। मतलब उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हार गए। और पहला मैच तो वो जेनजी थ्रो करेगी। कि वो उनका प्ले स्टाइल है, वो अडेप्ट करते हैं उनके प्ले स्टाइल पे, देखते हैं कि वो कैसे खेल रहे हैं। उन्होंने लाउड के साथ भी वैसे ही करा, उनका वो स्ट्रेटजी है। कोच ने भी कॉन्फिडेंस से यही बोला था। unlike the previous matches. वो तो हैक, वो तो कॉन्फिडेंस से ये बोलते भी डोंट इवन ट्राई। New kid in the block is ready. लाउड वाले ने तो उन्होंने बोला कि भी डोंट इवन ट्राई। 일단 저희가 이제 5 딱 महीने की 증명을 해야 될 필요는 없는 것 같고요. 그냥 नारुतो का रोना छूट गया। 뭐 무시당할 그것도 तेरा 없는 것 4 같아요. मारा था। पे इन पे किसी पे मूछ दाढ़ी नहीं है भैंचोद। एशियंस पे नहीं होती ना। कोरियन के हम एशियंस में नहीं आते क्या? हम भी एशियंस पे आते, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन सेमी है ना, सेमी है ना आज तो। सब लोग वही बोल रहे हैं, आज अगर PRX जीतेगी तो अगर तभी जीतेगी तो मोनेट चलेगा। मतलब उनका स्टार प्लेयर है। ये तो हटा दे, रोटी की काट दे। स्टार प्लेयर उनको कोशिश करना समथिंग। ओके मैं पहले मैच लगाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा रिकवर हो चुका है, मुझे जितना अगर उसको मुझे बेच देना, रिकवर हो गया ना तेरा। एलेक्स के रिएक्शन कितने फनी होते। पहले मैं लेकिन लगाऊंगा PRX, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसी टीम आ रही है पहले में था, आगे पता नहीं मैं बैलेंस करके। पहले में तो लगा, पहले में तो वो थ्रो ही करते हैं, अभी तुम इसको देखे जरा। कह रहा हूं ना, मुझे पहले में आ भी रही है भाई टीम, बहुत दूर होती। इमेजिन लोगों का ड्रॉ हो रहा है, वैलो में ड्रॉ नहीं होता ना बोल। होता है फाइनल। अरे टूर्नामेंट नहीं, मतलब हाँ फिर ओवर टाइम जाएगा ना। ओवर टाइम फर्क नहीं पड़ता ना, ड्रॉ में अगर ड्रॉ हो तो 6x मिलता है, क्योंकि लेकिन बैंगलोर इसलिए तो देते हैं अभी, क्योंकि होता ही नहीं है ड्रॉ में। पता है फुटबॉल में ड्रॉ होता है और फुटबॉल में अलग ही चलता है भाई। Coming into this event as a team who could compete for that title, So, but they're up against paperworks that no matter how logical you think about them, no matter what you think is going to happen with this team, they always surprise. They always find that miracle, and that's what makes playing them so damn scary. Yeah, PaperX is the definition of any given Sunday, really, of what you get on the day, especially now we're thrown into the mix of potentials for composition changes to come out. PaperX looking back at their previous performances, not feeling fantastic about it. Gen G now don't necessarily have a very familiar opponent in that regard. What other team will play a comp for the first time after scrimming it once and Blade then भाई, show up DM. and look terrible in the first half, win in the second? Not to the same level. Not to the same level though, man. They show up, they make a miracle happen, and then you'll talk them after like कितने का पता है ना, 1.8 समथिंग से ज्यादा का। they're ridiculous. हो गया हाँ हो गया। हाँ मेरे भेज दियो फिर। पहले मुझे क्लियर कर, पहले मुझे क्लियर कर। हाँ We see the In half the amount of maps too, because Angel did it in 20. इन दोनों में बताया भाई। So maybe that is the key, like you guys said, Forsaken, he has been creating a lot of the stuff here, and at least individually, Mike, he's been doing well. He's on form.
Yeah, definitely. I think just to double on from that, the real test for Gen G would be as well if PaperX do completely, especially the fact that we're starting where we are to start on split. If that composition gets changed, it'll be another validation for Gen G to come out, obviously prep out the window and just perform bread and butter Valorant, which they've shown time and time again. They've looked very, very clean so far here at Madrid in terms of curveballs coming their way. They do that versus a team. हाँ भाई पहला मैच तो PRX ही जीतेगी भाई. बिल्कुल सही बोल रहे हैं कनिष्क भाई. They know about the chaos and they've adapted to it very well. We're in agent select and it's standard for once in a PaperX standard. It's double duelist style. It's the old standard from last year. टीम देख लियो. अगर तुम में से किसी को एक मिनट बात अगर तुम में से कोई ऐसा गुस्सा करना चाह रहा है अभी लगा दो भाई 100 प्रॉफिट हो जाएगा मेरे अरे तू डायरेक्ट 500 मांग रहा है ना, नहीं तो नहीं है मेरे पे भाई. किंग लगाएगा नेक्स्ट मैच में लगाएगा. They're both on the run for one of the best rookie performances we've seen. And probably been the two loudest. Yeah, well, let's get this specific showdown underway and send it over to your casters, who's been very familiar with the journeys of these two teams. अबे मैं और अमन ही कर पाएंगे, फिर ककाशी भी आ गया, ये नारुतो. ककाशी भी लगा रहा ना, बहुत पैसे वाला है. They played EDG, right? अभी भी बोल रहा है, तूने तो बोला अभी कुत्ते का आइडिया दिया. Beating them twice. PaperX know that from EG over at Champs. Now it's an opportunity for them to give Gen G a lesson in that very same thing. Well, that's the thing. I kind of want to touch on what Mike said earlier, where it's like a head over heart sort of situation. I also think it's mind over mental, because the way that PaperX play is insane. So you kind of have to almost send उसकी क्वालिटी खराब आती है. do that throughout the tournament so far. The other problem for these teams as well is yes, they've played each other before, but as it was sort of said in the interview there, like the video, PM देख लियो बस ब्लेड. they would both like it if Pacific were able to win. सेंटिनल का सारी भी कहाँ से आ गए सेंटिनल. It's almost cruel that they get picked against each हाँ other. इसके बाद They want to eliminate each other because one of them is one gets forward. आज ही है इसके बाद. Sort of saving grace for now, but it does mean that you're almost wanting to just both teams play their best so that whoever goes forward is going to be able to match up against America, who I think most people at the moment are favoring in this tournament. Yeah, it definitely feels like fan sentiment, and even from what we've seen, Sentinels have just looked unchallenged throughout this tournament. Yeah. Other teams have had shakier starts, but we'll see. So allowed. भाई ऐसी टेबल दिला दो यार. I'd be scared of them just as much. Well, you know, talking about this map in particular, we're going to see Split popping up, and actually for the whole series, Split, Lotus, and Ascent, the first three maps of the BO5 that they played regionally, the Gen G won dominantly. Now, the reality is coming into Split, it's not exactly the same, because PaperX before, they were running Forsaken on a Yoru, himself and something were diving in, taking so much space, and winning almost all of their opening duels. I think it was 13-4, where Gen G just got for PaperX. I understand why they've come in and changed their comps. Like we say, the hardest thing is to beat them twice. So they're bringing a new comp and a new philosophy on how to handle Split. Question is, will Gen G be able to deal with it this time, now that there's nothing spooky going on? It also seemed like उसमें डिसाइड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अच्छे से किस फर्स्ट फॉर्म में. ये दो राउंड के अंदर ही पता लग जाता है कौन क्या खेल रहा है. The thing is though, the same can be said for their opponent. We saw Gen G just look incredible. Like the double duelists especially, the only change they made was Omen in for Astra just to allow them to be a bit more explosive. But I just remember that defensive half of Texture and BTO. I think they both ended up with 22 kills. Both were the best player in the server. It was like going toe to toe all the way through. So it is one of those matchups, as boring as it is, where we are just going to go. The duelists are the pinnacle. These are the players we have to watch. The amount of times that PaperX just got absolutely banged if it wasn't Forsaken just having life games. But the thing is, it's every time he plays Split, he has someone else's life game. It's not a Forsaken life game. It is, okay, for anyone else, that would be the best game they've ever played. अरे नींद आ रही है यार. Every week. Well, we talked about this on the desk. I heard भाई क्या करूं, अभी तो कुछ देखते हुए तो और नींद आ रही है भाई. पानी पी रहा हूँ, रुक जा. Actually, looking at the veto, right, Split last time went to PaperX, Lotus was super close. I mean, if we go based on what we saw in the past, बहुत भयानक भाई. 2 रात सोया नहीं भाई. take that 2-0, but I'm expecting a 3-mapper between these two teams. The best of the best. Pacific number 1, ब्लेड भाई Pacific number 2, and it's कर time देना. to throw down as the barriers go up on Split.
नारुतो ने and it's पेपर looking एक्स like को we're going to लगाया get है. a to start things अबे off. आते Both पुश teams with the कर majority रहे of their हैं. players set up outside this A site. They both run pistols in this direction before. Good nade coming out of Forsaken already, and something. And Mindfreak peeking off the back of it. They're going to be stuck in the corner early on. This is a great start for PaperX. And Munchkin's in danger as well. He tried to jump away. Boombot was chasing him. Munyet caught him. And for Gen G, 2 versus 5, barely any damage done. At least they've still got the spike, but they have to hope for some serious mistakes at this point. The PaperX go running forward, or even rotate assuming it's a B hit. You can see there's no real need for panic on the defensive side. They're just gonna hunker down and wait for Gen G to take a step forward and give them the first pistol round win. Defending map पे याद रखना सब. Scary prospect as well is that on this map in particular, we have seen some sort of rougher attack sides out of Gen G. Obviously, that is helped a little bit by having that Omen instead of the Astra. But other than that, it's an absolutely flawless start to this one. Now, as said, expectations for PaperX is this is the map that they'll win. If it's going to happen in this series, I think the next two, I would favour to Gen G, even more so because of the fact that we saw recently a lot of the changes to the comp for PaperX, and I'll be honest, I didn't like it. It didn't look good. So this is the map that I feel like PaperX have to win. The problem is, throughout this tournament, I've said that, and then they've won the other map. Because that's just how they are. They just managed to adapt. They have the individual players that sometimes they can just frag through a map. फर्स्ट राउंड में ये पता लग And जाता है that कि is ये लोग rare. Like, क्या it is किस very हिसाब से खेल difficult रहे to हैं, थ्रो have करने के people हिसाब that are on से. that level. At least from the games we've had, Tom, it has been ये an इंटरनेशनल insane टूर्नामेंट percentage है, of रैंक teams गेम नहीं है. trading out their own तो map picks, है. losing your pick and winning your opponents. Gen G, they've not got off to a great start, and as the push comes in, okay, actually they're getting close. The pressure's kind of being applied to Munyet now, blinded up, he's taken down. Okay, it's not a bad start at all. Gen G gaining some ground, now winning some more fights. With heals up, okay. It looks like they're tidying it up eventually, but that got very scary for a moment. I would love to see Forsaken's POV in that, because what it looked like he did was jump down from the heavens with an outlaw in hand and try and face their entire team. Now that would be ridiculous to even attempt, but crazy. But do you know who he is? Yes, I do. He just lost his gun. It's now been given to something, and he's bought a judge to replace it. So that, again, if you're talking about if you're talking about Forsaken, he's basically answered the question himself. Well, it looks like we're going to be using that dash very early on for something. He's getting aggressive. Wall goes up. He's ahead of it. Looking to take someone down. He got the shot off. 10 HP left on Meteor, but that's the one problem. If you're the one taking contact with that outlaw, you're not going to kill the player. You need to get out. That's the thing. They can just heal him back up, so that it's actually not that problematic for what was an early battle. You can already see heading over in that direction. Munya is going to get aggressive as well. Bear in mind, this purchase is fairly weak for PaperX. Normally, you'd see a rifle or two in the mix, but this is just SMGs. It can work more so on Split than probably any other map. Oh boy, they crossfire nasty, but that's the thing I really enjoyed about Gen G. They've been methodical. They've been careful throughout this tournament. They are not one of those teams that are just aggressively running in and blitzing their way through rounds. They have the skill to do it, but they're always, especially in these sort of rounds. It looks like caution's paid off for them. Whatever goals they made on A has sold it to PaperX. We're now running the gamble on an A stack. Of course, there's an outlaw there that could be retrieved. I doubt it even will be. It's quite far up, and the player that will pick it is in heaven. Because that spike should be coming down in a little bit. PaperX, hear no noise, see nobody here. भाई ये लाइनअप पे क्यों है बट अभी से ही अच्छा वो एंगल क्लियर करने के लिए वो डाल दिया ओ कोऑर्डिनेशन as we can see they've gone to the exact other side of the map so PaperX you know it's hard to get back into a site with these weapons as well especially a site like this where pretty much every fight on the way is अरे रुक जा स्क्रीन शेयर उसका दे रहा हूं भाई 1 मिनट but I am waiting for Forsaken to attempt to try and blast back through something already. नहीं मुश्किल है रीटेक अभी Taking a lot of control of that texture. Defending solo position, there's a chance. There's the blast packs already. And there's the judge. Exactly what Forsaken does. He got a rifle, but it's very short-lived. Well held by Gen G, even with a little bit of chaos. Yeah, I mean, they spread themselves out there. Lots of space. So even when that judge gets up close, he's only getting the one, and it's an immediate drop. The rest of the players easy to deal with when you've got that kind of weaponry advantage and you're not caught out of position. 2-1. It's a fairly bog standard start to the game. Pistol win for PaperX, follow up, and then they lose
I mean, the one thing that we'll say is He that maybe that put third the round like could have seen a bit more damage out of that side. But again, they did gamble on a site. It didn't work out. This is what happens. The opportunity, though, to deal that damage here as we get the operator आज तो out on तुम्हार something right away. बृहस्पतिवार तो हाँ Not landed, but yet good for one and dropped the बृहस्पतिवार तो But किसी Gen G कानून में back off. जाएंगे The whole time they've been leaving Meteor outside of A to catch a rotation. He hasn't found one, but one can assume that rotation's going on through the spawn right now if you're Gen G. They don't know that Mind Freak's still very much close. Yeah, they also flash mid on the defensive side, so they have the information that there was no one there, so they're able to gamble an early rotation in towards this A site. Forsaken still with the judge, is just going to make sure he keeps control in mid, but it's slightly more stacked up than you might expect. The only problem is he might get caught. He's switching between utilities. Finally, will pull the gun out, but the aggression of his teammate gets absolutely nothing. And well, there is the floor of the judge. Not going to find anything more, and for something, I hope to God he's going to say. It's not the round you want to see him throw his life away for, is it? A 1v3 with the op? Possible, winnable, but not to be. अगर अभी PRX जीत गए तो PRX से होगा. A few more orbs picked up, something like that. Maybe risk it with the blade storm, but even then, the op is just so expensive. Doesn't want to throw it out. And for Gen G, I think they're sort of realizing they heard the op earlier on, right? They know that it's in play right now, so they're gone spread out. Already sending Munchkin to try and find this player. What the fuck Mind Freak देखने? देखने. It Mind looks like Freak he कोई बोल रहा might है. be safe. They'd have to And 4 start seconds. playing down in that direction second now. में So an start. op for the next round, but just look at the credits on PaperX. It's not like they're going to be able to fully recover into a standard buy. I think the pendulum's kind of swinging in Gen G's favor now at 2-2. Economy's under their control, and ults will come online soon. Yeah, and as I said, when we saw them play against CDG, they had a really stellar, aggressive and confident defensive side. So I think for them, any sort of grinding out of these early rounds is going to be really important. Sure, you're still going to have an operator onto something, which alone can be enough to cause issues in the round. But as said, they've been methodical. Their utility's been good. They instantly had a snake bite that went through to deny him that early aggression. It's expected at this point, by the looks of things. They could just be going for an early A take. They are all set up outside. Something में पिछले round की ऑफ बची थी ना. I liked what I saw last round. I'm caught in the replay, Tom, but a fist bump into a इसी स्टाइल में तो मैं see कहता how हूँ many खेलने high fives को. there are for Gen G after this one. They've got a lot of space, but that flash was perfect. Deadly from Divide. He's managed to slip away towards the elbow. Another fight. Nice. And he's actually got a teammate in there. I don't know if they've seen Forsaken, but they certainly have now at heavy cost. Smokes are down, but so too are the majority of PaperX players. It's only something left, but he has that off. The 1v2 he didn't go for. The 1v3, it's tempted him. It's pulled him in for the fight. He hasn't found him to start off though, and that dash already halfway up. Wants to close the distance. So many tough angles, tight angles to clear with this op in hand. And no idea there's a player up top. He's checking the right angle. What a shot! But Lucky was close by, ready for that play. A third round found for Gen G. They're running away. Still a close round what was invested. That was a decent stack up in the early stages for PaperX, just basically having the majority. And somehow managed to dodge some shots that I don't really know how they did, but bringing it down to just one player surviving, keeping it a little bit more honest for Gen G. Well, you see the danger of how fast this man is with the operator. The problem though is he's not going to be able to have it for this round. They didn't have the extra finances, the quick trading again, the fundamentals of Gen G. Kill one death as well, so he's still 2 away from a Blade Storm. So we're down to just that rifle. But as we said, ultis were coming online. We saw the Seekers used by Lakia, finding a lot of information. This time around, PaperX have theirs, but also a showstopper online. That's a big weapon to have in the back pocket of Forsaken. It could play a role later on in the round. For Gen G, you can see their spread. This is a full default play. At this point, they're expecting PaperX to make some adaptations and to throw out some of that signature early round aggression. They're happy to bunker down and wait for that push to come through. Like I said, the other problem here, वही Blade DM. PaperX lose this round, it's going to be a skyrocket. Oh, maybe when. That's not the start they were looking for. होता है भाई. Jinx नाम की चेंज होती है भाई. That's not really going to work too well for them, and the Seekers went towards mid, but also went towards the A side. Exactly भाई. The realizations there. ये चीज मुझे बाद में अकल आई है. Take some notes. Mind Freak मार दे यार उसे Mind Freak. Obscure position to be in, but then it's almost revealed. Divide though
has done well. Brings Two back v 2 kills. The spike just about making it to the site, and it is going to bait in. Nice work from the side of Munchkin, teaming up with Texture. It leaves this man who did get healed up early in the round. As said, he's been ever so devastating. Showstopper might just be able to clear, shoots it into the Viper's pit, but actually, Munchkin's just teamed up with his... भाई दोनों दिखे Doesn't even mind about the pit. I don't know if Forsaken realized it, but it doesn't even matter. Loses the fight to his counter raise. The march continues on for Gen G. Gen G are having a field day right now. Like I Good mentioned, way. the economy was in their favor. The ults that were there for PaperX burned up in that round. Yes, They na? try and gain some semblance of an advantage. And Divide did incredibly well. In his position, he stayed down in screens, waited for the player Munchkin up top, almost sacrificing himself because he's so out in the open. They swung to try and trade him, and Divide had that beautiful off angle to just... मैंने तो किसी पे नहीं लगाया भाई, मैं किसी को सपोर्ट ही नहीं कर Seeing individuals win some of their fights, but it's not enough right now. Gen G have come locked and loaded with a huge lead to start. I mean, it's double the rounds, but it's the economy that's really the problem for me. You've got players 7K, 5K, 5 and above is average for the Gen G side right now. PaperX, they're going to be on stingers, weaker weapons, no ultis to fall back on. It ain't looking great. Off rip. Already, Gen G have found the same number of rounds they did last मैप time. 3 तक नहीं जाएगा मैच. I said it's looked like a different beast. I think they're a team that have done really well with the coaching staff. Someone as legendary as Solo, I don't think you're ever going to make the same mistakes twice. This guy has been around the block multiple times, and even just giving him a moment to talk here is going to be beneficial for them. Mind Freak off to a bit of a slow start as well, but also it is just reliant on those individuals a lot of the time. I think we saw some of the statistics posted earlier. Is like you compare the 5v4 conversion, Gen G, I think it's like 70-something%. PaperX is only like 60-something, but then they have a higher 4v5 because they have those individuals that can turn rounds on their head. It's not the greatest stat you want to have ever because you'd rather just be winning the rounds outright. But they need some of those heroes to come online because they've been okay, but it's not been enough to take rounds off Gen G. Haven't seen the numbers of clutches from Gen G. 4 सेकंड उसी दिन चला था भाई, उसके बाद समथिंग चल रहा है. Players like Forsaken previously bailed them from so many situations. Now, weaker weapons like we said, close range surprise factor is probably the best way to find value. Mind Freak has at least picked up one, but Karen is making this one look easy. 3 kills already under his belt, 40 HP, and he's tucking in the corner. It looks like he's going to get this one easily with Mind Freak drop. That's his 4th kill of the round. The confidence builder if ever I've seen one. And that's the last thing that PaperX wanted to give to their opponent. Again, not talking about them losing the round. That's expected. It's the amount of players still alive on Gen G. They're farming credits by the minute, but something has picked up one more. 3 to go. One hell of a play if he made it. It ain't going to happen. Look at that firing squad down below. Yeah, I think against any other team, maybe it'd have a chance, but Gen G have been so good just playing off of each other, trading effectively, and they don't even lose another member of the squad. 5 and 2, and I love the sort of switch up in tempo, especially in these anti-eco rounds. They're not allowing their opponents to really figure out anything that's going on. You have the instant tip leads to back a site, information clearing things out, the rest of the team quickly execute, and Karen actually sticks around, he just keeps the spot, keeps the control. Doesn't allow anybody to get too far ahead, and he even takes himself 4 kills while he's at it, so why not? This is definitely where on the side of PaperX you start to feel that mental pressure applied. Defense has been tested again and again. They failed the test again and again. 5 in a row for Gen G, and now ultis are there. Showstopper fired off, and Munchkin had no chance. No smokes for the way back through. No paranoia to play with. No flashes on Divide. But PaperX set up with a man disadvantage on a retake, seconds into the round. Yeah, it's not going to be easy to get back in here. As said, not bad in these 4v5s, but Gen G are even better in the 5v4s. Again, Karen takes down another Forsaken, trying his best, but he's almost dead. It is well, Blacky and Retake combined might be one of the fastest rounds we've ever had in the VCT. That was so quick from Gen G. And you can just see the more the confidence build, the faster these takes are getting. Gen G are getting opener after opener. They've used a couple of ults, but they're also able to stagger them. Talking about Showstopper used this round, last round they used Frost Shadows to get the same sort of information. That's already done. Yeah, oh wow, huge. Hey, he got them the spaces around prior, and then Kara got 4 kills. That's why it's back online. Well, this has to be a crushing one for PaperX off rip.
Because again, they're left to weaker weapons in theory, but they've actually managed to mix a buy with light shields and full shields on something because he doesn't need a weapon. He's got 5 knives locked and loaded. We'll see what he can do with those. But the reality is, yeah, the momentum is very much in Joe's favor. The economy is running high after several reinvestments. Just take a look at their credits on that right-hand side. It's looking great for a number of rounds to go, maybe for the rest of this half. Still possible for a 6-6 scoreline, but it has to start here with a much better defense. Now, we talked about some aggression from this PaperX side, seeing it early on in rounds. So with a minute left on the clock, they're going for it. Good paranoia, but the fights don't go their way. Gen G winning out every single one. There's no competition, Tom. Barely a lick of damage done. Blade है कि क्या? Blade. This is a disaster. Something might be able to save them. He's made big plays before with the Blade Storm. There's one, and not two. Damage, but no kills. Come on, There's a chance. Somehow this has come back into a winnable scenario. Just need to hit the bullet. Oh, that's so unfortunate. A nice try for the new man on the block. I didn't think there was any way that round was going to become competitive. But somehow Munyet made it close. Scripted नहीं होता ये सब matches. Like the beginning of this round, they were so ready. They had their whole team just waiting in mid, ready for that push to come through. And sure, the utility from PaperX was good onto a couple of the players, but the deeper players were so ready for that push to come in. It ends up being quite an easy fight. Yo, not even close, guys, not even close. Oh my God. Like I said, you know, there was no chance of them losing that clean. I thought something would be the hero, but Munyet, they complimented his calling and his play in the video we saw earlier. And I can see why. Not he's even fragging close out name. like that. But again, That would be close. close but no cigar. not even close. 7-2. Gen G finding next to no struggle. Close opportunity for PaperX to clutch it, and this could have looked very different. But instead, they're on an eco. They've already lost something. Stingers to play with. Sheriff on Forsaken. Midway में जाने की विश्वास है. He sees an eco and he's diving down into vents after. Probably they can win. So much control towards mid that they have to just be wrapping out from another position. Look how passive the players are. They know that there's going to be weaker weaponry, so they're just not giving them any of the close range fights. Karen up from above, there's not really an easy way to kill him. Maybe there is. Somehow Munyet got past all the defenses. Even still though, this post-barn looks strong. Nade still available. They've been taking these sites so quickly that they've had no problems just having late utility. Wow, the time almost looks like it's gone. Trying to bait some space, but it's all too easy for Gen G. Another 3-man player surviving. 8-2 on the board. And this is PaperX's map. They have lost 8 rounds in a row. Other than the pistol in second round, they've achieved nothing. It's hard to think about. Even the round that was close, Tom, it comes on like 4K to get it across the line. It's not what you want to see. Early on in a series, that previously Gen G got absolutely obliterated on. आवाज कट रही है ना मून की. They come to the international stage. They might do. हाँ कट रही थी. 13 for us, well 13 to you. An opportunity here at least to shut down the first and the second one. Yet as well, rockets on point. With Lakia down, it looks like PaperX are set to finally put another round on the board. Long have they waited. It's Karen to try to challenge, and he got an opportunity, but it was shut down eventually by something with only one standing. It's an easy win. 8-3. PaperX finally back on the board, but hell of a distance. अबे देखिए ये लोग कुछ नहीं बचते भाई, आराम से खेलते हैं. इस कौन जीत रहा है बताओगे? तो जंग ही रही है लेकिन उसका PaperX का कमबैक हो रहा है क्या? वापस स्टार्ट हुआ है. एक राउंड जीते हैं वापस. अभी तक बस एक राउंड जीता है. कमबैक पॉसिबल है? Even a sort of 8-4 scoreline wouldn't be a complete death sentence. 9-3 वहाँ भी चलता है क्या? I'm looking at 2 operators on the attack. Obviously it's something that can be dropped, but they're waiting for aggression here. वो लैग हो रहा है. Great spot though, those ops तो stream buffer थी. mid control is going to be completely conceded. The golden gun on Lakia. भागा पीछे भागा. वो भी भागे. Swinging. अभी 4 लोग यहाँ पे खेल रहे हैं. 6-2 KD on the board and a chance to push it even further at 8-3. PaperX tried to mid push, got denied. Now it seems like they're caught. One foot in the grave. They don't know whether to continue on that aggression or reset.
for the later play, and Gen G मैं have not made a decision. With a minute and 5 seconds on the clock, they don't अरे need नहीं to जाने rush. वाले साले, They're रुक holding जाओ। tight, waiting for PaperX to make the mistake. They're so nervous of someone being within the Naruto smokes की that लेकिन are भाग के playing. फाड़ Most रहा of है। the time, those smokes are being put down. Why would you just do it? भाई 1 लाख की Deter वॉचिंग हो aggression, गई which पहले is मैप पे। exactly what it's done. यस भाई मैंने PRX पे डाल रखा है भाई, ऐसा ना बोलो मन भाई। Once again, but the spike Naruto. is looking to wrap क्या? around in the other मार उसको, direction. मार उसको, मार राइट में प्लीज Peek out from something. Oh, I think Meteor's seen तुम्हें him, 2 but बार जीतना पड़ेगा तब जाके तुम won't matter too दो much लोग now. ऑफ कर रहे हैं He's एक gonna टीम में। activate the dash. Something goes peeking, but now I'm just looking at that timer. TP into the backside once more. It's been cleared out, so the टेक्सचर भी ऑफ कर रहे spike हैं, वो will भी be able ऑफ to कर go रहे हैं। down. This almost has to be a complete retake. Oh, nice shot by Lakia as well. There's his 13th. Spike drop. An opportunity indeed with that spike down, 15 seconds left. It's time for Gen G to get a move on. Munchkin has to step out from that corner, and he's been caught. They need a dive on that spike and get it planted, but PaperX are in their way. 4 rounds at the half. It's not a death sentence, like you said, Tom, but certainly nothing to celebrate. This has been a strong performance from Gen G. Lakia leading the charge, and plenty more left in the tank for the second half. भाई You have PRANK hope का भी 4 that Eight four, PaperX eight have got four, something eight four, special eight. planned on their attack, because PaperX this is a वगैरह भी really rough Nice, scenario for them to have to fight back मैंने from. तो लगाया नहीं है, मैंने It तो is मूड भी नहीं definitely लगाया। a troublesome क्या चल मैं रहा है? मेरा position to भी be here, मुझे ये मैच but बैठता the और fact कभी भी is, पहुंच there's definitely still भाई, opportunities. तो आज नहीं Even लगाया still, था, though, you said लेकिन Lakia is PRX performing. को Let's hear from him now. भाई मैं भी PRX 안녕하세요. 젠지 e스포츠 소속으로 활동하고 있는 मैं 기아 젠지 को- 김종민이라고 भाई वो 합니다. कहाँ है? ये ऐसा मैप है कि तुम्हें थोड़ा बहुत लॉस ये ना टेक्सचर ये 일단 वाला। 첫 스타트가 되게 힘들었었고 ये लग गया है, 오늘 आई जे 또한 ले 첫 경기 빈이라 해. 자체는 되게 힘들었는데 Pure luck लग based जाएगा मोदी शकल का। 이겨내서 좋은 अबे ये क्या है? चाइनीज? कोरियन। भाई ये तो नोबिता है। भाई ये तो नोबिता। 너무 ऐसे नोबिता आ गया। अबे हाँ ये नोबिता ही है। इसका डोरेमोन है। Down to just one player actually within the site. They have to go running in though. Kara might be. अरे डोरेमोन है ना इनका कोच, तो इनका कोच डोरेमोन है। 먼치킨 선수가 젠지에 들어오게 되면서 저희 게임 스타일이나 그런 수준이 되게 얘는 올라갔다고 코치. 생각을 하고 그리고 टेक्सचर 이제 का है, ये बैठा है जो सबसे पहले 개개인의 नंबर पे है। 실력 또한 이제 먼치킨 선수가 저에게 콜을 되게 많이 해주는 게 피드백을 많이 해주는 게 있는 것 같다고 생각합니다. 자신감은 늘 넘치고 우리는 준비되어 있고요. 그리고 이제 진짜 더 잘하는 모습과 더 좋은 모습을 보여드리기 위해 잘 저희가 준비해야 될 것 같습니다. 이제 플레이오프까지 진출하게 됐고 이제 कोई बंदा चैट में आके लिख रहा है व्हाट इज दिस कोरियन ड्रामा। 올 텐데 그때까지 더 좋은 모습을 준비해서 저희가 이제 잘하는 모습을 보여드릴 수 있도록 할 अब 거고 젠지 को वोट कर रहे हैं तो 진짜 젠지 항상 응원과 격려해 주시는 팬분들께 너무 जी, 감사하고 ये कौन लिख रहा है? किम जोंग मिनी। 팬분들을 위해 게임을 하겠습니다. किम जोंग मिनी। मिनी Well, it was अबे इसका नाम सच में किम जोंग उन है भाई। हैं? बाप इसका नाम सच में किम जोंग उन है। First half 8-4 when we left you. And now it's time for Gen G to close this map out. At least that's their mindset going in. PaperX, their attack side is about to be put to the test. And the big thing to write home about last time was something diving into sites. The thing is, he had a Yoru causing a lot of chaos for him. Now it's a little bit more conventional, but that's never the name of the game with PaperX. In he goes. Something's looking for a fight. Paranoia is perfect. Snake bites Something ने even गाँव मार better. दी भाई, इसकी गाँव फाड़ दी। The rest of the team comes in to save him. They've ended up falling to a 3 versus 1 with Meteor left standing and his back. That's a mistake. And it almost was a costly one इसको too. बाहर निकालो। क्या चल रहा है? Rania needed to hit that Find headshot at इसको the गोली end. मारो पहले। It looked like there was a realm where Meteor managed to turn that What the back. fuck, man? Even still, though, Let me it's find just it. around for PaperX, and that is the thing. Even with this compositional change, the thing that it adds is, firstly, you're going to have that paranoia available for Munya to sort of set them up in, as we saw at the beginning of that round. But also, it just almost, we're going to continuously see the switch up of who's going in first. So you're going to have Forsaken sometimes taking space for something, maybe if he has that operator in hand, and something in that round taking space for Forsaken. They are a deadly duo, whether the Yoru's there or not. There's a reason that they went to this combo after all. Nice shot by Meteor. Opportunity for more, and he's landed that shot as well. Forsaken's very low, a big help to any teammates that end up taking that fight. We may talk about the Outlaw, but this man's making it work with the Marshall, the cheaper weapon. And
Okay, an opportunity if they had to spot the player in the corner. Monyeto able to deliver the killing blow. Unfreak fell to a snake bite after being hit. Oh, what is that push from Meteor? आटा मार दिया भाई उसने शॉट में बढ़िया बढ़िया Never बढ़िया knew such a thing. बढ़िया बढ़िया 1 versus 2. As वन भाई बच गए वन भाई बच But गए that might mean by the time he gets here, ये मैंने he किसी can pick up a weapon. क्या देंगे Depends though, because PRANKK, that's the thing. Around face करेगा पता है PRANKK have been so fast that there's एक तो actually क्या ही still करेगा loads of time. They don't need to over-aggress. They've just या thrown ले out the guiding light, the flash to अरे हाँ नहीं आई get them a little bit of extra information. Still यार वो not पता है बहुत बुरा चाटा He's मारेगा ऊपर having से some paranoia. He's brought up his full belt of utility. अबे नहीं कह रहा हूँ बोल तो रहा हूँ फुल चाटा मारेगा वो Seems like he's waiting for that site to be taken. Smoke will give that away. The spike being planted. यार वो Now अच्छा he can खेलता look है to यार वो try कह and रहा हूँ see if there's any gun to be had. उसे गन मिल जाएगी Oh, there you have it. मिल गई Yeti. Yeah, we've got a bulldog to play with. जरूर की आवाज आती है ना Paranoia still online. Both वैसे smokes. गोली है मेरे भाई एक तो मारेगा वो पक्का Timing is key. हो गया अरे ले Together, that's a 3-2-1. Perfectly on cue. They won the round, Tom. 3 players down. This definitely isn't how they would have wanted to start it. When I add to that it's a Marshall headshot, okay, what can you do? And another Marshall headshot from a guy pushing a smoke close range, using it like a shotgun. That's not going to feel great. And the other player died to a snake bite. So few kind of random engagements ended up rocking the boat a little bit for PRANKK. We'll see how they recover. I think it's smart play. You really don't want those ulls to be going over something to बहुत सही खेल रहा है away भाई from Bladestorm. Even just a bit of damage in this round, and he'll have something for the next. Now, this purchase from PRANKK has players now fairly low on cash. You've got Forsaken and Mindfreak down at 150 credits. So for the next round, they might be in a little bit of trouble. Forsaken, though, he's just got walkabouts. He's sprinting after Lakia, but he isn't going to be able to land the shot. And at least for now, it's only going to be the control that's lost for Gen G. दो लो अंदर बैठे हैं भाई मत जाना कुत्ते जुड़ेंगे गए दोनों गए landing on each other's head. It couldn't be easier for Lakia's side seal and deliver to this man with the heal up for his teammate. Munchkin's going to be back up fighting form. And in a 5v3, that's another nail in the coffin for PRANKK. Tagged up a little off range fight. What an adjustment for Munchkin. Clinical. Now there's only 2 attackers standing. Their chances are looking pretty slim. Yeah, he almost killed Divide through the screen as well, so he's going to be half HP entering the site. They don't even know that Munchkin's there. A perfect reposition. This might be a flawless return to form as Divide's the only man left standing. A 1v5 scenario. 1v5? Can he do any semblance of damage? As said, they invested some extra credits into this round, so the next round's not exactly going to be pretty. Normally talk about saving, but मर गया actually नहीं holding onto a gun here would have more value, and he's just been seen and knowing exactly where he is now. I imagine there's going to be pressure placed onto this man. Blast packs could be thrown in, but it's just going to be the entirety of the squad looking to just jump down upon him within those last few seconds. Well, it's not even needed. First one gets the job done, and Gen G will extend their lead. और 3 लोग वॉक करके आ रहे हैं. You know, it's a little scary because it feels like since the very beginning of some of these halves, Gen G haven't had a problem when it comes to economy. And I think for this 6-9 scoreline, PRANKK attack side, they get a decent buy out of it. And, you know, it might even seem weird if you look at the timeline. You lose the third round after winning the first 2. What's the issue? The issue is the damage done. 2 players alive coming out of both of those rounds. It meant constant reinvestment, and PRANKK now left with a Stinger and a Sheriff. Light shields on most players. Heavy disadvantages to play with. Well, I mean, it has worked because Munchkin fell into it, but not doing exactly what they It's not intended. going to cover up above. They've had to re-smoke it. Again, an explosive start to the round. Almost. I say almost. They've ended up with 3. That's exactly what PRANKK does. These fast-paced plays into the site. As mentioned, this was a weaker purchase. They had some pieces missing with that Sheriff and Stinger. 4 seconds Now को though, you spectate look करो. towards the players of Gen G. In this 2v4 scenario, Flash is already going to reveal Texture's position. कितनी They've जल्दी डॉट spotted कर Karen लेते as well. No, I हैं. say that. The peek out never really came in. The player behind the back of the site
Should have probably seen him. Now it gets a little bit more interesting. Space given to Text. Jump अरे by. नाइस मारा मारा He's been quiet so far, but God. popping a couple of heads with the Sheriff isn't going to go amiss. Well, this is definitely the time to wake up. You know, we gave the same caveat coming into the last half, and then Gen G ran away with it. But here, a challenge early on, and more importantly, a challenge with so many weaknesses on the board. I mean, this was a round where you have a couple of rifles, and what ends up winning it is a Stinger diving onto site, 2 kills out of a Sheriff to close the round out. Doesn't get much better than that. It was even a classic jumping around the corner to find one of those opening duels in elbow. अबे भाई चैट भाई कैसे पागल हो जाती है भाई चैट के साथ देखा करो स्क्रीन तो मजा आता है 8-2 scoreline. Disturbance Difference is now just 2. डिस्टर्बेंस नहीं साथ में That's पता how लगता है क्या close रिएक्शन PayPrex have managed to bring this Hard not eye onto down, their waiting favoured up. side, the B side, under serious pressure. Half the team still waiting patiently. Karan's नहीं repositioned. भाई कॉर्नर क्यों चेक कर रहे It's a TP behind him. He gets away with Oh my murder. God. Brilliant from Karan. We talk about picking this player out of ranks. He's put the rank play into the program. अबे आयरन लॉबी के अंदर तक वो कॉर्नर चेक करते हैं You're focused on so many different things. You don't think the Lunatic's going to be up top, but my goodness, what a reposition from him. And clearly one that wasn't expected on the other side. And again, we fall back into economy discussion around this squad. They've been sitting pretty, they've been looking fantastic. They were able to obviously rebuy in this round because of the damage done early on. नारुतो में जेनजी लगाया पता है They तुम्हें only really needed one of those rifles by the looks of things. मतलब मुझे कहा है Called by PaperX as they can now feel that it's getting very late into this game. We're at a stage where if Gen G picks up one more, they'll be knocking on victory's door. So, yeah, 17 and 14. He's had a great game, but I think that double kill from Munchkin, that tripled his kills. Mind Freak. I said Munchkin, sorry, I meant Mind Freak. Yeah. Munchkin's been doing well. Yeah, Munchkin's got He's been triple his fragging kills. out. That'd be impressive. But yeah, no, Mind Freak's definitely had a quiet performance. I also think something though, like we talked about the duelists in this matchup. Other than I'd say even Forsaken, they've actually all been a little bit underwhelming. It's been other players stepping up in this matchup, and I think that's really what we're seeing at the moment is the depth of both teams individually, but more so just that interplay. I think we're seeing much better fundamentals out of Gen G, and it's mostly been those explosive plays from PaperX, like going off the back of paranoia, everybody diving in together, and you see if it's even a slight bit disjointed like that round, Karan just pulls out a crazy play and is able to win the round for them. 10-7, as you said, everything on the brink here. Seekers available. On the other side, Bladestorm as well for Meteor, but I don't know if he'll use that in this round unless he sees the value. An immediate setup for the paranoia, but this is a ruse. The spike is over on towards B. Costly ruse, perhaps. Forsaken. Decay is going to fade, but he's still half HP, and Munchkin finds it too easy to deal with him. Well played shot, and he's down and out. Now we need to see the return for Gen G as another is found, something falls, 2 rifles still in play, Seekers still in play, a few flashes here and there, 1 in fact, just on Divide. Not a lot for them to fight their way back through with utility, but it's this man's position that might get them something. He's found another with the weaker weapons. This man's an animal. Oh, he's being put down. And for PaperX, they look to take it elsewhere, but those steps are heard. Meteor's in position, unbeknownst to them. You might have her trail, but, well, it's a little more difficult to deal with her cleanly. Mind Freak, the last man standing, 1v3. And Munchkin's already spotted him. He's a known quantity with a flank underway. Munchkin just needs to buy some time, back off, let his teammates take it, and gets this kill. He's got himself a Viper's Pit to play with. If he dies, I suppose. That's the thing. He's literally just playing with him because he knows that flank is coming. I really love it. It was brought up by Lack here in the halftime interview that he believes that like playing with someone like Munchkin has brought a lot of depth to his own playstyle. And you can just see the intelligence even in this round. He literally just pulled Mind Freak towards him. He had no plans to fight him at any stage. Wants to just play the higher percentage play. And that's why Gen G have been able to convert a lot of these advantages. And for PaperX, a lot of the time I don't mind these gambles, but I feel like Forsaken has been one of the sort of glimmers of hope. So you were almost going, he has to get something, otherwise it's just now a push without him going into the site. You know, the thing is for PaperX right now, at an eye test, you might think it's not doom and gloom. 11-7, 4-round gap, it's not that bad. There's a chance for them to fight back, albeit here with weaker weapons, but they've looked good there. The problem is, they've won 4 of those 7 rounds off the pistol and follow-up. Like, the injection of rounds early
early half makes this look like a much closer game than it is. But Gen G have been dominating in rifle rounds. Now they've got 4 ultimates to fall back on, up against weaknesses, but no Lakia. A big opening kill for the side of PaperX, as Heaven could now be theirs. Gen G might start to panic, might make a mistake, and with Munchkin inside the smoke isolated, that might just be the mistake they were looking for. Oh, this could be big! He actually switches away! And it's just going to be the shutdown, surely from Meteor! Oh my He god, starts off the round and ends it as well. भाई सब ये क्या 12 to खेल 7. रहे हैं, सबके सभी बंदे This खेल map रहे हैं, looking किसको सपोर्ट over, करूं? as you said, in terms of buy rounds. We've barely seen anything. 3 of them, in fact. 4, guess what, Mitch? भाई They need प्यारे 5 in a सपोर्ट row. मैं करूंगा चाहे 5 in a हार row, जाए, up लेकिन against 4 ultimates, only the Blazestorm that's gone. Like, keep in mind, Gen G have a full buy with Seekers, with a Viper's Pit, with a Showstopper from the shadows. And so that's a lot for this defensive side to close out this game. If you remove those ultimates, it looks like they'll close out the game because they're winning almost all of the buy rounds thus far. The closer rounds for PaperX have been individuals, and they need to show up individually and together. 5 in a row needed, and the challenge already underway. Ooh, okay. बहुत चल रहा था ना. Utilities try and slow this push a little bit, but the fact is, they underestimated the pacing. Lakia in the corner, but they expect it. He's stuck in the mud. Good utility usage in this round. It leaves now Karen. He's had some magical plays, but they know exactly where he is. Well, it seems so. One here goes bouncing past him. Now there is a flank, and no one really watching it, although it seems like Texture was doubting the player behind. Also a 1v1 taken, but it won't matter in the end. A 1 versus 5. Some serious mistakes needed, and Munyet's going to put him down immediately. Okay, there it is. The start of the way back for this squad. They've actually managed to deal with the vast majority of the ultimates as well. Their top Gen G are left now with just a Viper's Pit. We listed all of them last round. They got used, they found nothing. So not only winning a buy round, but winning a stacked buy round in terms of ult economy. And they've still got some left to play with themselves. The Bladestorm can help out. The Pit can win rounds. And with 4 needed, Gen G are finally seeing some negative. नहीं नारुतो ने जेंजी लगाया था पता है भोसड़ी वाला. From Lakia was not expected. Good flash too, and it's a double. नारुतो ने लेकिन मैंने तो 100 रुपए लगाया था नारुतो की. Extinguishing the flame of PaperX's early fight. This squad's going to have to go back and reconsider, surely. Yeah, I like just a direct counter. These A-side takes have been one of the major problems. Viper's Pit, although they might just about win 2 duels. A little bit dangerous. Spamming. Winning, because of that, being able to get rid of Meteor is a big pick, because that was looking like map control and a man advantage for Gen G. 3v4 है यार. Much more of a problem, and also bear in mind, Lakia is the only one who can't be healed. 3v4 नहीं 4v4 I mean, that cam there is very important. Just seeing something through the spawn, you see how much space they lost, because this Viper's Pit isn't just stopping a push, it's stopping all of PaperX's plans. Their plan was to blitz A, they get slowed, they get stopped, and now they have to go back and re-clear everything. Even if there's not a player flanking, if they're just pushed up in B main holding that aggro intel, you're going to find it very hard to actually dive in. Now this TP is to B side. Up top, it's going to be broken last second with something down below, spotted and taken down. Gen G have the advantage. They're going to challenge Munchkin inside the pit. And what a mistake that was. Welcome to his world with Munyet, the last man standing, and a free kill presented. He's got 3 more to go. 15 seconds. He's found the 4Ks in the past, Dom, but this would be exceptional. Good luck to you, and good night. Yeah, it just wasn't enough there. And the fact is, the running through of that Viper's Pit with the spike, they needed to clear that man out immediately. It did not happen. Wow. नारुतो कितना जीता? Losing both pistols and only losing 8 rounds. What a performance for the side of Gen G. नारुतो ने बोला था, मैंने बोला नहीं, रिस्क नहीं लेना. Highlighted again and again. There was a big talking point, not just from the desk, but even from the team themselves when they were being interviewed. And he comes out fragging. The calls were good. We had some good fake plays, but at the end of the day, this was a Gen G map. 13 to 8 doesn't sell it. This was convincing. And now they move on to their pick of Lotus after this. नारुतो कर क्या रहा है भाई? मैंने पहले मैं सो के उठ पे गया भाई, नींद में था मैं. देखो सिद्धार्थ छापा बोल रहा है, विकी को ट्रैक कर दिया. आवाज आ रही है? कितना झूठ बोलता है ना तू नारुतो. Yeah. Hey guys, it's Jimmy Lin.
मुझे नहीं लगता सो रहा था, सो रहा था भाई। किसी और को सुला रहा था ये। नेक्स्ट मैच की प्रेडिक्शन भी अंदर ही अंदर हो जाएगी, जो नो जिंक्स भाई। नारुतो तेरा पैसा डबल हो गया भाई। मैंने लगाया नहीं है ना, मैंने एक पैसा नहीं लगाया, मैंने ब्लेड के लिए लगवा दिया था। ब्लेड डीएम देख, ब्लेड डीएम देख। Red Bull gives you wings. आज सेमीफाइनल है क्या? प्लेऑफ का सेमीफाइनल। अच्छा ये तो देखो रील दिख रही है क्या? किक ऑफ का सेमीफाइनल, रील भेजिए, दिख रही है फाइनल होगा। 2 मैचेस रह गए बस फाइनल के। आज का फिर 2 दिन बाद का नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। डिलीटेड बाय ओनर। चल अच्छा रुको जरा तो। ठीक है देखो बात देखिए। If everybody jump right now with the world crack, feel the bang in your head like it's whiplash. Can you feel that? All this back and forth to be free. देखा क्या? But you can't tell me what's good for me. If everybody jump right now with the world crack, feel the bang in your head like it's whiplash. Can you feel that? All this back and forth to be free. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good. Everybody moving scared. Don't know what the answer is. Told myself I say the word. वही बंदी है। Like a prophet did. Shit just feel like stranger things. Upside down and overwhelmed. Chaos just और सिर्फ 2 दिन के अंदर निकलवा लिया। Seeking answers, all I found is you. Look, man, I don't know nothing. I don't know nothing either. All I know, I'm doing what's right for me. That might not be right for you. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good. If everybody jump right now with the world crack. ये कहाँ से पकड़ के लाया? क्या? बच्ची कहाँ से पकड़ के लाया? क्या बोल रहा है? बच्ची कहाँ से पकड़ के लाया? मैं बच्ची कहाँ से पकड़ के लाया? ये बच्ची है? नहीं मतलब बड़े साइज वाली बच्ची। कहाँ मर गया बैंगलोड़ा? Hey guys, Next Mika match का Fans here, prediction and भी I'm कर with दिया Solo है। and Jen here to Let's help go, with guys. some GG, translation. bye-bye. So Solo, of course, a lot of teams talk about how Paper Rex is a very shocking team to play against if you don't know them well, but Genji does know them well. So how do you as a team dissect their style? 페이퍼렉스가 익숙하지 않으면 그 플레이 스타일에 상당히 당황하기 마련인데 좀 젠지 같은 경우에는 페이퍼렉스 스타일에 대해서 충분히 잘 알고 있고 잘 분석이 돼 있잖아요. 페이퍼렉스를 상대로 좀 어떻게 경기를 풀어나가려고 하셨나요? 일단 페이퍼렉스가 진짜 많이 공격적인 팀이다 보니까 피지컬을 앞세워서 게임을 많이 하는데 저희 또한 피지컬이 지지 않는다는 생각을 하고 있거든요. 그래서 저희도 역으로 저희도 공격적으로 하자는 식으로 많이
얘기를 많이 하고 있고요. 그런 게 좀 잘 되는 것 같아요. 네, 저희가 피지컬이 좀 더 좋은 것 같아요. 지금은. 네. Of course, PaperX infamous for their W gaming, but I feel like Gen G players can match up to their firepower as well, and I feel like we're shooting more heads too today. So we just came into this matchup with the mindset of, you know what, fight aggressive teams with aggressive attitude. You know, don't be afraid to take those fights, don't give them too much respect, and I feel like we're just having a really good day overall. Yeah, it's looking really good for Gen G, so thank you very much. Let's see if they can close this out. It's not just a good day, they've had a great tournament so far. I'm Yingsu and I'm back here with Mimi and Hypok. You heard it from Solo there. They're confident, they're hitting their shots, they know how to deal with PaperX. And Mimi, it's not looking great on the other side. Yeah, to be quite honest, I think that Gen G looked like a better PaperX in this game, right? They had the ridiculous individual moments, they had the pop-ups, but they also had excellent fundamentals. You could hear the info these two teams were getting on their defense with the Sky Yuto. Gen G was always on point with the rotation, setting up break clears, swinging together, whereas PaperX looked like a team who was, you know, playing for the individuality. Yeah, and the telling thing for me is Gen G willing to step into that zone with PaperX, where, you know, you have the flood retakes or, you know, stacking up bodies and looking very aggressive engagements. Gen G were getting down and dirty with them. I'm kind of coming out on top. Yeah, you guys are hyped up the rookie Karen coming to this a lot, and here he is in the Verizon high-speed moment, round 17. I mean, you gotta check your corners, man. You gotta check it. This is exactly the sort of scenario that I'm talking about, right? Making plays like this, getting ahead of this execute. You lose to PaperX when you allow them to execute onto you, come up, play very aggressive. And Karen, I mean, Tom nailed this as well, the cast. This is sort of rank play that catches PaperX off guard, because they don't expect people to match their level of unorthodox. I think that's exactly the point, right? They're used to teams playing back, cowering in fear, playing for flood retakes against a squad like this instead. Gen G can give it to them. They're so willing to get proactive, to fight into these executes, and their site anchors were constantly staying alive, doing stuff like that, and actually buying time for the team to rotate over and help everyone out, which you contrast that to PaperX. Their players were trying to do the same thing, and they were getting owned by the executes. Yeah, and you saw it in the vibes as well. After every round, they were giving it, they were shouting across the stage. And on the other side for this, for PaperX, as we take a look in the AIM Lab shoot-around, Monyet, again, he was kind of one of the players we were really looking forward to watching, but what else has he got? I mean, he was looking pretty deadly at the start of this map here. Again, super aggressive, almost like in the pistol round, he forgot he was going to the open. Still on the race for some reason, jumping in. But there's just a number of situations where you're looking here, and I was talking about, you know, some of the aggressive plays the PaperX made. They felt very disjointed. It felt like it came down to one person delivering at the end of that sort of play, as opposed to the typical PaperX, too strong on the front line, fragging together. And I think that's exactly it, right? Like, this is a team that can rely on those moments against lesser teams, can rely on those moments against a team that's not familiar with them, but Gen G knows them so damn well. They're used to dealing with these individual plays and not letting it get past them. I mean, we've been here before. I'm not expecting a smile from this man, but I am expecting a solution. Let's hear what Alex had to say ahead of map 2. Hey guys, I'm here right now with Coach Alex of PRX. So we did see that, you know, although the team struggled on that map, once the side switch and PaperX was on attack, you got some of that momentum back. And we do know that the team is a very momentum heavy based team. So what do they usually need to hear, like maybe from you, in order to get that push, in order to, you know, get that swing into their favor? I mean, usually momentum comes when you win some rounds, you know, so I try to just figure out how to win the round. And then if it goes well, you know, we can snowball. Start why लेना start होगा. Make sure that they get their nerves in check, yeah? I guess so. Yeah. Okay, let's see if PaperX can wrangle in those nerves and get map 2. Alex, you've done this before. You made the comeback before. Come on, boys. I want to see them have some fire in their bellies. Dude, Yinsu, we gotta get you down there. They need this energy for map 2, or they're gonna be in the lower bracket. Looking at this comp, what is this, Mike? The 4th new comp they've played on this map. Yeah, we've gone back again. We've got the Cypher back in, and Monyet back on the raise. So I guess maybe then indicator we did see that on split. He's going to be the front man here on Lotus. This does fix the issue of having these flanks open. It fixes that issue. But I think there's another issue in this comp. You're lacking stall util, and on the attacking side, you're way more readable because you only have one piece of smoke util. I think that Forsaken is going to have to be very specific with how he uses his cages to make up for not having this Viper. And the big concern last time actually is that eyes go towards Divide here. His inability to really have impact alone on his utility
versatility and opening up opportunities for PaperX in the mid-round was absolutely, it was absent last time with the Astra comp, so really going to be scrutinizing him. Oh well, PaperX, if they don't win here, they will be going into elimination on day 1 of playoffs. Mitchman and Tombiz, how are you guys feeling about this one? Well, Yinsu, I'm feeling excited because at worst, we should have a good game on our hands. Last time around, Gen G won both pistols here on this map, and it was still a very close game with them barely edging it out 13-11. Now, Tom, they come in with momentum on their backs and a map that they've put the prep into. For PaperX, it's looking like elimination might be on the line soon. I don't mind the change back, because obviously this isn't the comp they played last time, but it is the comp they ran versus Heretics. I think it's slightly better for them overall. Still has something on the Jet as well, because they had a similar comp to this, but with him on the Reyna. I think this just allows him to do more damage. I like the start though from Gen G. Oh, okay. They had that 3-man push initially. Didn't expect anybody to still be around the angle, and because of that, they've lost the first. One man down already. The rest are rotating into the right spot. Is good from the side of Gen G as they move to the site. Here comes PaperX diving a little quicker than expected, but there's the return. They're not expecting this many players to be on that defensive side already. Anchored down, and they're winning the fights. Leading the fight all alone. The 1v2, good damage done, and the follow-up, and he's out of ammo. Oh my! He brought a knife to a knife fight. 3 kills already. Got respected from Karen. He's like, you know what? I'm not gonna be. Troll I'm not gonna go and reload. I'll take you in the 1v1. Well, I'll win it out. And that. What the fuck? That was again. We talk about the advantages and their conversions. What was that? 5v3? Hello guys, good night. मेरे को अब 1 उठ गया है. Entry, and then they don't convert the round. It's good work from Gen G, but you always have to look at PaperX and go, these are moments that you expect them to be able to convert. Not the start they were looking for. And again, we're going to see the same proactive approach from the defense, constantly looking to garner extra control. PaperX, they're going straight into the site. Oh yeah, look there. Tell that as soon as Munya picks up this agent, and well, he very nearly died to the turret. Not a good start, but Spike should at least be plantable. चलो चलते मैच के अंदर इतने बड़े अंदर ऐसे ट्रोल थोड़ी करता है भाई position. It's only deducted about 10 HP or so because he was so low. And the problem now is you have to fight back through all these close range angles where PaperX have the numbers to play with on a lot of the fights they're going to take. Decent damage on the headshot, good follow-up, and then it's the house for Gen G. 2 players lost. Yeah, could have been much worse. Interestingly, yeah, something wise shielded that round. So maybe hoping that they could get a kill and he could steal the gun away, but doesn't come to fruition. Texture as well is one off a showstopper going into round number 3, so especially on this map, it definitely is a little bit more difficult to challenge for those orbs, but it might mean that we see a bit more of an aid push, an opportunity to find something there. Well, this is where we are going to get the investment, which you'll be happy because Forsaken is already bringing in an Odin. Listen, he's a wise man. I've always said that, Tom, and he's just proven my point, isn't he? You won't expect this off rip if you're Gen G, and a little bit of danger for Texture. That crosshair's lined up on his head, and it's done some damage, some serious damage by the looks of it. Down to 77, Texture's Takalaki has dropped. And we can continue on with this map. Heals for most players. Divide the only one to stay quite low, not having anyone to bring him back to full fighting health. Something को खेलना है. Something jet चला हुआ कुछ नहीं है. Spot by Karen shouldn't be left unchecked. There's still a flash on the buy. You expect that to pop as they move forward. No, in fact, it's just a double swing and the same thing there. Exactly. Clean trade for PaperX. This is going to be fight after fight. Meteor now has to try and pull off some individual brilliance as well. I think a little bit too predictable on when he'd make his move. Munchkin on the other side of the map, and the thing is, he could just hold this through to the next round, but I don't expect him to. When there's an opportunity to have an upgrade, maybe take a gun away. Something मार देगा उसको. Oh, indeed. I mean, not a position you're going to be clear all the time. Done well to start. Player close is low. And Mind Freak, both playing without
shields and with a bit of dent to their health. Forsaken also with no shields and no head anymore. This is getting very costly. The attacking side with Munchkin not stopping anytime soon. He's already picked up 3, and now he's quickening his pace to the site. The time is so desperately low, and he doesn't know where Devi is. The element of surprise gets Paper X the kill and the round. अरे हम लोग PRX की तरफ है भाई. Everything. Absolutely everything. Every single gun just goes for overhunting a player that was going to have a gun in the next round anyway. Like, I understand wanting to earn those extra orbs up, but this is one hell of an overextension. Just constantly fighting versus a player that had a bulldog. Munchkin, wow, you can already see him smack talking, and well, it's not the only thing getting smacked. Round 4, and there's going to be a real challenge for this attacking side. Weaknesses already seen. Guys, PRX लगाना चाहिए PRX. Shut down. Map को PRX PRX very early on. You know this is a map that both teams Match किसका है? Match किसका है? contention, but Map with Gen G, ये map है having done that extra PRX work on it, season map picked it into this series. I can this. I can this. Paper X. Money. It's early times just now, but I with can do. showstoppers Nah, on nah, both squads, I can we do. knew this was coming. Munyet's on the way, head caught on the arch on the way through. It slowed him down enough and actually bought some time for Meteor to escape. And for Munchkin to round the corner, no one's going to go down to that showstopper, but it's claimed a lot of space. Yeah. Oh, they don't realize how close. Oh my God, Karen is. मार He दिया had to इसने. move because of the tiger. Monya's going to try and aggress. मत This पुश is कर, risky. मत पुश, ठीक लो Multiple players on the other side. Showstopper, he should be dead. He actually almost manages to catch one. Even still, though, for Gen G, this is looking fantastic. Timing couldn't be worse for something either. It's going from bad to worse for Paper X. They need to find a miracle through these spams. At least been able to get one, but they don't have players still on the spike. Second power definitely helped them out, but it's Toad just going through. Too many bullets to dodge there. But Gen G, they break back चल immediately. Gen G पे लगा दे Well, मेरा. we mentioned Gen G they're वही losing Gen all their players. G So वही it's Gen gonna G hurt. always Gen G. Yes, it absolutely is. Now you see the नहीं यार मुझे इस बार से butterfly फीलिंग आ effect रही of है. that. कर मार रही है Gen G बहन की लड़ी ऐसे खेल रही है कि अभी जीत के निकलना है उन्हें. And then the chaos after गिरे that. जो रहे. Every time you saw Paper X turn their crosshair towards an angle where they just see someone swing, they just lost a teammate, they get shot भाई मेरी तो back. रही That's ले the बस. exact timing that Gen G क्या? moved the retake on all यही तो ले sides. मतलब Gorgeous PRX stuff. की तरफ 3-1. Odin भी. being kept through. Baby Lakia ना? going way up in my estimations, let me tell you, buddy. And the spams, well, they're not having too much success. But they don't need to. PRX Because now for Paper life. X have basically nothing to play with. PRX Four मुझे shares. दो टीम में तो पसंद है मेरे को बिना एटीट्यूड के अच्छी तरह खेलते हैं That's the main reason. बिना नारुतो नहीं हम लोग बहुत सारे. Aggressively सब कुछ नारुतो है भाई. और नारुतो तो आज Gen G को भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि Toad and elsewhere. पता नहीं मैं First वही covered door to वो spam. मेरी They पहली are नहीं able ले to a सकता. couple of angles, but अमन भाई Gen G को एक बार That is the तारीफ कर दो एक thing. बार We've बीट seen कैसे this रही है. भाई Gen G ही scenario जीतेगी many a तो time. टेंशन Find a मत kill, ले. TP back. हाँ, Karen is यही excellent चाहिए at था knowing when to reposition as well. So लगा दे सट्टा लगा दे Gen G पे. हाँ लगा रखा है भाई. But this is टेंशन क्यों ले ambitious. रहा है? Where is he going? Where is he going? They might He's made it just be about holding around on that it. corner, but well, that was risky. If they came स्ट्रीम अटक रही है. ए लेग क्यों आ रहा है स्ट्रीम? भाई क्या यार फ्री पे तो थ्रो कर रहे हैं. through that whole time, थ्रो कर रहे I'm हैं. not sure. नारुतो अपना नेट टिक करो. नारुतो नेट बहुत अड़ेगी. नेट सो गया वो. हो गया हो जीत गया. गई. अरे बाहर That है would have went the way बाहर he was हो गई thinking. बाहर हो गई It's PRX. very good for Munchkins and now. चल ब्लेड वाह. 2 कर दे. अरे ब्लेड 2 कर दे इसको कर दे डिस्कनेक्ट भाई करो जल्दी भाई. कर जल्दी कर. ब्लेड कर दे. क्या कर दूं? स्ट्रीम. हाँ रुको करना होगा. अबे नहीं कर सकता मैं कुछ और कर रहा हूँ. अरे तू को सामने करे क्या सकता है. दूसरा पीछे अब पे इसको उठाओ भाई ये जिंदा है ठीक है अभी 1 मिनट पहले मैसेज कर रहा मुझे. हेलो टैग करना नारुतो को. तो कॉल करके आओ ना ये जिंदा है. अरे सो गया वो बोला तो. अरे नहीं सो रहा वो एक्टिंग कर रहा है अभी भी सुन रहा है अपनी बातें. अरे नहीं सो गया है वो. अरे मेरे को उसकी हरकत पे पता है मुझे मेरे नहीं को उसका मैसेज आया अभी 5 मिनट पहले. सोने चला No गया. chance for Paper X here. Of course, we did mention they have मुझे हरकतें पता है ना इसकी. चैट क्या बोल रही? Imagine getting wrecked by a dude named Munchkin. Just pack it up. those weaker weapons. They don't have a lot to play with. अरे भोसड़ी की कोई और लाइक करो यार ये कैसा बेंचन.
सलामन तू ही कर। मेरा कॉल नहीं उठा रहा, मैंने कॉल कर किया। दो यार, तुम लोगों की करते हुए भाई मेरा लैग होता है स्ट्रीम में, कर तो तू। नहीं कर पाऊंगा भाई, कॉल कर रहा हूँ। It's feeling reminiscent of last map, but it is still very early days. Plenty of time for PaperX to find their footing. They don't want to waste. तो भाई मैं कर देता हूँ, देखता हूँ तुम लोगों को क्या चीज दिखाई देती है। Time throwing rounds away. They've called a timeout. That's the funny thing. We might actually. मैं क्या लाइव करने के लिए बोल रहे हो क्या? हाँ। अच्छा लाइव के लिए बोल रहे हो लोग, मैं We कर can दो just लाइव। highlight when Genji does. मैं देखो उसको कॉल करने के लिए कह रहे हो ये लोग। Don't have money. Yep. So we'll just save time. Yep. Full screen. Yep. It's the play. They've had it the whole time throughout the series. Nice. जनजी पे लगा दो, जनजी पे 2 लाख लगा दो। Winnable. भाई पेपर एक्स पे 8x मिल रहा है, किसी को उम्मीद हो तो लगा दो। पेपर एक्स ने 4x पे लगाया था। भाई मेरा 100 लगा देता हूँ, मैं दे रहा तेरे को। अबे मन है हारेगी पेपर एक्स। अरे 100 ही तो लगा रहा हूँ। मैं तो लॉस ये राउंड पे नहीं भाई, मेन पे लगा। अबे मेन में पेपर एक्स खेल रहा है। हाँ भाई पेपर एक्स ही। हाँ यहाँ चुकी पेपर एक्स ही। मतलब ये दो राउंड के, मतलब ये दूसरा राउंड चल रहा है, मतलब दूसरा मैच चल रहा है। राउंड होते हैं, अगर ये राउंड PRX जीतेगी तो तीसरा मैच होगा, लेकिन अगर ये जीत गई तो पता नहीं होगा ना। और मैं अभी बोल दिया कि PRX जीत भी गई ना। This is one of those things as well where Meteor's in a 2v2 scenario. The amount of times I feel like I've watched him just get both kills and his teammates still ready. He's just so confident at this stage in his individual ability, and even just ducking under where he assumed his opponent would be holding. That was again another big round for PaperX. A lot invested, even having some decent early trades, but it isn't to be. And now, well, Bladestorm is really. नहीं मैंने शुरू में लगाया था, मैं बनाना चाह रहा His था। initial play almost goes down. Come on, PRX, wake up. That singular bullet fired by Texture. Yeah, the thing is that's sending them elsewhere. Forsaken was trying to claim some space by sneaking through. We saw good success for that. I think when Yet on the previous map was thrown at a few of those little feelers. But the idea now is you can't play up against that op. This ain't the round for it. Your Bladestorm's already gone, and everyone else has pistols. Close range, numbers advantage is the way to go, and they've done it. At least trading out the first. Karen, though, he has been consistent every single time they've challenged him. This guy's coming up with multiple. 7-2 right now. Teammate ready to swing, and luckily because Karen was dropped very quickly, so too is Meteor. Hell, it's winnable for Divine, but his knife was pulled out. Tried to evade some spams or some players emerging from the smoke. Unfortunately, he jumped right into their crosshair. 6-1 for Genji, and 4 ultimates online coming into round number 8. दिख रहा है ना? पूरी मैच हो रही है अच्छे से। दिख रहा है ना dominance? Again, PaperX have made some of these rounds look somewhat competitive, but Genji are consistently able to close out the late round. Again, as you said, ults are in their favor, finances are in their favor. There's at least a lot coming online in this round for the side of PaperX. Counter operator going to be invested into on something. He has had a very quiet start to this game, and a reaction shot from Texture already puts down Munyet. You see the idea as well? We see the aggression, we try to take space elsewhere. Denied on A, because Genji are getting aggressive, giving PaperX a taste of their own defensive medicine. This is a really good start with 4 ultimates to fall back on, 3 of which will help you out if you're in a pinch. For PaperX, where do they go? Where do they take it? Maybe they can get a neural theft, if they can even drop a body. And they cannot. A wall bang kill with the Odin from Lakia. That's something dropped. That's the op down, and he's looking for a little bit more. I don't know where they're going to take this on the attack, but I think I know what the result will be regardless. Forsaken's been quiet as well, and reposition. Nice shot at least. My God, a little bit more interesting. The reveal as well will tell exactly where their opponents are. Knowing there's only one player here, the turret though, keeping things disruptive. And Meteor, again, full sprinting to help his teammate out.
It gets close for a matter of seconds, but Gen G continue their utter dominance in this match. 7-1 on the defense. I don't know, yeah. हाँ Second भाई call's gonna be confidence called for तो वो PRANKKING बोलते at this we point. didn't even I try. feel like they're running ये out of मोटा ideas. बोलता I we also didn't just did even tidbit try. as well. Last 3 times. मतलब गाँव वहाँ के जाते हैं मतलब Yeah, played कांटा and मारने won का this मन कर map. रहा है मेरे को 8 rounds on attack, 9 rounds on attack, 9 rounds on attack. मेरे को इस चोदू को Let's पिटते हुए 7-1 देखना है up on भाई defense. सेंटिनल से भरोसा है मेरे को बस तू भी आए No, मैं भी no, आऊँ I और would सब say लोग that's यहाँ पे very bad. अगर ये If जेंजी you're a जाती है PRANKKING, फिनाल quite poor. सेंटिनल से Yeah, जाती and the है reality is for सेंटिनल PRANKKING, हारी looking at यार the last नहीं time they यार played this map सेंटिनल against जीत नहीं Squad दिया again. यार I was looking back at that series, सेंटिनल which worked perfectly for me सेंटिनल today. इनसे It's the same maps. But the funniest thing is, तो जेनजी का तो बहुत वैल्यू बढ़ जाएगा भाई बिना हारे इतने मैच अप गई है एक भी बिना मैच हारे बहुत अप जाएगा वैल्यू किसने बोला सेंटिनल तो हार बिना हारी compare that to split. नहीं मैं कह रहा हूँ जेनजी अगर अभी जीतती है तो भाई बहुत खतरनाक इनका जाएगा पता है बिना हारे तो भाई ऐसा ना जेंजी के इंडिया के अब इंडिया की तरह हार We haven't seen those dive plays as consistently. At least that hasn't been the मैं चल रहा core हूँ of their भी attacking मत side. बोल The problem is, इंडिया how की many तरह rounds हार have we होता है seen where फिनाले जाके literally 10 to 15 seconds in, it's 3v5. अरे वो No 4 control, सेकंड तक no चोमू benefit. था भाई One guy goes down, they push somewhere else, that guy goes down, अरे then they नहीं sit there with 4 nothing to do. सेकंड ही Think about PRX the में spots that कंसिस्टेंट Gen G प्लेयर are है also willing और to वही claim. खेलता Like they अरे एक pushed out दूसरा 4 2 सेकंड players बोल in रहा था all भाई the इंडिया last वाले की बात round. कर रहे हैं They CS:GO weren't even वाले की holding the deep CS:GO angles की anymore बात because कर that रहा was था the point. वो And तो they मुझे push पता and है swing for 2 players in the same round. Yeah. Right? So वो like, this is the बदनाम thing. करके You आया can था peek your पूरा head out and go, oh, are they rubble? Yep, they are. I'm dead. Yep, they're Right. everywhere. ओ Now भाई over there यार we have सेंटिनल no से पूरा advantage. भरोसा 10 We're जिसकी playing मौत from होती है behind. टेक्सचर It की looks like बैंक they से उड़ेगी are. Insta smoke. B control being taken by 3 players. Just waiting to see if Oh, the push will nice. come through in that direction. It's going to allow them the fast take back of this control. Paranoia immediately put through. The trade's not awful in the beginning, but they quickly divulge into nothing for the side of PRANKKING. Tries to claim it back though. Finally he comes alive. Well, this is the round that he needed to wake up in. That spike is theirs, and they can walk it straight to the C site once that door is closed. अरे यार नहीं यार 16 HP, Mind Freak on 42, but Texture's got an op and an aid. And there's a snake bite left. This could be very, very dangerous indeed. अरे For भाई now, though, Texture's not deploying the nade. Instead, sitting down. Op in hand, 16 HP, turned to 0. Nice shot with the operator. His Mind Freak now is a nade below. He's safe. Up top, he's got the angle. Could even pick off Munchkin. That could make it winnable. But Texture's a little too quick. I love it. I didn't think he could fire off that quick. It's just like, he's got an op. भाई ये क्या हो रहा है As a भाई negative, and then it's like, no, never mind. मैं सच बताऊं उसे देखा नहीं जा रहा यार PRX को We're ऐसे quick पिटते scoping हैं now, but that's the level we've भाई hit. इतना For पीटी Gen G, इतना पीटी हे 8 भगवान and 1, Tom. Yeah, I almost wanted to say coming into this map, well, it can't get any worse. It just has. It was 8-2 at least last time. ये तो यहाँ के कोच ही शांति से है बहुत बढ़िया खेल रहे Like a golf वहाँ पे class, कुछ which अपने माता again, पीट रहा है considering this is the number 1 and number 2 from the same region, that we've already seen them play a best of 5 series. That was a 3-1, and a lot of the maps were close. It looks like Gen G have leveled up, and for PRANKKING, I don't know if they've fallen off, because that's looking like the difference between these two is not the same we've seen before. हर की All PRX 5 ultimates, by the way. Gen G don't need them. That's actually the point we're in. They don't need the ults. They're just winning the rounds anyway. Normally you'd be thinking at this point, oh, let's just throw one out just to see. There you go. There it is. Okay. Cycle the economy a little bit. Here comes the big rocket, and it's not landed. It's not found the value it needed to. Lockdown has been destroyed, and Meteor was tagged down quite a bit. That's the value, right? That's the value. They got rid of the show. They got rid of the lockdown. So they can at least claim some space. He's screwed. There's no way he survives that. It's a little messy. ओ नहीं It's giving PRANKKING a chance, Tom. They haven't planted the spike, but they don't need to if they win these fights again and again, and they have. Lakia dropped, leaves Munchkin. Chat पता क्या बोल रही 1v3. If he wins this, I'm putting the headset down. They've got decent amount of HP and they've lost Mind Freak. Okay, but it's all right. They've still got 2 players, no utility to play with. मेरे को क्यों लग रहा था They've got to just take these fights, not one at a time. That's the only thing I beg of you. Not one at a time, not up against Munchkin right now. He's 11 and 4. He's been winning round after round, but a reposition by Forsaken. The swing is good. And the double peak wins the day, 8-2. Deja vu for PRANKKING. Well, Gen G got to be feeling confident. The good thing is they used 3 ultimates there. Yeah, that's what I mean. They lose the rounds, they use the ults. That's the weird thing about it. And again, a lot of this just came down to
some brilliant individual play from something, finally putting a couple of kills on the board. The fact is they did peek Munchkin individually. First player peeks, dies, second gets dinked, and it's only finally they reposition. I think we would have needed a guess completely for Alex if they managed to lose that round, but it's scary that it even got close. Just get rid of the desk, man. Punch and bag with an LED screen. Whose face is on it? Depends on the game. Make it interchangeable. Well, Forsaken's picked off Barrett. That's a fantastic kill. Look how open the A side is. And they've made that realization. There's no further challenge. There's no utility. There's no reaction from Gen G. So Forsaken realizes it's wide open and he gets caught by Lakia. That timing was near perfect. Well, I mean, you call it a mistake. At the end of the day, he was open to like 6 angles, so he has to just be clearing those, constantly being paranoid about them. The site, though, is lost, and PaperX will find the plant nonetheless. Showstopper online, not wanting to allow them to set up. Something's going to try and get aggressive, but it's not going to manage to land the shot. Now, I think the flash through the back might have actually caught Munchkin, so he's going to actually reposition through B instead. Nice. Move away from the flank position. It's open. I think it's because Devine's having to check too many angles. The Seekers at least will give it away. Showstopper has been thrown in. He might get caught by all of the Seekers, but his teammates got his back, and that means he'll be able to kill off Mindbreak. Nice. Players a bit of an obscure position. Munya has not been cleared yet. Because of that, he's going to be able to deny the defusal. The spam doing so much damage, and now it's all on to Devi with an operator. First shot missed, but he just needs to kill the guy defusing, and he's done enough. There's no time left. Finally, PaperX pull out the miracle rounds we've seen from them, but everybody will go down with the ship. Well, it's the same thing as what we saw before, Tom, right? They're getting this little resurgence towards the end of the half. This time, PaperX didn't have the pistol to help them out. They weren't both on the previous map, putting them up 4 rounds, and they ended on 8. But here, they're doing it on the rifle rounds. They're doing it in the clutches as well. As close as they may come, it's still giving them that little bit of a heartbeat to continue on forward. Now, this round, the last of the half, Gen G come in with a Viper's Pit. That's going to be a problem to fight through on the defensive side, or potentially a very strong tool for retakes. Man, it's scary when it's a Red Bull clutch that gets you your 3rd round, but as long as they're getting the rounds, I don't think they're going to mind too much. This battle is now changed. It was previously Karon being solo, and now it's Texture, and his operator has been fierce. Looks like they're going to go back into it. Is there a flash? Is there anything? No. No, it's just a dry, wide peek by Munyet. Players up top looking to trade, but Texture's out of the angle too quickly. PaperX have given him another shot, and it looks like another bite of this apple. As around comes another, but finally the miss is there. Texture gets the reset though with low HP. He's dancing around, but he's being caught. There was no escape this time, and with Lakia falling, a real chance emerging for an 8-4 half. It looks like PaperX have finally woken up. They've found some punch to be packed. Let's see. Meteor's on his way in. Up close with a teammate further away. Munchkin's making a lot of noise. They're trying to find an angle to deal with him, and instead running into Meteor. Well played. Now they can group up and try to force this 2v2 with the Viper's Pit. That was a little scary. Thought Munchkin was about to be spammed, but now they've got a lot of space as they close in the distance. No snake bites to play with though. That could help out, keep them way out of this pit, and with Munchkin falling, it's done. PaperX 8-4 at the halftime. They found some legs to stand on, some foundations laid. But the second half will be tough if they lose the pistol. Yeah, it's almost identical to what in the last half. A streak of rounds, that's just disgusting. I was thinking from Forsaken's point of view, I didn't even really see anything. That's how good Texture has been. But again, it's those player deficits that are actually what turn the tides over there. Well done from PaperX to at least get something. Well, Tom, it's time now to toss this one over to Devi, who had some words to say earlier. I think it's like a stressful game. I feel like, for me personally, I feel like we are playing against ourselves because the way they play is kind of like similar, you know. I mean, trying to outsmart them. I mean, they were very good. I would say they are smart.
and they kind of like one step ahead, especially on Lotus. We kind of like they did exactly what we were watching them, like in the VODs, like they play the same, like they are not scared, even though these like, I think for some of them it's like their first time in Masters. And yeah, I mean, very surprised with how they actually perform. Yeah, you're going to be put to test, put to task. Oh, that's rough. Blinded, and Monye just popping off. Yeah, farm him up. Even spotting the right there. Over towards Shybox. This guy's on for it. He's absolutely on the money today. GG Gen. I mean, the good thing is probably we might be able to get some revenge, you know. I mean, क्यों कर रहा in है? the Pacific. अरे डीले के चक्कर में kickoff पीछे and चल रही yeah, हो. I mean, I think Texture is giving us a lot of problem, like just killing us, like punishing us over and over. And also, Karon was playing insane as well, even though he's a newcomer. But I think he's probably like the top player in the league. I think he got MVP as well in the Pacific kickoff. And yeah, I mean, maybe we go back and cook some strats to cook these two. देख लिख रहे हैं PRX go sleep. Has certainly been cooking 15 and 9, exiting that first half with the next closest player being something. Pretty good player, pretty well respected. He's got 6 kills, almost a third of what his teammates rocking. It's been tough for the side of PRX. They haven't found a lot of success, but that little 3-round streak to close out the first half, Tom, it's given them a chance here. We want to see them take the pistol though. Yeah, we want this to be a competitive match that it definitely has not been. Gen G are looking like a competitor for the crown, and thus far we haven't seen the PRANKKING that we know and love. This pistol round might just be a deciding factor, but a great start from Monyet. Already pushing aggressively on the other side is something waiting. Someone to make their move, and he's going to go back for a little bit more. Has to use the dash to get out of there, and is now waiting for the cavalry to arrive as the rest of the team somewhat far away. An opportunity, but Forsaken with a good trade. Keeping the numbers in their favor. Something needs to do a little bit more. Nice Done some damage, and there's the follow-up. A shot right to Texture's temple. That's going to put us in a 4v2 with PRANKKING. Definitely favored to take this pistol now. Forsaken, Fallen. A little bit more of a chance. Something, though, delivers. Okay, he's up top and not spotted. Easy peasy. That's a 3K for Something. Looks like even he's starting to heat up. That's exactly what they need. Just him having confidence. Because you look at some of the fights he's taken, and there's definitely risks about it, but that's always been his playstyle. Even on a get-go, he's basically an op main, so then get the finances built up early, get the orbs rolling on the duelist, which is exactly what's happened thus far. जिसने starting में PRX अगर लगा दिए होंगे ना 11 next तो उसके तो बाबा वाली रहेगी. This game can definitely slip back. As said though, for the majority of the matches we've seen, mostly in Pacific, Gen G have been much more consistent on their attack. Finals में तब तो पक्का Sentinel versus PRX होगा. Was essential for PRANKKING. Now the follow-up looks easy. Very little to play with for Gen G, and even if they drop Something, he's the player that's rocking with the pistol. So the margin for error's already been reached here. Any further kills will be costly, will force some level of reinvestment from the side of PRANKKING. But on the defense, they can keep distance, and with the buy that Gen G have, they're definitely not favored on ranged fights. Defiant will be solo, but you can see the rotation already coming out from Monyet. Jump people giving the info to go back in with that Marshall. This is a round that they shouldn't really have any opportunity to win. The weaponry not falling into their hands off the kills they've garnered, and the players they're pushing into are actually just going to start pushing into them. A good round from PRANKKING as they manage to bring things again back within 2. Nice. The fact is, it has been the buy rounds where Gen G truly have been a level above. Well, just look at your screen. Besides Something, this is a round that often you're going to look at as an eco, but 3 orbs away from a Blade Storm means he can force up here, buy an operator, and potentially have a Blade Storm, even if they lose the round. With how consistent he normally is with that op, I would definitely put stock in him finding at least the 2 orbs. 1 kill and a death. We'll see what he can get up to. It also means they can gamble the control. They've got him holding onto the A site, an aggressive position from Monyet. This is not really the gun you want to have here. Somehow,
he gets out of there unscathed. They also had an initial setup for players outside C, but after that spot comes through, fading back. Now the cross has already happened, so something now in a pretty deadly position. And honestly, I think Meteor's a little bit lucky there to even get one. Well, here's the chance for that operator to finally show its ugly face. Ugly for the side of Gen G as they lose a player right off rip. And it's Texture, the man with the responsibility to take the space to close the distance. Now they'll be a little bit slower on the way around these corners, which is just perfect for something. He had to be watching the right way, though, and Munchkin caught him unaware. The same happens with Devi, though, leaving it with 3v2. Defensive advantage, and Devi walkabouts. Looking so good. 19 kills, looking for his 20th and his 3rd of the round. And it looks like he might... Oh, he will get the opportunity, but he's being dropped. Doesn't matter, because Munyet's there to catch him when he falls. 8-7. And now this gets me excited for PaperX. That round puts them way back in contention because Gen G got an eco. Yeah, I like the way they play as well. After the initial spot, that there was at least one player lurking. They know that there's an opportunity to potentially steal a gun away. So they can 3-man push. Even a trade there's not too bad, knowing there's some things on the other side. And even though he only gets 1 kill, he does enough to delay and allow for those rotations. Devi as well, though, as you said, he's been fantastic. 19 and 10, topping the entire scoreboard right now. Something once more. They know he's going to be here. They know there's a high chance he'll be here, and they're actually going to really put the pressure on early. I don't mind this from Gen G. They have players lurking elsewhere. Trap just got broken on B. So now for PaperX, they have to be worried about the flank. It means you're not going to have Forsaken there to help with this fight. Instead, something has to do it on his own, and again, he finds Texture. That's a big part of this take. They try to seize the space with him blast packing in, but instead, being left to try and trade it out. 2 versus 3. Meteor's good position has been noted. As we said earlier, they know that trap was broken. They know there could be someone around here. It's why you see Devi wait for Mindfreak, waiting for the plant to come through, while Munyet finishes this flank. Looks like they're aware. Well, they're very much aware that something is going on. I mean, PaperX haven't made a move. Why haven't they? Why are they not trying to fight for any bit of control? And that's not something they'll find an answer to until they plant the spike. It looks like because they've spotted players near B, and they're worried about their spawn, they're actually going to go fighting aggressively. This could be a big win if it comes through. Nice work from Meteor. 1 bullet left. And nothing being spotted towards the spawn. This means they know where they are. The peek out is perfect, and he goes back with the pistol. He does it alone. Meteor's going to confirm the MasterCard Thrifty of what was looking like a round in the hands of PaperX falls to 1 man. 1 man, 1 big gun, and 1 medium gun. Also, very ambitious to go for this. That could have put it to a 1v1 top. He was, that's what I said about this guy. He knows he'll hit the shot. For some reason, when it's him and 2v2, and he goes, okay, I've got the first one, he always picks for the second. Weirdly, he always gets it. That's the thing. Every time I'm sat there going, I'm ready to critique, and then he gets the kill, and I'm like, well, fine then. I guess that was the right play. Well, uncouth, but it works this time. Certainly caught his opponents off guard with Gen G 9-7, and claiming that round. PaperX have weakness. Operator in the hand of something. 20 hours. It's not really an opping angle normally, is it? Oh, nice flash, that's good. But he hasn't got the dash anymore. It's faded out. But Munchkin, oh, the shot's missed. And Munchkin's been given a second chance at life. Well, the showstopper is again just, oh, I thought just used for space, but if he fires it out close, no, he doesn't pull the trigger. And now he realizes his mistake as the dive comes in from PaperX. They've got a lot to work with. The old Stoke should be, well, in theory, forcing them back, but it hasn't happened at all. Yeah, they went aggressive. Made this one problematic. Spike already planted at least. So they're going to have to respect it and just fall back. Munchkin's still holding, and they have a pretty nasty potential crossfire just with the amount of time that can be born. Munchkin is just looking at that clock. That's all he really aiming for, sitting back, waiting for the push. He manages to land the first, almost onto the second. The PaperX respond in turn, a back and forth so far in this second half, and they close the gap once again to just 1 round. अमन को बोला था मैंने PRX पे लगा दे.
this map. Indeed, this series would have killed something and he just shot the bullet. मत लगा बोलते थे 8x होता तो 800 रुपए मिलता था तो अभी बेंच जीती थोड़ी ना You make a decision there. Do you gamble it? Do you not? And, well, he chose wrong. Chips on the wrong color. Well, 9-8. And for PaperX, it looks like they've really got their hands dug into those reins. The economy is low. We've seen Gen G put up 9 rounds. There's a Viper's Pit online with 1 kill from Munchkin, 1 orb, 1 plant. मैंने नहीं देखा ना इसलिए तो हराते हैं He's got basically an also Yassine dash. But it works out for him, no punish. And the reposition gets him another kill. Swing out, hooking in to the side of PaperX and closing the round in just a second. Blink and you miss it as we're 9-9. Yeah, they have somehow made this comeback happen. 5-1 in this second half after what was basically, we were at a scoreline where this looked over. What was it, 8-1? And then they went 3 rounds in a row. And that's the thing. You don't really think it at the time because an 8-4 half is still great, but it seemed like Gen G just let the foot off the gas. A few big plays coming out. Now we're starting to see players rise up. You were mentioning it, the distance between Devi and everybody else was a lot. Well, something has been closing the gap. I'm also just looking at Mind Freak. Yeah, it looks like they're looking at him too. Karen was trained in on that with Texture finding a field day. 2 HP left on Devi. He'll find it hard to get any impact from this point. A stray bullet enough to take him down. But he's caught Karen off guard. The flash covers his retreat. No more flashes and they don't regen anymore. An opportunity still. No, shut down. 2 versus 3 though. Viper's pick could change the game. बोला था मैंने लगा दे. Trying to get in as quickly as humanly possible, but Meteor's there to defend. Leaves it onto something. As said, he's had a real resurgence. Fall back to enable the reload. Winnable. He's just looking to reposition completely. I think they know exactly where he is, but somehow he still wins the battle. 3 bullets left in the clip. The pit's been dropped. He's already going to spot one, but he's now just out to the classic, and it's a classic v classic. Malaki is the one to take it home. These rounds are getting insanely close, and it's a back and forth once again. A pendulum swinging. There's no stability to be found for either of these teams. 2 rounds for PaperX, an immediate answer back by Gen G, but the fact that it comes down to this, that the Viper is dropped outside the pit, and that's the result. Clean as can be with a final right click to close it. Gen G, they've got a lot set up in front of them, Tom. There is a showstopper for Munyet. Other than that, everybody is just on the rifles. Credits are low. Gen G could be on the home stretch very, very soon, and Forsaken in that corner needs value. They've not seen him. He's good for 1 and damage on Texture. Those could be very, very pivotal facts for us as PaperX look to move back through. So many players are low. One extremely low in the corner, and it's the rocket to find him. Yeah, that's the thing though, that trade's alright. That was the low HP player that goes down. I don't think they're going to mind that whatsoever to put it back into 3 versus 3. Something about to try and go through this. His teammates a little bit further behind. No flash available for Devi, so it's just going to have to be the raw push. Already every member falls. Gen G now get a double back of their own. And the major worry here for PaperX, they don't have backup credits. They don't have anything in their pockets other than a Blade Storm. This could be the beginning of the end. It feels that way, Tom. 2-round gap. Gen G in this series have just been miles ahead when it came to these rifle rounds. And again, it seems strange that 13-8, to talk about it as a dominant game. Yes, it is a strong scoreline, but not damning to the other side. But when you look at both pistols, that's a 4-0 start based off of coin flips. And PaperX managed to just about come ahead. When it came to rifle rounds, they weren't able to succeed. An early push, it's not quite a rifle, instead it's a set of blades, and those don't even get fired off. They lay by his side as he falls to the floor. Something down, so too is Devi, and they're ready for another player close. There seems to be nothing that PaperX can do to surprise this Gen G roster in the last few rounds. And with 12 looking like it's on the board, Tom, these players, they have to be feeling the crushing weight of this series. The Naruto की पहली बार बद्दुआ लगी नहीं. And there they'll face elimination against the Sentinels are allowed. There's no easier fight for them than a team that they know. The devil they don't is coming. How is that even possible?
Naruto. G have got their number. This round at least बहुत difficult है यार. was a weaker investment, but they had to use one of the ults and it got absolutely nothing. And the second we've got into these post runs, that's where Gen G have looked their most fearsome. A team from last year that started strong, had a massive fall from grace, made a huge overhaul of this roster with risks taken. Players brought back who've been at a Masters right at the beginning of Valorant, a player they got from ranked. Players that have not found success elsewhere. Texture, one I think we can really highlight in G, he was okay. But to go into a Gen G roster that's now playing for a minimum of top 3 if they win this match, unheard of, surprising, and now looking like that pinnacle of Pacific. Looking to try and do what no Pacific team has ever done before. Take themselves to an international victory. The PaperX are not dead, not down, until you stamp them out. Definitely looking injured. The path to recovery, 3 straight rounds in OT in a third map. A lot of win conditions. मेरे दिल को चोट लग Gen गई. G, 3 ultimates to fight their way through. PaperX don't have reactive ones, not impactful ones. Whereas the lockdown, the showstopper, and of course the nightfall. Any one of those can open sights, pull you out of sticky situations. Door open. That was the defenders, but it's covering Munyet's push forward. Problem is, okay, good nade up close. That's going to force that player out in the open. Problem is, Texture was covering it. And now the push on mid is spotted as well. 3 players left for PaperX. जेंदी पे लगाई Looks बेटे like they've उसने. still got a fight. मतलब जेंदी जीतेगी तो वो वही मान लो. Motivated, he's being caught. But, oh, it's fake information. The Shrouded Step has bought a little bit of an advantage for Mindfreak as he's still alive, his HP recovering, but with something down. And Divide, very much known towards that spawn. Mindfreak's on the wraparound. Wants to move towards that singular door. For this, Divide needs to buy some time. He still has a flash to play with. There it goes. It's popped and it's cleared out this corridor. Divide's even won the fight. The smoke is down. A chance if Mindfreak can make it to Divide. If they can take this fight together, but they don't know where the last players are. Maybe force them back for a second. The time now very low. And with 2 players still to root out, it might be too low. Divide just dodges that siege, but Mindfreak down. The time now not to be played with. Okay, no, Texture went out swinging. Gone for There's 3. no chance. There's no chance whatsoever. He had to stick it underneath his nose. And short of a big misplay, it was never swinging the other way. 13-9 and 13-8. A consistent showing from the side of Gen G as they take victory over their Pacific comrades. It's on to the upper final. Yeah, it is another huge statement play for Gen G. No doubt at this stage that they wear the crown when it comes to Pacific. That's not the crown they're gunning for anymore. They said it at the time. Their goal was to make it to the playoffs. So they've made it there and they've continued to push forward in that upper bracket. The team has said that last year didn't really do too much, didn't really give us much to be excited about. And then bringing together a mix of players that maybe many didn't expect to do well, definitely didn't expect to get this far. They continue in that upper bracket to fight off and be the representative as they face Americas, and they send the previous Pacific champion, a previous finalist of one of these events, down into the lower bracket. The second map, although only 1 round in the difference, Tom, this was definitely a much better feeling from the side of PaperX. They earned their way back in from an 8-1 deficit to a close scoreline in the end, but despite that streak of rounds, Gen G take the victory thanks to map number 1, PaperX's pick, where they just didn't get started. And that's a big concern for them. Moving on to an elimination series next, they won't get a chance to have a slow start. They've got to come out swinging off the bat for Gen G. They get to watch their opponents play, figure out who it is, take some notes. This is a very nice position to be in, and a chance to make an historical run here in Madrid for their region. But that's always been the thing. Like we talk about Pacific teams as a flash in the pan a lot of the time. You look at the Zeta run, you can even throw a Chinese team of EDG in there as well, making a run. PaperX making a run. This Gen G squad, though, it feels different. They have so much depth to them in terms of individual plays, but they have such a solid structure, great trading, and also it just looks like the individuals on that team have leveled up from last year. They look like different players, even if they're in different roles, some coming from the tier 2 as well. They are an absolute joy to watch. And the fact is, I don't know where this ends for them.
They could genuinely be there lifting the trophy. It definitely feels like they have a long road ahead of them. Hopefully no bumps in that road. And the reality is, you know, Texture for me, certainly someone to take notes on, because this guy, he was good before, but now on the international scene, up against some of the best in the world, and he's leaving his mark. He's already left his mark, and it could get so much more beneficial for this squad as they now get to watch their opponents play, take those notes. I really put so much stock in that. I'm excited to see what this squad can do, Tom. I think I love the fact that just even hearing them talk about each other, it's Munchkin elevating his teammates. Like I think that's such a huge compliment. Like you could say someone come in, oh, he's a great leader, he's playing great individually, like all of these compliments. This is a nice thing, but to say he's come in, as someone has said, one of the first players coming out of Korea, Lakia, to play at a Masters event, and you're going, yeah, this guy has made me better. As someone who's coming in as a relatively new leader, that's such a huge compliment to hear from. And I think that's the great thing about this team. You look up on the stage, look at Texture, just having a great time, everybody like standing up, like bows and arrows, like this is looking like a completely different squad. And honestly, I am so impressed with what we've seen. Luckily, now we get to hear from Munchkin, as he's going to be down on the stage. La victoria más convincente para Gen G hasta ahora. The most convincing victory for Gen G so far. It had to be in playoffs. Tenía que ser en playoffs. Estoy aquí con Munchkin para que me cuente un poco de lo que ha sido esta partida y lo que ha sido este recorrido. And the first thing I'm going to say is, can we hear it for Munchkin? Can we hear it for Gen G? Where are the Gen G fans over here? Thank you. La primera pregunta es que fue una partida en la que se hacen algunos cambios por el lado de PaperX. ¿Había alguna idea y en qué se enfocan especialmente en este segundo mapa para que el cambio de composición no le afecte a Gen G y puedan cerrar un 2-0? First of all, congratulations. The first thing I want to ask you is, I want to know what goes behind the scenes when we get to see that PaperX composition change on that second map. It seems like it was slipping away, but you were able to take it back right at the end. So what was the focus to make sure that map would go your way? 로터스에서 페이퍼렉스가 조합을 다시 한번 바꿔들고 왔는데 이제 젠지 선수들은 그거에 대해서 어떻게 풀어나가려고 대처하려 했는지 궁금합니다. 아무래도 갑자기 이렇게 따라잡히는 모습이 나오게 일단 저희가 사이퍼 상대를 많이 만나봤었기 때문에 사이퍼 대처 방안에 대해서 일단 첫 번째로 이야기했었고요. 그리고 저희가 중반부터 좀 따로 잡혔던 거는 저희가 좀 방심하고 저희끼리 커뮤니케이션이 잘 안 돌았던 것 같습니다. Well, we're familiar with going up against compositions with Cypher, so first thing we talked about was how to play against the Cypher comp. And I think when PaperX were making the comebacks, I think we had some miscommunications and mistakes going on, but we were able to, set it straight. Lo que nos cuenta de ese mapa de Lotus es que ya habían jugado en contra de composiciones de Cypher, así que el enfoque principal era cómo tenían que jugar en contra de Cypher, y cuando PaperX en esa segunda mitad estaba ganando rondas, el enfoque principal era en que la comunicación no estaba de la mejor forma y después la podían arreglar y cerrar el mapa. Ahora, mientras más vemos Gen G, mejor se ven. Sí se consideran uno de los equipos que bajo presión puede brillar más comparado a los otros tres que tenemos en estos playoffs. The more that we get to see Gen G, the brighter and the better you're looking. This time around, closing it in a 2-0. Do you find yourself to be one of those teams that is able to be better under pressure compared to other teams that we have in playoffs? 계속해서 경기를 치를 때마다 강해지는 모습을 보여주고 있는데 젠지라는 팀이 먼치킨 선수가 생각할 때 좀 부담감이 더해졌을 때 더 잘하는 팀이고 또 훨씬 더 이렇게 좀 긴박한 상황에서 경기력이 더 살아나는 그런 팀이라고 생각하시나요? 사실 저희가 부담감을 아예 안 느끼는 건 아니지만 사실 그렇다고 해서 또 부담감을 많이 받는 건 아니거든요. 사실 부담감이 저희 경기력에 영향을 끼치는 것 같진 않고요. 그냥 저희가 연습하던 대로 계속 대회에서 성장하고 있기 때문에 그래서 더 잘하시는 거라고 생각합니다. I would say there's a little bit of pressure on us, but not a lot, and it's not going to be a lie. There is a little bit of pressure, but that's not enough pressure to crack us when we're up on the stage or affect how we perform. ये कौन नारुतो कैसे चला रहा है? क्या नारुतो? क्या बोल रहे हैं? सुन तो ले, उन्होंने legit वो ऐसे बोल रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, थोड़ा सा है पर इतना नहीं है कि जो हमारी टीम स्पिरिट को तोड़ दे। बहन की आँख। नारुतो भाई आप तो सो गए थे? मम्मी भी है घर में उठाने के लिए, खाना के लिए, डिनर के लिए। इतनी जल्दी सोऊंगा तो नारुतो जेन जी। हाँ भाई, मैंने वो ब्लेड को पहले बोल दिया था। 2-0। मैंने उसको ये भी कह दिया था कि 2 मैप लगातार जीत जाएगी जेनजी, ये भी कह दिया था मैच होने से पहले। हर एक चीज प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने उसको।
बट ये जो चुतियापे में मैं यहाँ पे मतलब वीसी पे बोलते वो मेरा उल्टा हो जाता है ना, जिंक्स होके बेंचो वो बोलना छोड़ दिया मैंने। मैं इसीलिए मैं प्रिटेंड करूंगा बेंचो, मुझे पता ही नहीं है कुछ। उसको एग्जैक्ट हर एक चीज मैंने बता दिया था कब क्या होगा। अब ब्लेड ने पैसे नहीं डाले तो उसका लॉस है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैच, मैं बोला नेक्स्ट मैच कब है? नेक्स्ट मैच अभी 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 10 मिनट में। अरे आधे घंटे बाद होगा। नहीं नहीं 10 मिनट में होगा। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्या सिर्फ? हाँ। Against Sentinels because they're a really good team, so hope they do well right now. But PRX मतलब PRX बाहर हो गई ना? Dice que si todo va de acuerdo a su plan, la idea es que PRX le gane a todos los equipos de Américas para que se encuentren nuevamente en esa gran final. Pero que aún así dice que le gustaría mucho jugar con Sentinels. Espera que les vaya bien en lo que viene siendo esta partida que ya se viene. Y hablando de eso, nosotros vamos a pausar. We're gonna take a break real quick and we get ready for that Americas match. We've seen this matchup before, and last time Gen G became the king of Pacifics. But this is a different stage, and a stage that PaperX have conquered over and over again. Not two damage, but no kills. Oh, this has come back into a winnable scenario. Just needs to hit the bullet. Yo, not even close, guys. Not even close. Yeah, not even close. An opportunity here at least to shut down the first and the second one. Yet as well, Rockets on point. One enemy remaining. Position. It's sublime. Brilliant from Carlos. This would be exceptional. Time. Good luck to you and good night. What a performance for the side of Gen G. Done and the follow-up, and he's out of the knife out and Cameron wins. He brought a knife to a knife fight. Players on the other side, Showstopper, he should be dead. Actually, a very quiet start to this game and a reaction shot. Ah! I want this shit. Spawn, this means they know where they are. The peek out is perfect. Forsaken there to help with this fight. Instead, something has to do it on his own, and again, he finds texture. That's a big part of this cake. There's no chance. There's no chance whatsoever. He had to stick it underneath his nose, and short of a big misplay, it was never swinging the other way. A consistent showing from the side of Gen G as they take victory over their Pacific comrades. It's on to the upper final. Hello. ए सटेडियो कहाँ मर गए सारे? इधर ही है। ट्विटर पे जाके देखती ट्रैश टॉकिंग हो रही है कि नहीं। बेचारा 4 सेकंड एक ट्विटर पे डाल रहा है GG02 Gen G here we go lower bracket thank you everyone for supporting us.
मुझे नींद आ रही है ये मैं अपना कोई छोटे छोटे नैप ले रहा हूँ बस मतलब नींद टूट जाएगी फिर नींद नहीं आएगी जो होगा देखा जाएगा फोन से देख लूंगा सेंटिनल और लाउड वो देखते देखते सो जा रहा हूँ मैं सेंटिनल लेके जाएगी इसमें भी लगातार 2 मैच सेंटिनल भी ले जाएगी शायद होपिंग लाउड में कौन है क्या लाउड में कौन कोई अच्छा टॉप प्लेयर साथ लाउड की पूरी टीम ही अच्छी है हाँ भाड़ में जाए लाउड में देखा जाएगा जीत तो सकती है लाउड भी जीत सकती है भाई वो कहाँ से जिंदा हो गया लेकिन मम्मी उठा गई भाई डिनर के लिए भाई जो लिखा था एग्जैक्ट हुआ है भाई लीड भाई लाओ पैसे भेजो लीड भाई 200 ही लगाए थे शायद 50 रुपए का घटे गए 150 है 75 भेज दूंगा भेज दिया রাস্তাতে আমার ধৈর্য নাই আগাবো রাত 12টার সময় ভাত খাবো এবারে আমি 10টার মধ্যে খাবার দেবো তারপরে আমি পালিয়ে বসে দেবো Welcome back, everybody, to day 6 of Masters Madrid. I'm your host, Yingsu, and I'm back on the desk with Mimi and Hypog. We've had our first regional rematch already, and let's get into the second. It is America Sentinels versus Loud, and I believe, Mimi, the matchup that you're very, very excited about. Yeah, this one's going to be fantastic. It went all 5 maps in the finals in America. Sentinels pulled it off there against Loud, but Loud has really leveled up at this event thus far. It should be a great match again. Yeah, I think so. A couple of stumblings along the way. It is a concern for me that Loud have already kind of shown some bad tape here, obviously with the permaban even being shown here now. Breeze, there's no questions left over their map. Yeah, I mean, we saw the same 3 maps before in the first match of the regional, but I wonder if we're going to get that again here. But the thing is, Hypog, as you would know, Sentinels have played an obscene amount of games coming into this tournament. They continue to do so here in Madrid. Yeah, a lot of tape obviously to go through. An opportunity there for Loud. They've already shown that you know they're willing to switch away from some of these Phoenix compositions and pull out a curveball and change something up. So there is actually a real opportunity with the break coming into the playoffs. Loud, I don't want to say in terms of prep, but have the upper hand in that regard. They played less maps than some of these teams, but remember they were playing back-to-back. It was something like 12 hours of prep between playing Heretics to then play KC and beat them, and it was the same in Americas. They played more rounds than the rest of the teams in America's playoffs combined. But finally, this team has had a bit of a break ahead of playoffs. Yeah, and I mean, this break is going to be very, very important for them as well. And speaking of that, here is what Coach Kaplan had to say right after they secured playoffs. I cannot wait to sleep. It means a lot. It's been really hard to have such a quick turnaround. We showed everything we had pretty much in kickoff, and it's we didn't have a lot of turnaround time to deal with that strategically, right? Especially even with scrims, your jet lag. There's just so many challenges. So having some time to breathe and be better equipped to handle opponents studying us is a huge relief and a confidence boost for the games ahead.
I mean, this is the thing. They've already achieved everything so far without that a little bit of a break. So how much stronger do you think Sentinels are about to be? I think they're going to be really strong. We've already seen, even with the low prep time, how good this team is at counter-stratting. Against both Heretics and KC, I think the squad came in with really good game plans to fight forward, to punish their opponent's tendencies. I think they're really good when they have even more time. And we saw that in Americas. When they went into playoffs, they further leveled up. This is a squad that really take that effort to study their opponents and come prepared to a match. Yeah, and I think the individual performances here, Sassy a little bit of a concern, but I think if there are going to be any change to the composition, the way that particularly Zek and Tens are both performing individually, there's room there to put them on anything potentially, and outside that, John QT as well, individually standing up so far here in Madrid. Yeah, let's talk about Tekken here, because we say, yeah, Tens and Zek and Tekken. Okay. We've been kind of debating, you know, rookies here and there, but there is no debate when it comes to these two Mimi. They are just the best right now in this tournament. Yeah, both these guys are looking like top 5 players in the tournament, and they're on the same team. And the thing is, they're always playing together. These guys out of the server, they're good friends. Their teammates call them the kids of the team. They're always hanging out, and they're setting each other up together in the server as well. They're a very aggressive duo. You'll see them take risks, but the difference between them and maybe a team like PaperX as a player like Forsaken per se, is it's always together, and it's always being really well integrated into John QT's system. When they go for these risks, when they go for these early fights, the rest of the team is calling around that. They hear Zek and say, hey, I want to make this play. Tens knows how to set him up, and the rest of the team adapts around that really, really well. Yeah, and I think as well, just to double down on that, the support system here is really the difference. To have everybody here delivering individually, Zek and Tens being the ones to lead the charge, it's terrifying to have to go up against them in this sort of form. I'm going to make Tekken a thing. But let's move on to the other side for Loud, because they had a slow start. But Hybuck, as you know, even when they've had a slow start in the past, they always go really, really deep, and they manage to take it all the way sometimes. Yeah, Loud have always just got this playoffs form that they seem to, it's almost like the trump card, the Uno reverse that comes out in the series that they need to deliver it. And I don't necessarily think they've shown that so far, but coming out and bouncing back the way they did with the follow-up series, we talked about obviously it being a bit of a concern, the loss to Gen G, but outside that, you still look back and you think, well, what series has Les been playing in? In particular, Les having another MVP-worthy performance, and you look back at the series, you think, how's he doing that? Yeah, and I honestly think that this team has leveled up yet again to a form where they can be a contender for a title. I think they worked out some of the issues they showed in the kickoff event, where they're playing these like Phoenix comps, it's not really working out. Here, I think they really narrowed down their map. Well, they showed maybe some weaknesses on Breeze, but on the maps that they're committed to, their Sunset, for example, they've looked excellent. The strategy is really coordinated. Players have also leveled up quick in their last game. Looked so much better than the rest of the season thus far. This is a Loud that always wakes up the deeper they get into tournaments. It seems like they find the ability to hit the peak at just the right time in like every event. Yeah, and I think as well that they've already shown here that they are willing to kind of detract away from the commitment to the Phoenix and Breach. They're obviously busting out the Euro in particular, but QCK's individual performance across all the duelists has been pretty incredible. I keep saying that nobody plays this much Phoenix and comes out looking like, you know, a great duelist or a great individual player, but somehow he's doing it. Yeah, you guys mentioned Les already. He was also having a great tournament. I believe he's standing by with Mika Fabs. Take a look at this. Not just quite yet. What about this? What about this? I want to look at this, because this guy's stats have been ridiculous this tournament, but they are every time. Les is the consistent member of this squad. With Osmus out of the team, he's the #1 guy you have to look towards. He's always playing Viper, but he's competing with the star duelists in every role. The guy's ridiculous, and if Loud is going to win a trophy here in Madrid, it'll be because he's keeping that up. Yeah, that was Les. We got Les as well, because Les is more. So let's send it down to Mika Fabs. Hey Les, I like that little groove you had on going on a little bit back there. So you've been on the team for forever. You know how it's like when the team gets that synergy in order to win championships. I'm curious how this level of synergy has been from like the beginnings of this roster all the way up here to Masters Madrid. What's that journey felt like? We have Arthur here to help with some translation. Oi Les, então, primeiramente, eu gostei, você tava ali. कोई पीसी जाएगा इधर? A gente quer saber, você tá desde o início नहीं. com a galera, com o गणेश भी नहीं है क्या? novo roster, vocês estão com नहीं. sinergia. यार आमी लोग हो भाई, मैं जा रहा सोने. Agora até o campeonato. क्यों? भाई हो गया भाई, नहीं रहा जा रहा. आज क्या नारुतो इतने जल्दी सोने? अबे गांडू कल से सोया नहीं हूँ ना. सही है भाई. कल से नहीं सोया मैं, आज टाइम सही कर रहा था ना भाई. अभी सो जाऊंगा सीधा, फिर टाइम शेड्यूल सही करने में. पूरी रात नहीं सोया कल, फिर सुबह भी नहीं सोया.
बार बार झपकी आ रही है बीच में, 2 बार में तो मैच सो गया। तू विकास तू दे पीसी पे ना, तू दे स्क्रीन शेयर दे, स्क्रीन शेयर दे गेम का, मतलब मैच का स्क्रीन शेयर दे। फेंक रहा हूँ। स्क्रीन शेयर दो, स्क्रीन शेयर विकास देगा। रुको रुको रुको, भाई विकास स्क्रीन शेयर दे। विकास रुक जा, एक गेम खेल रहा हूँ, ये खत्म होने वाला है, उसके बाद अरे देता हूँ। यार भाई रुक जा 1 मिनट, मैं फोन से दे दूंगा, रुको मुझे इधर पीसी बंद करने दो पहले। गाइस दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। स्ट्रीम कर दो इधर एंड।